example, it is not there because it is line. Okay. Okay, it is restricted. Okay. But in proper version, academic version, you are you can see over there. If you open the TPS right? Open. Yes. Did you open? Yes, sir. So in that, what is that you are actually seeing? Let's say, or can you do one thing? One can sit there. Can't see this. I also want to see your screen. So fine, let's see. I'll just show you over here, and then you can do it. You sit like this. But you can't see the screen. We have to do. It's okay. So agree. Okay. Now, but this screen quality is also very good, Yes. right? Okay, fine. So here, what you see, this is the first thing what you get when you open TPS, right? So here, this what included this, right? Yes. So in line, all the other thing is disabled. Like say batch infrared is disabled, COD chemical dosage is disabled, and water infrared is disabled. So if you want infrared is a basic. Just click on it, drag and drop it over here. Like this. Click on it, drag and drop it over here. Like this. Right? Everyone will got that? Yes, sir. Right? Next one is this is like the influent. Next here you have what do you have here? Flow combine. Combine and filters. This is actually not required right now. Okay, so this is not required. Let's say if you are combining two different flows or one flow you are segregating it, splitting into two, then we normally need this. This is not needed for the first exam. Okay, next is like preliminary treatment. What options are there in preliminary treatment? Nothing. Pumping station, equalization, It is tank there, pressure. but it is there. Pumping station, Equalization, equalization, chamber, and but that is not there in line. Okay, next primary circular is primary. there, but all of these things are Are disabled. right? So next, you may have to go to suspended flow. So here only one thing is Plug actually flow tank. clear. Flow. So what is that plug flow? Click, drag, drop. Okay. Right? It came. Drag and drop. It came. Then you go for what is that? Attached flow. Anything is not needed. Clarify. Right? Circular secondary. Circular. This one. Click, drag, and drop. Fine. After this, no tertiary treatment is required for the first experiment. And what I'm doing is I'm actually replicating this particular thing. Like say in configuration, this is what is basically done. You have to click, drag, drop. They have in detail they have actually told you. Okay. Okay, so when you work this first exercise, you will be initially introduced to how to model. Okay, so this is what I'm actually doing. I'm not doing anything else. This step by step I'm actually following this. Okay, so this particular exercise is done. This is done. This is done. Effluent is pending right now. Right? Effluent D, whatever is over here. Is Biosolids treatment, we have two options: anaerobic digestion and dewatering. that is there, but that you can try later. I think in some other exercises, in 14, 13 or something, aerobic digestion is there. So there you will be using in live only. Okay. Okay. So here, then after this, tertiary treatment is not needed. Biosolids is also not needed right now. Process control not there. Last is outfall, right? So just click grab. Drop it. Wastewater. This first exercise, I think, stop somewhere over here. Okay. And now what you need to do is like either if you want to zoom in, zoom out, just scroll in or scroll out. Okay, you will get that. Okay. And I think there is one option somewhere. View locator. Yeah. So this I think you will be able like this. Okay. So if you have zoomed out too much, you don't know where it is. So you go here, view. Okay, locator. It comes over here. So this red color thing is what is highlighted. Okay, I am actually looking at. So you drag and then do like this. Right. So that is something. If suppose you have actually zoomed out, you are out of location now. You can got this one. Yes. Fine. No. Yes. Got it. Fine. So now what we need to do here, what is said is all of these things are actually told. So now you have to connect. Okay. So wastewater influent, you need to connect to PFR Influent. influent. Like say
you have to create something like this. Okay, from here to here. How do you do that? You have to go here. When you go here, okay, so arrow mark will come. Okay, when arrow mark comes, you click on it, and then a line will come, and then you have to go here, and then just green color thing will come up. Okay, green color thing will come up. Then it is, make sure that it is connecting. Okay, so leave it. Then it is, the connection is. Okay. Similarly, if you want to connect this erasing tank to secondary clarifier, go here. Arrow comes. When the arrow comes, click. Move ahead until some green color will come. Okay, then leave it. It is done. Okay. Then again, secondary clarifier to outlet. Okay. Then you are connecting this secondary clarifier thing to here. Okay. Then you can just adjust it by bringing it down or something like that. And this is a basic connection. This is a, I think they have some other thing. This is not connected anywhere. So this is the sludge access thing that is like this. So they leave it like this. Okay. So now this is what is set in this one. Okay. You have to label it. Done. Yes. Yes. No, not here. Yeah, just leave it. No. Green, leave it. So you drag and then take it down slightly. Yeah. So this is a basic setup. Fine. So now you have to label one by one, or just for our understanding. Let's say this one you are labeling it as increment. So where is that label option? You have to go to label and increment. Here you have to click, right click, not here, I think here. Labels. Here. You, not here. When you right click, it has labels. Ah, A is label. The toolbar. tools, No, it is just there A right near the magnifying glass. This one is not there, but this is not label. Labels. When you right click on it, there is a label. It is there. Yeah, right click on that element. Labels. Yes. Okay. So it is labeled. Now click on the label. You have to name them. So what you do is Alt tab. You go to this PDF. Press Alt and you go to this PDF, and then you copy this increment and then paste it over here. Okay. And this is numbered as 1. This is increment. So instead of naming 1, 2, 3, 4, 5, you just name the stream. Stream is what? This is wastewater increment. So that's the reason WWINF they have. So this one you can write WWINF wastewater increment. Accept. So it comes like this. Okay. Similarly here, double click over label. Then what you need to do, this is what? This is actually Secondary clarifier. bioreactor. So copy this, paste it over there. This This it has already taken because it is connected. This is WWINF, it is already connected from T. So now stream, this is RAS. RAS is what? This is RAS. Recycled activated sludge. Okay, so that is done. Then what is this? This is overflow, or they are actually naming that MLS. Right? This one is MLS. So you can name it as MLS. What is this one? Last one. That is, they are not using it anywhere. So it is just a pump. Maybe Excel thing once in a while they actually pump it out. Just give it and then accept. So it has been labeled. Then finally this one. Label. by default, why does it come as numbers? By default it comes as a What does by default, like say, it is actually naming different streams. okay 1, 2, 3, 4, 5. nodes that it has identified as when we inputted Yes. it initially? Yes. So, but you need to name it accordingly as per your convenience or understand.
got secondary clarifier, right? So secondary clarifier, you just copy it and then paste it. So here it is there. Okay, so this is like MLS influent. I think it will come over here. It has come. The other one is like affluent. The pump has not been named over here in the bioreactor. No, it is named. I think this is WAS. This is RAS. No, that is the secondary clarifier. This one, the plug flow tank. Pump is 4, No, that is not used over here. not used over here, right? Okay, so secondary clarifier labeling is done. Finally, affluent. Affluent, I think it will come. Outfall is what we are supposed to label. And that is it. So labeling is done. Fine. Labels are not coming. No, it's coming. No. What is that affluent? That is not coming. So go to, I think, go to view. What did you, that, this I just enabled, streams. Streams is what? Streams alone. What is this? Pump Correct. WS. Correct. WAS means like, Waste activities. WAS is Waste wasting, wastage of activities. RAS is We have not connected that pump to any. that is not connected because it is wasted, it is thrown out of the system. Okay. Okay, fine. Okay, till this point. Next one is, what is that saying? You're supposed to enter the values of your design. Okay, this is analysis problem. So design in the sense like you are supposed to give the input to the effluent, like COD is this, BOD is That this. will go to a sludge drying bed, the pump, that waste activated. Yeah, it can be taken anywhere. Like say, the sludge, WAS can go to sludge drying beds, or it can go to thickener, it can go to the gravity thickeners. Okay. Like that, a lot of options are there. If we had more options, we would have been able Yes, to. that you can explore later. Okay, so later on in the slide when the actual license comes. Okay. There is also crack version. Okay, available. If you are interested, you can go use it, but don't connect it to Manipal internet. Okay, so fine. So what is the next step? Fight software patents. Connections are done. Fight software patents. Connections are done. Yes. Fine. Next is what they are saying. Input parameters. So by default, what is happened here is like in this one by default in the bioreactor, the number of reactors is actually set as 4. What does that actually mean? This bioreactor. So right click on it. Okay, so physical input, like say input. It has number of reactors is actually enabled as 4. What does that actually mean? 4 zones, sir. MLSs. One There are four reactor, four there baffle are walls. 4 different zones, something like that. So that means that it's a cluster reactor. Okay. Okay, so you are modeling right now in this exercise, they are actually modeling a complete image. So one is what we need to make. So the volume will remain same, Okay. but it's just modeled as one. Plug flow reactor in the sense like 4 zones of smaller volume. Let's say if you have 400 cubic meter, so first zone is having 100, second zone again 100, third zone again 100, fourth zone again 100, like that. So here it is 1. Okay. Doing one. So what is the other thing, like other input that they're actually asking us to do? Nothing else, I think. Yeah, so that is for this one, accepted. Okay, then you are actually giving the input. Next point is you are giving the input for the oxygen transfer, like say how much of oxygen is. So for that it goes to the operational parameter. Okay, operational parameter. So where you have this diffused air thing is there. So you can read all of this thing is actually over here. Okay, but you need to change it to here, entering air flow. Okay, so it is like not using EVO controller, you are not using in control. So you are actually pumping air, so entering air flow. And that diffuse aeration, they actually are set it to 30,000 cubic meter per year. Total air flow in the aeration tank is around 30,000. So this is around, well,
30. Okay, so that's it, I think. Accept it. So they have changed this one bioreactor physical dimension. They have actually Over here, in the pump flow control, there is 4 and then pump flow. Okay, that is because of the label that we've used or what? What for? This 4. This 4 is, I think, the label that we've used, right? Yes. That is just 4 because Yes. okay, change to 30, fine. So now next, what is that? Secondary. One review, what you can see, like say, sometimes it might be very useful. Let's say, what changes that you have made to these individual units. If you want to track it, I think there is an option, like say here, summary of change. Right? So if you click, it will actually say, like say you have changed this number of reactors to 1, and then you have actually oxygen transfer rate, you have changed to entering airflow, Okay. and then finally the result. So this is like the history for that particular unit. Okay, so this is ready. I think now you can Secondary you can clarifier? save this particular thing. Okay, you can save this thing as starting point or something. I think they have mentioned it as starting point. You just save it because the same file is recalled multiple times later. Okay, file save as Starting point. yes. I have already saved it. Last. Dot light. You save it wherever you want to. So this is saved. Once it is saved, then what? What is it saying? Question. That is like they are asking, like say, what is the influence? How do you find out what is the influent flow that is set for this particular problem? Like say you are actually, they are actually framing some questions. You need to answer it so that you will learn effectively. Yeah. Okay. So what is the influent wastewater flow that is set in this problem by default? Go here, flow data. You'll see that. Okay. So what is that value that is set for you? 2000 2,000, right? meter cube per day. So this is how basically you find it. Okay, composition will see when characterization. If you just click here, you will get this entire thing where you can see what is the characteristic of the influent. Okay, so where did you actually get this? Click on the influent, right click, composition, influent characteristics. Okay, so but here you don't have the flexibility to change all of these things. Yeah. We'll come back to this later in the second exercise. This seems to be a very powerful tool in the full version. Very, very powerful. It's capable of everything. Flexibility to change almost anything. It's like a demo. But this is only what you can play with in light. Rest everything is locked. Okay, we'll come back to this interface later in the second exercise. For the time being, influent characteristics is where we change this using this. Next is, like say here, I think flow has been said, no? What is the question that they have asked again? So, But the they volume just of the asked to fire? note the units, that's it. Huh? They only asked us to note the units for the various Yes. What is the bioreactor volume that you have said? meter cube something. How did you or where did you get? In the exercise. No, meter cube, but what is the 1000 default value? From where did you get that? physical. Here, physical, so you get the volume. Okay, so this is 1,000. So you can change that here. In this case, in light, you can change that. Fine. And depth is like 4 meters. Tank That depth, you cannot change. you can change. Tank depth you cannot change. Yeah, you can change. Oh, no, you You can't. cannot change. 4 meters is fixed. And volume fractions also. Volume you can change, I think. No, you cannot. It's 1000 log. Whatever it is. Fine. Light, I think. So this is fixed. Okay, and then secondary clarifier also 103 meters. I think they have actually kept. So input parameters, physical, you can go 100 is actually. This you can change. No. No, fine. By default, I think it is. So these are the initial. So
So when next is like when you go to the simulation, like this is like the model setup initially. You are building the model. Then there is one more tab called as simulation here, Yes. right? So click on that. It takes some time to build this file, but once it is actually built, you have the capability to It's done. run it. Huh? Mine is done. Not coming? Done. Fine. Then what to do? What is the flow is what you need to report. Okay, so in this particular table, whatever they are actually are. Drag into variables here to create a controller. It's done. It's done. So none of the parameters have come. Done? Yeah, so you need to run it. So that is what is an outlet. Like say in the outlet, this is a flow, is this much, TSS is, these are the parameters of the outlet. Click on the secondary clarifier. So you get, these are the things. Start, we have to press. That play button in the bottom Yes. left. This one. Yeah. Start. Yeah. This, yeah. So here, effluent is done. No? So influent this. I think you have, correct. So these are the parameters. Effluent outfall, go up. Here. In between. English is something to say. Yeah, here. Okay, it's Okay, no? mine is screen is small. So in simulation result, I think you can decrease the Okay. what do you say, the display resolution. This is the maximum resolution you have? Huh? This is the maximum screen resolution you have in your laptop? It's coming old. No, no. Change. Go to your display. Display. Resolution It's max. 150 scale, reduce it 100 or even less than that. Even less than that, I think. Otherwise, I mean, like you will be finding where what are there. okay. Now. Okay. So further, if you reduce, I think everything will be this. You have some eye problem? No, Okay. it was like that. So fine. So this is how basically we check the. You have a model date, and then these are the results. Okay. So this run you have to. Once you run it, you get the results over. Okay. So what is that? I think bioreactor. Some question they have actually asked. What was the question? Yeah, here. What is the influent ammonia concentration? Here. As per the result what we have got, influent ammonia. Influent ammonia 25. is around 25, right? That we can see it over here. Then, what is the bioreactor temperature? You go to bioreactor, their temperature is one of the parameters that saying it is there or not there. Temperature. Not there, I think. It's there, 20 degrees centigrade Where is it? in the bioreactor top column. The image that holds no bottom okay. left. That image is, I think you can make that temperature to come over here also. Simulation result or operational variables. I think you can make it. It can be done, but I think they have asked it over there. So 20, 5 or 20 or so. Then find out HRT. What is the HRT of the bioreactor? 6 in MLSS 1. Yes. So MLSS 1 means there is only one time. Yes. Right? So HRT is 6. For this, HRT is 6. Configuration it is 6. Then what else? Secondary clarifier, TSS removal efficiency. Clarify TSS. There is a, In MLSS, there are 4 parameters 39, 31. TSS removal efficiency, I think you can see over here, 4,000 is actually there in this, and then effluent it is somewhere around 1960. So removal efficiency you can calculate like that. Directly it is not there. Okay, so here also you can say, see, TSS
in influent it is 25, okay, and when it actually goes out of what? Influent it is 477.8. Huh? 477.8. TSS. Where is it? 4? 77.8. Where is it? Here. You are telling in milligram. Ah. Okay. That is in kg. Like this gives the summarizing. Yes, Sankey diagram actually gives. So here you can actually see the efficiency also. So this if I do it. Okay. So if you want to see the mass balance, you Yes. click over this red color button, red color there. Thank you. It opens. This is for flow. You can change the parameters also. You can change the parameters and then check for individual units like this, or from influent to effluent. Okay, so this is how basically we can just check what is the efficiency of each and every unit, if it is working properly as per our requirement. Fine. I think this is the end of first unit. Simulation mode, all some changes in all you can make. Ammonia concentration, from there you can check. I think they have actually given everything. Yeah, temperature, what you said is correct. Yes. From there only we will. Then yeah, from where and all is actually it is taken, is actually explained over. Okay. Fine. Yes. Next exercise. Yes. This is very simple. Just put in the input parameters, set Correct. it up. So this easily you can follow. Just spend some time. You can easily follow. Yeah. Okay. Influent advisor is already we have seen this. Okay. While looking into the first, while going through that, we have already seen this. So now we have to come back to modeling and change whatever parameters. Now you actually save it. It will be saved as that Starting point. starting point, and then from that only. From that, we can directly switch to modeling, say Yes. changing some parameter, and then Yes. I go to simulation. Yes, come back to this. Or if you want to change some for some values, even in simulation also we can change it. That we'll see later. Okay. So if you want to change any input parameter or physical dimensions of any of the units, you have to change. If you want to change and then rerun it, you have to go to the modeling. There. Okay, and then rerun it and then come back. Fine. So in the second exercise, what is that they are actually saying? They are actually explaining us the relationship between state and composite variables that are actually there in the influent advisor tool. We'll see that. Okay, and effect of influent characterization on plant. So a lot of things are there in this, but what is actually required over here is this. Okay, so what is this? This is also visible Or bioreactor. for the bioreactor. No, this is For for influent. influent. Go to the modeling. You are in simulation mode. Go to the modeling. You click on this composition influent characters. So you get this. Okay. So here the state variables are something like they are fixed. Okay. So they are fixed in the sense like it is like these are the parameters which are literally somewhat very difficult to calculate even experimentally or something. So more or less it is actually standard of this is fixed. That is what is explained over here. And these are the inputs. Okay, user inputs means you can change this easily. Okay, for different streams or domestic base or industrial base or any other base, you can change this parameters easily. Okay, what you can see over here is if you click on this total COD, okay, so this total COD is related to this one over here, COD to BSS ratio. That is actually highlighted over here. When you click it, it comes over here. Or for example, if I click in composite variable, if I click this is dependent on this one. Okay, it is highlighting. Yes. So it means that this is linked to some other parameter. Okay, in GPSX it is actually highlighting what is this parameter related to, and in the below this panel, the relation is actually explained over here. Okay, so in this panel, let's say for example, if I click on this ultimate carbonation COD, this is related to this and this.
and that relation is actually explained over here. Okay, so in detail, we need not go it at this particular moment, but you, while actually modeling it, you may have to understand. It is interactive. It will just tell us Yes. what it is. So in general, superficially, if you want to model, we don't look into this. We are concerned with this input variables. Okay, What is this filtered COD and particulate COD like? COD they calculated twice. where is it? SCOD, XCOD. Filter COD in the sense like normally they are actually trying to differentiate between the soluble COD and then the particulate COD. So basically in the same solid stress, they will take The same COD test, if they actually have a filter paper, they can have a filter paper and then filter out the sample, and then whatever the thing that comes out is called a soluble COD, and then whatever the particulate thing that is there, that is actually COD. These things are also related to in detail when you actually look into the Meta book and all. They actually explain it like the soluble COD, the particulate COD can be related to not particulate COD, BWOD. We are talking about BWOD, soluble BWOD and then particulate BWOD. They say that easily degradable solids can be referred to soluble BWOD. And MLSS normally or the biomass is normally related to the particulate BWOD or something. Okay, something like that. There is some relation. Okay. And in this modeling, when you go into the in-depth, like say activated sludge model 1, 2, 3, 4, 5, they are actually using these sort of models. A lot of things are actually. They are very, very complex, even I have not understood it properly. But those models are there, but in that it is actually inbuilt. And when you refer that manual, GPS slide manual, at the last appendix, they have given you what kind of model equation they are actually using it for. This aerobic degradation, anaerobic degradation and all, they are actually given the basic. So this is being used industrially? This is being used in the model and almost everywhere. ASM 1, ASM 2, ASM 3 are the standards. In any model, ASM means activated sludge model. Okay. ASM activated sludge model 2, 3, lot of things are there, which are the improved version. I think activated sludge model 3 or 4 is currently used in these updated samples. Okay, so that is the standard. It was published somewhere in 1990s or something. Very So those are the governing equations for Those are the governing equations for modeling any activated sludge process or any other processes building. Okay, so these are actually inbuilt in this GPS. These are inbuilt in BioWin. These are also inbuilt in that stored model, which is 3 level. Okay, so this is the state variables. I think you can see over here. What is the meaning of user inputs? Like say, what do you mean by state variables? These are like basic variables that are continuously integrated in the model over time. Okay, so they are actually integrated in the sense they are actually adding these things, and they are not easily measurable or interpretable. Okay, and composite variables are something like they are actually calculated. These variables that are calculated of the state variables, like say, the examples for composite variables are this one. Okay, just remember this, such as this. mixture of two or more parameters. Yes, so it is directly given over here. Composite variables are something like this. So when you click on this, it is based on some equations. Let's say it is dependent on these two things. Let's say carbonaceous BOD filter, it is dependent on this ratio and whatever the input that we actually give. Okay, so these are more or less like you can say it as fixed or based on certain theoretical background. They are actually fixing the state variables, which is not so easily changeable. But composite variables, we calculate the ratios based on whatever the input that we give and then the other relations. Fine. So this is, and this is what I mean, like say composite variables are, and then whatever the input that we actually give. So in this GPSX model, what they have actually done here is like they are trying to explain, like say the various components of B body, then C body, and then solids and everything over here. And finally, they are actually trying what you're asking you to do. Let's say what happens if you give that B body C body ratio as 2 or 3 or 0.75, like that, and all they have actually asked you in this problem. And then
are asking you to find what is the effect of, like say this is a ratio. If you give some other ratio, like say if you decrease the ratio, what happens to the raw effluent TSS and then ML TSS and things like that. So it is pure logic. Like say if you decrease the ratio from 1.8 to 1.4, what happens? You are expecting like the COD, sorry, the VSS is actually increasing, right? Yes, the VSS is actually increasing. So that means it is going to have some effect on the concentration of the biomass MLVSS over here in the bioreactor, and then on the effluent solids. It will have, and that is actually reflected over. That's it. Okay, so you need not do it. Okay, but you need to know that these ratios, whatever that we are actually giving, no? So these are very, very important. Like say this BOD to COD ratio as well as COD to VSS, or any ratios, TSS to VSS, VSS to TSS and things like that, which are there in this model, especially these ratios. Okay, these ratios, and then anyway the variables will be measuring and then giving it as a name. These ratios also have a lot of significance. Not only this, later on we will also see that biokinetic parameters also. Okay, so by default some values will be actually assumed, but we can also experimentally determine it and then put some specific values. So in modeling, okay, in modeling this, a lot of variables are. You can start initially with the basic assumption, basic variables that are actually there. And then if you have some specific input from the experiment and all, you can use those in small. Okay. And for paper and all, you have a very good resource over here to play around with the variables and then comes out with the logic, like this is happening, like this is happening. Fine. So this is about the exercise 2. Like say, I think that's it. They are giving you a lot of different things. Like say, they are giving you BOD5 to ultimate BOD ratio also, and then they are asking you what is happening. Right? So when you actually model it, what does this actually mean? BOD5 to ultimate BOD is 0.6, whereas here BOD5 to ultimate BOD is 0.4. This is typical of the domestic based model. Okay, this may be something like influent, like some other effluent, like say industrial effluent and all, maybe having this, which is saying that the easily degradable organics within 5 days only 40% is actually getting degraded. So that means that it is some other effluent. Okay, industrial effluent. You can even same exercise what you have modeled. No? So you can change the ratios and then check the output variables, what is actually happening. Okay, so if you want to see that, how can you do that? Just change this ratio, whatever is actually given over here. Yeah, here. Okay, and then you can see, go to the simulation mode, run it, and then check over here the results. Yes. You get that. Okay, so that's a very simple way how to do. So this is about the second one. Okay, third one is like say compare the performance of the alternative reactor configuration. Right, so here first case is like completely mixed reactor with no recirculation. Next is like mixed reactor with solids recycle. Third is plug flow with recycle. Last one is like biological solids recycle, plug flow with step feeding and then biological solids recycle. Step feeding is like, you know that, I mean like the feed is actually coming to each and everything. So how that model also can be built over. Okay, so for this you start with again I think the starting point model. Anyway you have it. Okay, you start over there and then you are doing the completely mixed reactor without recirculation. So what change you need to do for this model? Delete yes. Delete. You have to go here. Where is that they are actually saying? You have to go to the What is the page number? secondary clarifier 26. You have to go to the secondary clarifier and you need to go to the input parameters and change the underflow to 0. What happens if you do that? Here click input parameters, operational or physical? I think it is operational. Operational. So underflow, what is the thing here? It is
2000. So it is recirculation rate. No? So we are not doing that. Underflow rate to 0. Yeah, underflow is 0. So now nothing is actually happening. So 0, you have set it. But it doesn't reflect, right? Huh? Like You have to rebuild the stream model. is still there. Still is still there? Yes. Maybe you have to run it. I think it will. Okay. It will say rebuild model. Rebuild. You have. I think once that is done, whatever they are actually doing, switch to simulation mode, rebuild the model. Switch to simulation mode, rebuild model. Take some time. But once it is rebuilt, run it. Yes, run. One thing what they are actually saying is you can actually visualize everything in the form of graphs, which is what like this graph, which is what I am not able to get. You can try and then check, but from the graph also we can visualize the results. Like say you will get the values. The graph is simply a graphical representation. I'm not able to get that, but I think we can just try and then check. Rebuild, finish. You can run it. Yeah, I already Done? because now it will be 0. Definitely 0. How come? So you need to No, it is not. I did not turn. yeah, one more tab you need to create. I think they are saying graph. Graph. This one. Graph is this one. That is table. The other one is graph. Yeah. New graph. This one. This graph, this one is table. Click on the graph. Graph tab. One more will come. Now you need to bring in all the things. Graph is done. Graph like plot everything. What I feel is table is better than graph. Graph you are just getting the thing, but it depends from one person to another. No, graph you don't get it. I think you have to. No, you'll get it. I think you need to. You get this now, so you rename it as whatever they have actually told or not required. Operational performance is what they are actually Digital saying. graphic. So rename it. Okay, and then you may have to bring it from the flow. Like say you go over here in this. Okay, right click. What is that? They are actually output variables flow, right? So you get this tab flow. Okay, and then you have an option. you need to actually enter something like this. It comes over here. You have this option, no? You click on that, it will come over here and exit. So flow is has come. Okay. Similarly, the other parameters what they are actually told. Like say click on right click on this, you get that. What? Right click on this. Output variables. Flow. Click on that. So now click on this. It will come here. Flow has come. What? Yeah. Good, no? Next is like you have to get all the output variables from these different units. In the manual what there was, you just bring those parameters only. No need to bring everything. In the manual what one is flow, the other one is analysis. I think we need COD we need. Then ammonia, I think something they have actually told. Just bring all those parameters like this one. What is the other one? Suspended solid COD. From which stream? This is from composite, and that too from which bioreactor? Or what? DO. Just bring all those things into the tab. Sujay. Last thing you had here. ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸರ್ಬೇಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ
ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹಾ ಫ್ಲೋ just above flow ಆಯ್ತು then screen total suspended solids and C carbonaceous BOD ಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ composite variables ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಬಟ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ you need to bring it from bioreactor ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ effluent effluent you have to bring everything from outfall they have mentioned outfall ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ effluent ಇಲ್ಲಿ effluent flow suspended solids so this is image sample image ಅಲ್ಲಿ no that image ಅಲ್ಲಿ that may be effluent from the bioreactor also I'm not sure very good maybe you're right but I'm not sure but I don't know how they are only selecting whatever they want and that is second selected you have to go let's say if I want let's say here in the bioreactor go there right click output variables composite variables and then I can select the MLSS over here but everything gets imported right so go here click that it comes then I also need this COD in individual reactors click on this it comes over there also then these two have come so you have to click this button 1 2 3 it has come okay right so I have from the aeration tank I have also got into parameters correct removing you need to rename it okay so from output 1 output 2 output 3 something like that is there but you need to rename it name it simple bioreactor composite variables in that you bring in MLSS and also Excel. no this one okay it came there Excel then now COD. this one COD Excel okay Excel now I think in SD or outflow I think they have actually asked but here it didn't came even you click on this rearrange or something like that mail blue color Prakash got no you are getting TSS is asked TSS of what I took everything out so that okay effluent TSS is asked you can take I mean like it is not like say I'm just is that what the reports are. That much length is there. bioreactor ಎರಡು Why it is so bioreactor ಎರಡು ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ takes more power ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ what ಅದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ I'm importing the whole thing and deleting whatever I want yeah retain whatever you want now if I don't want this I have to remove whatever. can you push it a little bit more? good. which laptop is this MSP how old is this This is a new one. 2 months on this is very good Yes. It will last. friend has almost around 2012 or no 2000 sorry not 12 Victus huh Victus MSI 2019
It's still running. No It is- battery, nothing. Yes. No battery. I have kept the battery to 60% only. It charges only up to 60%. Yes. Next, when I buy, I'll be using MSI is a very good company. The naming also is very good. controller from that. Yes. Microstar International. Even it is not that costly also. Yeah, it is actually the best price for any other. All the other laptop manufacturers are focused on gaming, Correct. and they are trying to take a lot of money from them. This has got a very good display And also. with respect to time, whatever configuration Yes. you buy, so that even it lasts for 10 years, it will be okay. Yes, this will last me for 10 years at least. My previous laptop that I received from Manipal Institute lasted me for around 10 years. What was the brand? HP ProBook 4440. Then I got a second hand refurbished. It only lasted me 6-7 months. So rather than getting a refurbished one, best to get a new laptop itself. Okay, so whatever the parameters that there actually are, so composite is from the bioreactor, you take suspended solids and COD, right? Suspended solids is nothing but MLS is I think there. And in the state variable, same bioreactor, go to output state variables. From there, you are supposed to pick DO and ammonia. Okay, so here When we- have DO. When I'm going for this one, the influent flow, I'm not able to get it to come to the graph. Once this is done, again click on this, you can follow back. This flow is not coming. Which Ionized ammonia. Cancel. No. Flow you have already taken, I think. No? No? I did, and then Close. Click on this. Click on this. No, operational. Click on blue color above. this one. Click. This is auto arrange. Okay. Flow is already taken, so it's Okay, not okay. coming. It's a got it. Free ammonia. Free ammonia. Free and ionized, I think, ammonia. It's done. So Then take these all ones the are- things that they have actually mentioned. Or go, I'll tell. State variable. Go there. So right click. Output. Here, DO. we do that. No, here click on this. Okay. 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 Yeah. Accept. Then again go for free and this one. First one. Again. Accept. So now I think state variables are done. I think composite variables, close this. Composite variables I've already taken. Taken. What parameters? These two. So click on this. Yeah, 4 or 5 variables. What else is to be taken? You've taken a lot of things. No, I am not able to choose what I want to take. You have to Three choose dots. on that small 3 dots. Once you opened it up, How did you take all these things? I simply go here, I click this option. I also did it that way the first time. Oh, everything came. Everything comes. Okay, do one thing. Delete this plot And then file. delete those. Now delete it. Next one where to do? Not that. Not the plot. State variable, say I composite want to variables delete, done, not state the plot. variables done. No, it's done. You click this one. This one, then It's output. plot, right? I think. Okay, fine. This is done. Now Yeah, This one. go to the influent. Where it is? No, if I say I want only Bioreactor. this one, Which one? we took it already. like I want only total COD. No. Not no. No, which one? In that. Total COD. Click on. I think that is. Erada click panna, 3 dots. Yeah, this one. No, that is not there in this case. These 3 dots. No, in this case it is. Just go back. What did you do? Right click on the plug flow, the bioreactor, the No, plug it's flow saying. giant. Okay. Okay, Ah, go to output variables, go to composite or state, whichever one you want to take, Okay. and then Three dots. you had the 3 dots. Click. Click on those 3 dots. And then this one. It will come. But then this is of MLSS, la. Huh. But what you require is not MLSS. What you require? We need all the things. One by one you put. You require MLSS. Look, you need MLSS which is there in the bioreactor.
You need COD okay. that is there in the bioreactor, COD that is there in the effluent. All the things one by one you have to put. After that, After that, you have to, I think, what is there in BOD the- also we have to take. Huh? BOD, BOD of carbonaceous BOD. That we took. Which we have taken. BOD you have COD or BOD you can take. COD I think you can ignore. Fluent. And We took COD. COD you have taken. No, okay. BOD you can take. Both BOD and COD. Okay. Fine. Then total suspended solids, where is this? This is from the influent. That is we have taken. You have taken, huh? It I have not taken. Like first we have This taken I have not suspended, we have taken. Only the BOD we have to take. This suspended solids, huh? And that In we have taken. influent. Not it. No, this one is from the bioreactor. Bioreactor. Sure, huh? Yes. Bioreactor we have taken suspended BOD and COD. This is from the bioreactor. Ah. This one is from composite variables from the bioreactor. Bioreactor. From the influent only flow. Okay. Then that's it, I think. Only 4, no? They have the graph. That you can simply change the. Huh? No, for graph, you can simply change the type of data. Type of access the But properties. Right click on a graph and select rename a graph to name a graph. Then how we will get those graphs? Okay, first we are taking it like that. Output graph type. Actually, you can choose XY protein bar chart. Right click on it. Idra. Illa. And right click on any of the attributes. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್. ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. Okay, so when we do it like this, before we click accept also, if we choose it, it will take it as output 5 in the same thing itself. Right click. Our total carbonation BOD 5, individual reactors. So ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ if I put digital I get it as small thing. but you have this after this. Okay, then take it as again I output right click 6. on it. Graph type ಅಲ್ಲಿ if I put XY ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ I get XY scan out. So you really have to do everything after the. But you Andre have parameters to label. huh? There are no parameters, there is no continuous graph. This only data functions. But this one is. This is just From even in the here, if you have this one, no, you can see the values directly coming there. yeah. How to get it graph? He's saying click on that is what I'm even not able to get. Right click on that and then No, go to right click XY. is not coming. For me also it is not coming, but him it is getting. But here in output properties, what he told it is there. State variables. Output properties. This one, the setting. output graph type you can go digital. If you Okay, go digital. I get it. Are you just check in the blue with the one click? Check this, click this. This is expansion. This is expansion contraction. Dissolved oxygen reactor, are you able to take it to the other side? Where did you get? Where did you get? Just random. Not output in the field. Okay. In Ah. the how did you get? Here on this side. The output This is the properties. problem when I was getting Dissolved oxygen Properties. reactor. Click here first. Dissolved oxygen reactor, were you able to transfer? Here. You can transfer whatever. But the graph doesn't make sense. I'm not able to get this. So you So, get all the Then There is one more thing. Say this is the. I want this variable. I can simply drag it here. okay. It comes here. Now I can change the graph type to digital. Okay. You have to do That for is, every single one. That is easier. That is easier. Easier. What he did was, like, say, click on any one of the parameters. Parameters that you want. That is better. Input parameter, output parameter, That's a parameter. You can சும்மா drag பண்ணு. I did that also. state variable, anything. Just drag and drop. Okay. No, no, Here, click on from this, here on. drag and drop. Okay. That is easy. ಬಂತಾ? Let's check whether you are able to do that. Then you change it to digital. Ah. Nitrate. Okay. Okay. Then
it again. Now change the type to digital, you get it as So what you were doing is you were clicking on the right input side. field variable. Here. Yeah. Not here, not even here. Here, Yes. output variable. There I simply change the output graph type. It will come directly to graph. Otherwise, it is It not won't come overridden here. at all. Now there is no values, no nothing. You have Just to the run. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸರ್. Oh, ಇದು run ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? You have to run. Then it will come. Okay. Our output 7 will get directly. But this is ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ output 7. you have to follow MLSS. The font size is also very less. Essentially, the reason why we are doing this is we are just looking for a few specific parameters that we would like to display to our Correct. client or something, Correct. and therefore we are going to have this as data logged over here under the operational Yes. performance. But I think you need to have it in, I mean, like the value itself is better. Right? No, sir. Why? Even if you run, you don't get any bar graph. No, no, you get bar graph. You will. You don't get. You will get. No, I was getting Not even a single bar is coming. Actually, I'll try explain. bar graph. I'm getting the value directly. I am also You have to get some value. getting it. But output, I think digital is better than all these things. Yes. Maybe later exercises they actually are saying which one is better. But here, what we need is just the value, you know. Okay. Oh, the field color is different. Okay, so this is the end result of whatever simulation. But even here also, whatever you need is actually bought into this field. But you can see if you go to the influent, there also you have flow. Yeah, everything is there. If you go to bioreactor, there also you can see. But whatever you need, no, that is specifically what over here. That's it. Okay, and yeah, there are a lot of scenarios over here. I think they are stuck over here. So this is how basically we create either chat or the digital display or something like that. And yeah, Sankey diagram you already know. When you go click this, this is like without recirculation. You can see clearly in this diagram, right? So in terms of flow, 200, 2000, 2000 directly it is going. In terms of TSS, also same. Okay. In terms of the other thing, like say COD also same. This is without recirculation, right? So then I think that's it. So this is one of the thing. Like say here the underflow is actually 0. What next? If you want to put it to recirculation mode, then you may have to change the scenario. Okay, scenario is what I think here you have saved it, no? You save it. We can save this one. In this, I think by default it will be saved. Here you have seen, you see here scenario below. Okay. Okay. Here below there is one tab called as scenario. Click on that. You go, now the selected scenario is default. Okay. You go to the new scenario and then here you type completely mixed with the recycling. Only one scenario can be modeled in like. Okay, that is a drawback. So now you are in the recycled scenario. How can you check it? Go here, select scenario, you are in recycled. Fine. So this is recycle. So what changes you need to do over here for recycle thing? Recycle you have to include. Go to the secondary clarifier, go to operational parameter, and then here whatever the underflow is there, no? So that can be changed to 2000 or whatever you want. 2000 is what is included. 2000 is implemented. So if you want to vary that, like from 2000 to 0 to 2000 or 1500, whatever, that option can also be actually changed. Like say you just need to drag and drop it over here. It will come here. Recirculation bar, underflow rate, no? That itself you drag and drop it into this controls. Sujay, Vignesh, look here. Okay. This underflow thing is there, no? Yes. Drag and drop it over here in the controls.
So you get that. So you can change it to 2000 here and then run the model. That's it. Okay. So in this also you can click on this. I think you can click on okay, 0 to 1 is there. Somewhere we can edit it on here. No, sir, there only 2000. Maximum you fix it to 2000. Yeah, we got it. So you get from 0 to 2000. Yeah. Any recirculation rate can be set. But I don't think it is changing. Huh? When you change it, then you have to again run it. Yeah, you have to run it. Every time you have to run it. That is, so let me say 0.623. You have changed the underflow rate. Then Maximum is 2000, right? Underflow rate, I have Yeah. run it. No. Whenever not you 0 to scroll 1, through the you bar, go to settings. Okay. Then and then you run it. There you So you change get the it to new 2000. parameters that have been calculated. No, compute. you do one thing. This settings. Yeah. Go to settings here. Okay. There it can be Set increased to 2000. 2000. Yes, sir. Yeah. This is Okay. It totally. is only to 0 to 1. Here also we can But in change the it. Sankey diagram, No, you can't because the maximum limit is 1. So go to settings, change it. become red, it won't change. This maximum set it to 2000. Then you can change it there. Okay. So in the Sankey diagram, check whether it is accepting or not. it is accepting, but there is some problem in the Sankey diagram. What problem? I am getting one stream going to infinity. Huh? Sankey diagram. Here mine is fine. It's coming, no? Yes. Whatever the recirculation rate that you actually put, it has to come. Wait, this is one stream. Okay. What line is this? This is how I'm getting. Like one stream is this. No, what is the value of the recirculation thing? I have given 1446. Okay, you run it. Okay. No, I'm getting. the Thank you. value. It's the red color. This is 2000. The red color icon. No, Yes. this thing is wrong. That is what our input parameters are. No, it is not coming. 2000. The correction is Yeah, proper. taken no? 2000. That is what I This has what I taken know. 1042. This is No, going no, somewhere. no. Just go to the model. Go to the model. Modeling model. Click to the layout. Go to the layout. But there is some problem. No, go to view. I tell you. Go to view. Sir. Locator. Just select only this one. Yeah, only. It is going somewhere. So you need to delete it. No, it is going somewhere and it is returning back. Where it is coming? It is going not. Yes, sir. Returning. It is that there is a like, No. Zoom out. but this is going elsewhere and elsewhere. So you need to fix that first. I think then it will be fine. It is going infinitely somewhere. So you are traveling from cities. It is a complete line over. From I am not able to bring it that up. Yeah, do one thing. I Delete it. delete it. The arrow should become green in color. So from there. It should become green in color. Yeah, And then we'll release when it is free. So this This was how it was, but then it changed. how? I don't know. Maybe you were dragging and dropping things here. Fine. So this is with the recirculation, completely mixed. You can check the recirculation rate, check the performance on the effluent water quality, like you can make it 0, 100%, whatever, and then check this thing. Okay. So this is completely mixed reactor with recirculation. Fine. So what else is there in that? Plug flow reactor. This is the next one, right? So this is only scenario 2. Only 2 scenarios default, and then this one can be modeled over here. I think all of this thing we have done. Yeah. Next one is like I'm sure if they make it freely available, several nations will get benefited by their design and but it technology. is like not hard software. Like Yeah, it is, I think, Because there is- environment is a very valid viewpoint only. Because climate change, one nation, one subscription is there for all the publications. So something perhaps we have to work and legislate it out now that artificial intelligence is here. it is not. Still not coming. Why?
Or else we have to develop our own open source code, starting from scratch. Flow is there. Sit and do one by Flow. one, Flow is coming from Flow. and then release it. Which country is this? Bioreactor, flow, Which country is It's just like I guess US, US? yeah, flows coming. Hydromantis, no, .com, US. Coming. It is coming, it is not, it is not showing the Sankey diagram. Sankey diagram, click on this. Commercial. How much is for the subscription? Subscription, check. More than What did you do? I that the value change. It is there, but It is there, but not visible. Some small error is there. maybe once if you close or Some open, small I think bug. something will come. Okay, so this one is for computing digital reactor with recirculation. Then the next one is plug flow reactor. How do you model the plug flow reactor now? By this time, I think it should be 31. somewhat having an idea Number of sections. in the aeration tank. Okay, so Right. change it to 4 or 5 or 6 or whatever. 9,900 list. Okay, so plug flow reactor, in that way you can change it. Even I think after that also you have in this only you can see. Okay, so exercise I think page number 31. Okay, page number 31. So you have that plug flow reactor instead of completely mixed reactor. If you want to model, what needs to be done is like in that the number of reactors should be set to 4 or 5 or 6 plug flow reactors. And once you do that, yeah, you may have to save it in a different file because this has only two scenarios. Save it as PFR scenario to example 3 or something like that, and then try to work it. So and then you run it. Okay, you run it. You will see the difference. Completing this reactor, whatever the result that it actually gives, there will be some change in the plug flow rate. So that is how basically you can model CMR and then PFR. And then step feeding is also there. You can create one more scenario for that. Okay, in the same PFR, okay, you can create one more CR where step feeding is actually done. Okay, how do we do that step feeding? I think some small, I think increment fraction something is there, no? Yes. Modeling, you have to go there. I think here. Wherever that increment fraction, I think more. Something we have to enable over here. Step Page feeding. number 33. I think one more scenario, input operational is rolled down to internal flow distribution limits, input parameters operation. It is in bioreactor, sir. In this input parameter operational. No. In bioreactor, last option you have to drag down. Input parameter Operational, Uh, come down. okay, flow distribution, right. So in this, you can increment fraction, right? Yes. So here click, I think this is 0.25 or something we have. Here it is 1. Since it is CMR. If you change it to PFR, I think it will be 4 thing will come out. So 0.25, 0.25, 0.25. Equally, you are actually distributing the increment period. How much are we taking? 0.25. Huh? So I think this thing is done, no? So we will save it as Value sum must be 1. CMR. Are you able to do it? to change it. Values must sum to 1. There's a Yeah. difference of You have to make it to 4 divisions first. ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ operational where you have to make it. ಫುಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಾ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡು. ಓ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ 0.25 0.25. 4 divisions. ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ நீ first மேல போ. Yes. எவ்வளவு divisions போட்டிருக்க? No. Just put it upwards. Like drag the cursor upwards. Let's stop. Like not in this number of divisions value get. ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ It's number of four divisions. first one
No, okay, that above one. Not that. Number of reactors is 4. This is in still completely mixed. Number of reactor. 4. I'm not able to change it though. Cancel and then do it again. No, you have to go to modeling. Go to model. Keep it as 4. Yeah, accept. So then again go there. No. Go there. You continue to the same. Cancel. Modeling, go to input parameters. There, operate. No. Lost. Yes. 1, 2, 3. This is like the last one. Flux flow reactor with step P. Okay, done now. Okay. Now when we do it, Similarly, recycle fraction is also done. Yes. Okay, so recycle fraction, I think from the There. from where it is actually taken. Mix it into recycle fraction. I think it is taken from underflow rate. Let's see. Again, you have to run it. yes, every time you want to simulate, you have to run it. Then yes. Next. What is this configuration? Like say the plug flow with step feed. What is this configuration? Like say what This is is the model we're doing? plug flow example 3. This is 4 reactors with 0.25 fractions. That is easier, no? This table. Table form is actually But why I am getting so many effluents inside? that you are checking it. Sorry. Effluent is because plug flow reactor. You have selected 8 reactors, huh? No. You're I getting haven't done 0 it. here. Here, go. Where? For bioreactor. Eight, how many are there? 10 are there. I haven't done that. 0. So Pump is not on, no? Therefore, it is. it is because of that. We are not doing anything with it. We have not connected that pump to anything. I haven't changed it. This still This thing I is not connected to It anything. is something like that. Here we have to connect this one. But We this don't is need to. much convenient to see. We are not doing it like Yes. If you we can see want to from connect, everywhere. what we have to Go do? to table and then If you connect Even the here I there am doing the same thing. The old Some this is sort of why- this is where it recirculation. started. okay, go to this. There I am using only influent. Equalization, some tank. This one should be 2000, right? Clarifier, Clarifier effluent. clarifier maybe. you That can is set between it 0 to 2000 you can and send. then come Should be maximum, And right? only flow. Right. Then we have to If you run want to calculate it for that, you can change it to that. Outlet is this effluent, right? This is clarifier. Clarifier. Yeah. Then again we have to run it. Yeah. This Only one. this. Okay, this is the better way of understanding because maybe the graph and all are required for some other purpose like papers and all, but this is table form is very easy and convenient. But the Sankey diagram there is. Sankey diagram you can get it. No, you are not getting. I think some issue is there. No, You now are- that you have fixed the modeling properly, you will get the Sankey diagram also, right? Modeling is fixed. Modeling is actually fine over there. I think some bug or maybe restart it or Restarted probably. It was working fine till now. This is PFR. PFR. Huh? Yes, sir. Plug flow reactor step feed. Yeah, we need to. Third express. Huh? No. Yeah, configuration. 4th configuration. 4. I have not checked this diagram.
Yeah, because that is the value we have set it up over there, right? Four we have set up. Hmm. 40. Yes. That In one that is that pump 44. is over here in the secondary clarifier. This pump is over here in the plug for reactor, the bioreactor. There's some problem with my software. There's the small glitch. So this is how we can get. That is why do you have the starting point save Yeah, file? even then we are getting the same thing. Huh? Do you have the starting point save file? Try to load the starting point save file. Over there it must be Yeah, so if you go to that energy where plug symbol. No, after the plug symbol. this one. The coin symbol. Go to the coin symbol. After the plug symbol. ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ outputs ಗೆ coin symbol ತೆಗೆದ Coin symbol thing. ಹಂಗೆಲ್ಲಡ right side Right above the side. reactor. Sankey Yeah. diagram. Near the Sankey diagram, there's a coin symbol. Okay, okay. Ah, Operating okay. cost. Operating cost summary. Yes. Mine. Open ಆಗುದಿಲ್ಲ. You have this open and Maybe in GPSX Lite it is not there. yeah, it is opening for me. Maybe it will try to load. Okay. Why is this taking too much time? No, I think it is zoomed in. Zoomed in. No, no, some. So what happens? Okay, is, yeah. What did you do? now You have to I click was over just here. checking What across. Then this one is not opening. It disappears. There is some glitch in it. Yeah. So if I am choosing one parameter, it goes. Okay, then Graph appears and then it goes. where did you This operating cost. there again? Next to the layout view, just click No, somewhere. the graph doesn't stay up. Table 5. Just click on that. Yeah. This one. Here's and disappears. Okay, for you something else. Because my parameters are most probably. Okay, you took extra. Yes, yes. Somehow it appears and disappears. Yeah, The yeah. only They don't want to show thing it. is, it is not showing up. They purposefully maybe they're doing it. Yeah. Like- No, now once you that close might it be- and open it again, it is not doing it. This one works, sir. Once you Fine. So yeah, now it is this working. is blood flow rate. So after this, I think This is there are interesting. one more exercise which is important that to actually practice. Okay. This one is till this point. I think you are clear, no? Yes. So this one, please practice. Effect of SI. Go home and then practice this. Okay. And DO controls. Controls in the sense like they will be showing the application of nitrification and denitrification in the activated stress process itself. Okay. You can turn on and off the aeration. Okay, using this. Okay, this exercise 5 you can practice. Okay, and after that I think it is fine. More or less if you have done this. Okay, so next one. Temperature is fine. I think that is okay. Aeration control in that only you will be actually more or less knowing surface aerators or diffuse aerators. This is fine. That fifth exercise is important, and after that, yeah, this one you can try. Go home and then total nitrogen removal. But how do we actually model 8, 5? Then kinetics is also important, but this is just playing around with the biokinetic parameters. What happens when you do this? This you can ignore or even practice, not an issue. Then what else? Last, I think anaerobic reaction. Secondary clarifier performance is okay, You but actually like say how variables actually affect the performance of secondary clarifier. This I think you can ignore or you can even see this. But this one you try, 11, anaerobic reaction. Okay, so I think mass balance is what I mean. Like normally, it will be available. I think even in Sankey diagram also it is something. Though that too is subject to the energy usage, and the operating cost is subject to the parameters they have considered. what right. parameters that they are considered, but it is Whatever not only- values they are using for their what retention, values? their pumping cost, their
Yes, I mean, like it is very biological much related to whatever, how many pumps Yes. and what is the energy efficiency. Whatever of the treatment pump. they are doing, whatever cost of chemicals they have considered. Exactly, if you want, you can control it. But if at all, I mean, like, Is there if you option? don't have anything, at least something is there, okay, which is actually the first ready reference or something like that. They've given it a lot of thought. Okay, so but the most important thing is like you can control. Yeah, output Is it- variables we have it over here. We can change these also. Yes, you can explore a lot of things. This is just an introductory thing. Okay. Okay, so go home and then just explore this. So of course here in GPSX Lite you don't have that possibility. That's what I think that's correct. Fine, I'll stop here. Yes, sir. Beautiful software. One must Similarly, commit to the best. Similarly, there is one more software which is also equally good, BioWave, but we don't have the license. They don't even have the light sort of software For us to That try. is also equally good. Free software if you want to use, you can try with stock. Okay, that I have been mentioning in the class multiple times. That is freely available, but this much easy graphical interface is not. You can drag, drop, everything is there, but it has some what do you say, some rigid process to which you have to go multiple. That makes it user interface more rigid. Okay, but you can still use it for the modeling and analysis. Fine. I think I have forgotten to tell you there is some way in which we measure the let's say direct analysis and then indirect methods of analysis of your performance. Direct is by means of the marks what you have scored in Witson and SEM and all. But when we actually indirect in the sense like by through some feedbacks, okay, we measure. Let's say for a lab as well as AWPT, I'll be actually sharing some MS forms. In that, CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, 5 zeros are there. So how much you have understood and how actually whatever theory classes that you actually understood. So you have to rate in that. Okay, based on that, I think we will be actually calculating the overall attainment of all the subjects. I have forgotten to distribute lab as well as this. I'll send I you. think we completed. You completed for the other subjects. That I'm not- was feedback for the I have SLCM not at all portal. given. That I was forgot. different. So This is but different. that I have to keep. Okay, so without that I can't calculate the attainment of overall attainment of this subject. Okay. I'll share it. So please fill it up. It Okay. hardly takes around 2 minutes. Okay. For lab as well as this. Okay. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Have a great day. Practice. Yes, sir. Even if you get the software somehow, Yes. Bionet software, you can use it, but be very, very careful about not. Very intelligent on all fronts. We have been just entering Grace Infinite for the well-being of our own personal growth. They are not publishing any data or anything. What? If we want to use it also, there are certain dimensions to how we can do it. No, route it through some nation. I don't know. You explore it and let us know. Okay, so but you can all what I'm saying is just practice this so that you can explore the different aspects of GPS then modeling. Yes. Fine, thank you. Thank you, sir.
GPI. Honorable members, a supplementary list of business participation under Brijlal Parmali. Brijlal Parmali. I have informed that the district माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष
Yes. Now, where does Isaac function? See, my mother. See, that's the topic.
सभा के प्रकरण पर रखता हूँ। धन्यवाद। शून्यकाल अभी को बच्चे श्री भागवत
की प्रगति में सहयोगी सिद्ध हो। श्रीमान धन्यवाद। September, we have officially, through a note verbal, taken up her treatment, her maltreatment, with the American Embassy. We have made clear our very strong concern about the manner of her treatment and asked the embassy and the American authorities to look into this matter. So, again, I would like to say, sir, my answer is absolutely accurate. I know perhaps the honorable member, out of concern, having read press reports, is raising a matter. We have gone into the matter, we have clarified the matter, we have launched our concern, we have indicated our concern to the American Embassy, so I hope you will rest assured. Second subject.
कंपनसेशन ठीक है, पर जान जाने से बेटर है कि प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में कुछ सोचा जाए। वो वसूली जो उद्देश्य है, जो इससे प्रभावित है, मैं आपके माध्यम से सरकार से बात की पुनर्विचार का आग्रह करता हूँ और उनका ध्यान रखा जाए जो ग्रामीण सीधे इससे जुड़े ऊंचा किसान मजदूर मैं सिर्फ इस पॉइंट को हिंदी में भी कहना चाह रही हूँ। वो नेपाल की सीमा लगी है, कई देशों की सीमा लगी है और यहाँ तो इतना गोला बारूद आ जाता है, उस पर रोक नहीं है। दिल्ली में जो है कहाँ से आया पहलगाम में आया पता नहीं। तो इससे अनियमित और अवैध इलीगल 2010 में हुई और इसकी इलीगल मार्केटिंग को पीछे पड़ने का खतरा पैदा होगा जस्ट टू सेव द टैक्सेस।
तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, इससे बढ़ सकता है। और छोटे निर्माता तो औपचारिक तंबाकू खेत के कर्मचारी जैसे बीड़ी बनाने वाले भी संबंधित कारोबार से अस्वाभाविक प्रभावित होंगे। इस विधेयक में तंबाकू उत्पाद बढ़ाने की बात तो है, लेकिन तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हो सकता है आपके मन में हो, पर इन राइटिंग नहीं। इस एक्ट पे कहीं स्पष्टीकरण नहीं कि पैसा कहाँ जाएगा, किस चीज में खर्च होगा। मेरी पुरजोर अपील है आपके माध्यम से कि इसका जो पैसा आप कलेक्ट करें वो जाना चाहिए जो इससे प्रभावित है। ये सिर्फ पैसा कमाकर अपने टैक्स में मत डालिए, क्योंकि इस टैक्स की सबसे बड़ी खूबी है कि अगर आप साल में नहीं खर्च कर पाएंगे तो अगले साल कैरी ऑन हो जाए का ये एडवांटेज। ये कहना चाहता हूँ नॉर्मली स्टेट ये सब जो आप रहते हैं मगर इसमें एक स्टेट्स को भी हमने क्योंकि हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हैं। एक स्पष्टता मैं पहले से देना चाहती हूँ क्योंकि पान मसाला जीएसटी के सिस्टम में भी है और उधर डीमेरिट के नाम पर क्योंकि कैटेगराइज किया गया है इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो जीएसटी सिस्टम में आप लगा सकते हो टैक्स 40% वो इसके ऊपर भी लगाएंगे जीएसटी के सिस्टम में। सो क्योंकि ये आइटम ऐसा आइटम है पान मसाला जीएसटी सिस्टम में भी है। इधर हम सेस लगा रहे हैं कि क्या हम जीएसटी को वीकन करना चाह रहे हैं, तोड़ मोड़ करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ बाधा पहुंचाना नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी इन सकल जातियों को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 19 के चुनाव के पहले एक विज्ञापन दिया। एक विज्ञापन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि इसमें सरकार कुछ है कि मोदी योगी की सरकार ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने का आदेश जारी। सभी जातियों को इन जातियों के मिलते जुलते ये कंपनियां खोल देती और उनका लुक भी वैसे ही पता लगा का प्रचार हो रहा है, शराब का प्रचार हो रहा है और कहीं छोटा सा सोडा की बोतल दिखा गया है। तो ये विज्ञापन कड़ाई से इस तरह पालन कि जो उद्देश्य है वो पूरा, वरना तो रास्ते ढूंढ लिए लोगों ने, प्रचार होता रहा है, हो रहा है। सरकार का उद्देश्य तो नहीं पूरा होगा। अगर मकसद पब्लिकता का सेवा तो वो करनी चाहिए। और देखिए क्या हो रहा है, जिनका इरादा है कई सौ % लेवलिंग करके बढ़ा दो और सीधे उसके लॉ सेंटर स्टेट को उसका फायदा न मिल सके और फिर उसके बाद उन्हीं स्टेटों को देंगे जहां इनके मित्र हैं। मैं दूर तक इशारा कर रहा हूँ। स्मगलिंग होगी तो एयरपोर्ट जो बदनाम रिकवरी हुई, जहाँ चेकिंग नहीं हो रही आजकल वो रास्ते नया कानून के द्वारा प्रोडक्शन उत्पादन के ऊपर टैक्स लगा रहे सेस के नाम पर और उसको स्टेट्स के साथ भी स्कीम के द्वारा हम शेयर भी कर रहे हैं। ये है इस कानून का एक यूनिक पॉइंट। इसको मैं पहले ही सामने रखना चाहती हूं क्योंकि सदस्यगण को ये परिचय होना चाहिए और ये टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट में लगा रहे हैं। ये बात मैं उल्लेख किया 1 मिनट पहले, दोबारा बोल रही हूं। इट इज इम्पोज नॉट ऑन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी के द्वारा लगा रहे, मगर इधर मशीन लिंक्ड और कैपेसिटी बेस्ड पोटेंशियल के ऊपर टैक्स लगा रहे। सिगरेट को मशीन लिंक्ड कैपेसिटी के ऊपर टैक्स कल एक्साइज के द्वारा लगाए, मगर पान मसाला जैसे मैंने बताया क्योंकि एक्साइजेबल नहीं है उसके लिए अलग सा कानून बनना पड़ रहा है। कुछ और मकसद नहीं है, मगर ये जो कानून अभी हम सेस के नाम पर ले आ रहे हैं
जीएसटी का सिस्टम का ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके कारण जीएसटी कम होगा ज्यादा होगा कोई कुछ नहीं, वो सिस्टम इंटैक्ट है। 1.35 मिलियन यानी 13.5 लाख एक और स्पष्टीकरण मैं देना चाहती हूँ, लोग क्योंकि मशीन बेस्ड कैपेसिटी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, प्रयास होता अगर हम मिलजुल के कर ये प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर टैक्स नहीं है, वो भी स्पष्ट रहना चाहिए। पर नहीं जीएसटी में कंजम्पशन के ऊपर टैक्स है, कोई उद्देश्य नहीं। इधर मैं बोल रही हूं क्योंकि एक्साइजेबल नहीं है इसीलिए एक नया कानून, गुजरात के तत्कालीन और कैपेसिटी के ऊपर टैक्स करता हूं प्रोडक्शन के ऊपर नहीं। आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसके ऊपर, ऐसे नहीं, प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर। थोड़ा पान मसाला का विषय समझने वाले के लिए मैं ये स्पष्टीकरण थोड़ा विस्तार से बोलना चाहिए। एक मशीन हो सकता है एक्स स्पीड में चलता है, इतना पाउचेस तैयार करता है, दूसरा मशीन हो सकता है और तेजी से काम करता है, ज्यादा पाउचेस तैयार करते हैं, ये पान मसाला का। दोनों अलग है, दोनों का प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग है। आखिर वो दोनों क्या उत्पादन एक्चुअली प्रोडक्शन करते हैं वो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, उस कैपेसिटी के ऊपर चलता है सेस लगा। तंबाकू को सो हर एक फैक्ट्री के लिए खजाना बढ़ा लें उनका लायबिलिटी अलग अलग से तैयार होगा। निर्णय कौन करेंगे, वो अपने आप भी करेंगे, सरकार भी करेंगे, मगर हर एक का अलग है उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर। सो मैडम, सिर्फ इतना ओपनिंग में कहकर, क्योंकि स्पष्टता रहे डिबेट में, इतना कहकर मैं बैठ जाती हूँ। डिस्कशन के बाद रिप्लाई की द्वारा मैं रिप्लाई भी कर सकती हूँ हर मेंबर का विषय। माननीय सदस्य श्री वरुण चौधरी जी। धन्यवाद मैडम। पान मसाले के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है, यह इस विधायक के माध्यम से जानकारी मिलती है। कल चर्चा हो रही थी कि तंबाकू के प्रयोग से, सेवन से बहुत सी बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, जाने जाती हैं, लेकिन आज इसके अंदर अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। पान मसाले पर उपकर लगाने से, सेस लगाने से न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा का व्यय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यय को भी पूर्ण करने की क्षमता देखी जा रही है। मैडम, विधेयक को पढ़ने से तो ये पता चलता है कि ये स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, पान मसाले से स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा है। पान मसाले से स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा। हरियाणा में भी इसी प्रकार से जब कोविड काल था तो सभी स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया, मंदिर को बंद किया गया, गुरुद्वारों को बंद किया गया, लेकिन शराब के ठेकों को खोल के रखा गया क्योंकि उसके अंदर संभावनाओं को देखा गया। मैडम, देश के इतिहास में मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधेयक का नाम एक भाषा में ना होकर अलग अलग भाषाओं में है। कुछ शब्द अंग्रेजी के, कुछ शब्द हिंदी के, जैसा बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं जिसमें मैं भी शामिल हूं, उसी प्रकार से विधेयक का नाम भी अलग अलग भाषाओं में है। तो मैं मानता हूं कि पूरा हिंदी में भी हो सकता है, चाहे विधेयक अंग्रेजी में हो लेकिन उसका पूरा नाम हिंदी में भी हो सकता है। ये आधा अधूरा सही नहीं है। अभी वित्त मंत्री जी ने उपकर के बारे में, सेस के बारे में जानकारी दी, तो ये सही है कि उपकर लगाया जा रहा है, कर नहीं लगाया जा रहा। कर लगता है
तो डेवोल्यूशन होता है, हस्तांतरण होता है, राज्यों को भी पैसा मिलता है, लेकिन उपकर लगाने से क्योंकि हस्तांतरण नहीं होता तो उससे सरकारें कमजोर पड़ती हैं। और आपने देखा है कि हर राज्य आज पैसे की तंगी में है, उनका ऋण, उनका कर्जा बढ़ता जा रहा है, उनकी जो ब्याज की अदायगी है वो बढ़ती जा रही है। और जैसा कि अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये जो उपकर होगा उसको राज्यों के साथ भी शेयर किया जाएगा, लेकिन ये कहीं भी इस विधेयक के अंदर मुझे पढ़ने को नहीं मिला। कृपया इसके बारे में जरूर वित्त मंत्री जी जानकारी देंगे। विधेयक की धारा 4(2) में लिखा है, जो मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं जी, द सेस लेविएबल अंडर सबसेक्शन 1 shall be in addition to any other duties or taxes chargeable on the specified goods. Duties और taxes, जब पूरे देश में गा के बताया गया कि एक देश है, एक टैक्स है, तो ये टैक्सेस, ये इतनी बड़ी त्रुटि कैसे रह गई? जब एक ही टैक्स है तो टैक्सेस कैसे लिखा गया? या तो इस त्रुटि को ठीक किया जाए, बताया जाए कि भाई देश में एक टैक्स नहीं है और भी बहुत से टैक्स लगते हैं, और या इस त्रुटि को ठीक किया जाए। इस विधेयक के माध्यम से इंस्पेक्टर राज को जरूर बढ़ावा मिलेगा। अभी वित्त मंत्री जी ने बताया कि जीएसटी तो प्रोडक्शन पर है, लेकिन ये कंजम्पशन पे है, सॉरी, लेकिन सेस ऐसा नहीं है, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी पर लगाया जा रहा है। लेकिन इससे तो इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा। उद्देश्य में लिखा गया कि तकनीकी और निरीक्षण आधारित मॉनिटरिंग के माध्यम से अनुपालन होगा। समुचित अधिकारी हर कारखाने में जाएंगे, कैसा फैसला लेंगे और कितनी बार जाएंगे। ये भी लिखा गया कि यदि कोई मशीन लगातार 15 दिन खराब रहती है तभी उनको उस उपकर के अंदर कुछ रियायत मिलेगी। 14 दिन खराब होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। अब जो बड़े कारखाने होते हैं मैडम, उनके पास तो एएमसी होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो छोटे कारखाने होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनके पास इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होता। वो कहाँ जाएंगे और कैसे फैसला होगा कि मशीन लगातार 15 दिन खराब रही? कैसे फैसला होगा? ये वापस इंस्पेक्टर राज को लेके आने वाली बातें हैं। 12 बार और शायद 12 बार से भी अधिक बार रिटर्न्स फाइल करनी है। कोई कमी होगी तो फिर प्रावधान है, अलग अलग जेल के भी प्रावधान हैं और फाइन के भी प्रावधान हैं। देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने इतने समय शासन, शेड्यूल 2 उसके अंदर बताया गया कि अगर जो मशीन की स्पीड है, गति है, वो 500 पाउच या कंटेनर की है और जो पाउच का वजन वो 2.5 ग्राम तक है, तो 1 करोड़ 1 लाख रुपए महीने का उपकर सेस जो है वो लगेगा। इसमें मैडम कोई पाउच आप देखते होंगे कि 2 रुपए का भी होगा, कोई पाउच 20 रुपए का भी होगा, लेकिन ये उपकर बराबर लगेगा। तो ये भी लघु उद्योगों को नुकसान में लेके जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। बड़ा उद्योग वाला तो चल जाएगा, लेकिन जो छोटा उद्योग वाला उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस विधेयक के अंदर पहली अनुसूची में क्रम संख्या 1 पर पान मसाला वर्णित है, जिस पर उपकर लगाया जाएगा। क्रम संख्या 2 में लिखा गया है कि कोई अन्य माल जिसे
अधिसूचित किया जा सके। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर जी ने तो ये कहा कि जो इस तरह के डीमेरिट गुड्स हैं उन पर ही ये सेस लगाया जाएगा, लेकिन कहीं पर भी जो हमारा विधेयक है उसके अंदर ये जानकारी नहीं है। उसके अंदर तो उसको खुला छोड़ दिया गया कि किसी भी माल को जिसे अधिसूचित किया जा सकेगा उसको क्रम संख्या 2 में पहली अनुसूची के जोड़ा जा सकता है। कहीं पर भी डीमेरिट गुड्स का नाम नहीं है, तो ये जुड़ना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि ये बहुत आवश्यक है कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, क्योंकि इस तरह से इसमें बहुत सी कमियां हैं और जो वित्त मंत्री जी ने कहा वो इस विधेयक में दर्शाया नहीं गया है। तो इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और इसके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। इससे लोगों का इलाज हो रहा है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं सर। ऐसे अनेकों जो है हमारी सरकार ने ऐसे अनेकों प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि जो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 जो हमारे माननीय वित्त मंत्री जिन्हें सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उस पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल इसी सदन में सदन के समक्ष सिगरेट और टोबैको पे जब टैक्स लेकर के आई थी कि कंपनसेशन सेस खत्म हो रहा था, तब कल एक दूसरी भाषा थी और आज जब हेल्थ से नेशनल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी का एक बिल लेकर के आई हैं, तो अभी हमारे साथी प्रतिपक्ष के आज उनकी दूसरी भाषा है। मैं समझता हूं कि यह सदन इस बात का गवाह होगा। शायद देश की आज़ादी के बाद से तमाम विभाग के मंत्रालयों के अलग अलग विभाग के संबंधित हमारे विधेयक आते हैं और हमारे इस तरह का शायद ये पहला बिल होगा और ये इस सरकार की प्राथमिकता होगी, इस सरकार की सोच होगी कि अगर हम किसी डीमेरिट्स गुड पे एक सेस लगाने जा रहे हैं तो उस सेस का एक एक पैसा, एक एक पाई हम कहाँ खर्च करेंगे, हमारी क्या प्राथमिकता होगी, या हमारे देश के सामने उस प्रतिबद्धता को इस बिल में दर्शाने का काम कर रही है। और कदाचित आप भी इस बात की गवाह होगी कि शायद एक बिल में किसी भी देश की क्या प्राथमिक सुरक्षा होती या क्या प्राथमिकताएं होती। किसी भी देश की जो प्राथमिकता होती उस देश के रहने वाले लोगों की, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की एक प्रतिबद्धता या गारंटी की बात होती है। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चिंता अगर है तो उसके हेल्थ सिक्योरिटी की चिंता है, चाहे कोविड का जिक्र किया हो और चाहे कोविड के पहले किसी वायरस का हो, कोई पैंडेमिक हो। देश के लिए, सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता उसके स्वास्थ्य की होती है, उस देश के इंसानों की। और दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता कि उस देश में रहने वाले लोगों की सीमाओं की सुरक्षा हो या उस देश की नेशनल सिक्योरिटी हो। मुझे लगता है किसी देश की प्राथमिकता केवल दो सर्वोच्च हो सकती है, तो हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। और मैं बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि पहली बार हेल्थ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी दोनों का समन्वय एक विधेयक में करके लाई है और इस बात की प्रतिबद्धता कर रही है कि हम जो ये सेस लगाने जा रहे हैं डिमेरिट गुड पे, उस डिमेरिट गुड्स का एक एक पाई हम किसी और चीज नहीं खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं खर्च करेंगे, डेवलपमेंट पे, वो भी जरूरी है। आज हमारी ग्रोथ रेट है, जब कल इसी सदन में हमारी तरफ से कहा जा रहा था 8.2, तो हमारी सुप्रिया बहन बैठी है, तो आईएमएफ का कमेंट भी, कोड भी पढ़ लें कि आज भी आईएमएफ ने कहा अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंस्ट्रेंट इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और सबसे अच्छा है, तो वो भी आईएमएफ का कोड है और उसका जवाब बहुत
अस्पष्टता के साथ कल माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है, तो इसलिए मैं उस पर बहुत डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, वो तो आपकी साथी हैं, पढ़ के आती है, ऐसा नहीं है, पढ़ती है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन वो अपनी जो इस्तेमाल करने की चीज़ है उसको पढ़ती है कि जो उन्हें कहना, जानती सब है। मैं सुप्रिया जी के विद्वता पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज कम से कम मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि एक विधेयक में 2 विषय, 2 सब्जेक्ट, कि अगर हम इस सेस को लगा रहे हैं, इस उपकर को लगा रहे हैं, तो वो केवल उस पैसे से इस देश के लोगों के रहने वाले लोगों के एक व्यक्ति की उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी, और दूसरी तरफ उस सेस के पैसे से जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी होगी उसकी गारंटी। तो इस तरह से हम एक विधेयक लेकर के आए हैं कि एक ही कानून से हम व्यक्ति को स्वास्थ्य की भी सुरक्षा देने की, प्रदान करने की हमारी सरकार एक गारंटी दे रही है, तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा की भी गारंटी दे रही है। और जो इस विधेयक से हमारा राजस्व आएगा, वो जहाँ एक व्यक्तियों की सुरक्षा की बात करेगा, वहीं राष्ट्र की भी सुरक्षा पे हमारा पैसा खर्च होगा। और ये एक तरह से व्यक्ति के लिए हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है आदमी की हेल्थ होती है। तो व्यक्ति की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और दूसरी देश की सुरक्षा के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो उसकी पुलिस और आर्मी है। और ये बिल आज चाहे हेल्थ हो चाहे सिक्योरिटी हो, ये नहीं कि आज हम इस बिल को ले आए हैं तो इस सेस के पैसे की हम एक अस्पष्टता के साथ सदन को सरकार आश्वस्त कर रही है। लेकिन अगर इसके पहले हम देखें तो शायद देश की आज़ादी के बाद ये भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि जिसने दुनिया में केवल एक देश रहा होगा, जो यूएसए, जिसके बराक ओबामा ने वो अपने देश की जनता के लिए 24 करोड़ जनता के लिए ओबामा केयर की एक हेल्थ गारंटी दिया था, या दुनिया का दूसरा देश है जिसने अपने 140 करोड़ के लिए मोदी आयुष्मान भारत की गारंटी देने का काम किया है। मुझे लगता है कि शायद इस बात को अब कहने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में लोग विश्वास नहीं करते कि 5 लाख रुपया प्रति वर्ष परिवार के किसी सदस्य को दुर्भाग्य से अगर कोई बीमारी हो जाए, कुछ इस तरह की अस्वस्थता हो जाए, किसी तरीके से जीवन मौत के सवाल, जहां जमीन बेचनी पड़ती थी, अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था और उसमें परिवार समाप्त हो जाता। आज उन परिवार को इस बात की जहां लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा की गारंटी कोविड से आज तक चली आ रही, यही प्रतिपक्ष कह रहा था ये 19 के चुनाव के लिए ये जिस तरीके से 5 किलो अनाज की हुई है, लेकिन आज आपने देखा कि 19 से आज 25 में आज भी देश के हर व्यक्ति की खाद्यान्न की सुरक्षा की गारंटी अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है पूरे देश के लोगों को। आज किसी को यह चिंता नहीं है कि हमारे सामने अगर कोई रोजी रोटी जाता जाएगी या कुछ होगा तो किस तरीके से होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता, आप सुनिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज आपकी भी कंस्टिट्यूएंसी में किस तरीके से आज लोगों को 5 लाख का फायदा मिल रहा है, दुर्या जी आप जानते हैं। और ये बात ये नहीं कि केवल आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी ने लोगों को हेल्थ की एक कवरेज गारंटी दे दिया, क्योंकि गांव में लोगों के पास न हेल्थ इंश्योरेंस होता है, न गांव में लोगों के पास पैसा होता है, क्योंकि सुबह से शाम तक दिहाड़ी करते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की गारंटी मोदी की सरकार ले रही है। और इस दिशा में केवल ये नहीं कि हमने मेडिकल केयर का काम किया, कि हमने केवल मेडिकल केयर का काम कर दिया, आज मेडिकल केयर की बात जहां इस स्कीम से किया है, वहीं मेडिकल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया है। और जैसा कल कहा ही था कि 2014 में इस देश में केवल 378 मेडिकल कॉलेज था, आज 2025 में 706 मेडिकल कॉलेजेज हुआ है। शायद ये दुनिया में इससे ज़्यादा उपलब्धि हो नहीं सकती। और इसलिए कहना चाहता हूँ कि पहले एम्स की बात हर जगह हो रही थी कि एम्स हमारे राज्य में नहीं, साहब केवल दिल्ली में एम्स है या केवल एम्स लखनऊ में है। और आप देखिए कि 2014 में मात्र 7 एम्स थे और आज 2025 में करीब हर राज्य में एम्स देने की प्लान किया है कि स्पेशलाइज सुपर स्पेशलिटी जो पहले दिल्ली और चंडीगढ़ आते थे, आज उसको सबका। और एक संकल्प हमारी सरकार ने लिया है कि आज प्रत्येक जिले में हम मेडिकल कॉलेज देंगे, जिससे कि मेडिकल कॉलेज के कारण वहीं पे लड़कों को डॉक्टर के भी पढ़ने का मौका मिले और उसी की पढ़ाई के साथ डॉक्टरों की सेवाएं भी गांव में मिले।
नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आखिर आप सब लोग वरिष्ठ सांसद बैठे हैं, मैंने देखा है कि जब अगर कहीं आतंकवाद की घटनाएं होती थी तो गृह मंत्री कांग्रेस यूपीए की सरकार में निशिकांत जी भी होंगे कि केवल गृह मंत्री कहते थे हमने डोजियर दे दिया पाकिस्तान सरकार को कि पाकिस्तान सरकार अपने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे। डोजियर से ज्यादा कर्तव्य की स्त्री नहीं होती थी, कपड़ा भी बदलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार कपड़ा बदलते थे। और आज पहली बार है आजादी के बाद देश में 1-2 नहीं, देश के तमाम राज्य आप जिस तरह से नक्सल से प्रभावित थे, उनका चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आंध्रा हो, तेलंगाना हो, साउथ नॉर्थ, कितनी बड़ी समस्या थी। आज जब हम सरकार में आए हैं मोदी के नेतृत्व में 2018 में भी देश के 126 जिलों में जिस तरह से नक्सल प्रभावित था, नक्सल से जूझ रहा था, आज 2024 में वो 126 जिले घट करके 38 हुए हैं। और लगातार रोज गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बयान आता है कि 2026 के मार्च तक इस देश को, भारत को नक्सल से मुक्त कर देने का काम करेंगे। अब इसके बाद भी आप संभावनाओं का बिल कहते हैं, या तो ज्ञान या तो समझ करके भी नहीं तैयार है। ये संभावनाओं का बिल है कि जिस सरकार का ये रिपोर्ट कार्ड हो, जिस सरकार की उपलब्धियां हो, कि हम देश में जिस तरह से एक देश की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नक्सलवाद था जिससे पूरा देश जूझ रहा है और हमने काफी लोगों को गंवाया है। आपकी तरफ के भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लोगों की जानें गई हैं उस नक्सलवाद से। और आज ये देश विश्व के सामने कह सकता है कि हम, और ये कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट को पूरा किया। तो अगर आज इसके सेस से, उपकर से ये पैसा आएगा तो निश्चित तौर से ये संभव इसलिए हो रहा है कि हमने केवल पुलिस से उन नक्सल्स को नहीं किया। नक्सल एरिया में न टेलीकॉम, न पोस्ट ऑफिस, न तार बिछने पाता था, न सड़क बनने पाती थी, नक्सल उसको तोड़ देते थे। आज उन सड़कों में हम आज उस नक्सल प्रभावित को, जहां एक तरफ पुलिस से कम्बैट कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज कम्बैट कर रही हैं, उस क्षेत्र का हम विकास भी कर रहे हैं कि नौजवान नक्सल की तरफ न जाए, नौजवान उस तरीके से, क्योंकि जब वहाँ पे बुनियादी विकास हो रहा है, पोस्ट ऑफिस हो रहा है, मेडिकल केयर सेंटर हो रहा है, टेलीकॉम का हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और इतना नहीं, नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए 30-30 करोड़ रुपया दिया गया है। शायद ये पहली बार सरकार ने दिया। किसी जिले में संभावनाएं हो सकती हैं तो उनकी संभावनाओं के जिलों को भी 10 करोड़ दिया गया है। और इससे आज उन जिलों में आज निश्चित तौर से बैंक बन रहा है, पोस्ट ऑफिस बन रहा है, रोड्स बन रही, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि 2017 में आखिर जीएसटी कंपनसेशन सेस पान मसाला पे, गुटखा पे लगाया गया था। आज बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब मशीन पे, अरे साहब किस राज्य में नहीं पता है कि जो आज ये पान मसाला बनता था, अभी तक जो लगता था टैक्स या इन पे, वो केवल फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू पे लगता था। कि आपने कहा कि हम 5000 पाउच बना रहे हैं तो उस 5000 पाउच पे आपको टैक्स देना है। और जबकि आप बना रहे हैं 1 लाख पाउच और आप 10 गाड़ियां जा रही हैं बाहर ट्रक से, तो एक ट्रक पे आप केवल टैक्स दे रहे हैं। हमारे राज्य में इस समय जीएसटी के तमाम ऑफिसर इसमें सस्पेंड किए गए। ये तो मैं पहली बार कहूंगा कि आज देश में जो बड़े पैमाने पे आज गुटखा में, पान पराग में जो बहुत बड़े में टैक्स एविजन हो रहा है और जिसका लाभ देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मिलेगा, ये विधेयक इसलिए स्वागत योग्य कदम है कि ये पहली बार इस तरीके का एक चीज उठाया गया। क्योंकि अब आखिर आप क्यों नहीं, आप मुझे लगता है कि भाई अगर आपने मशीन 1 लाख पाउच की बनाने की बात कही तो आप कहें हम 1 लाख की पाउच की मशीन हमने लगाई है, लेकिन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 5000 पाउच। ये फेयर है साहब? इससे साफ है कि अगर 1 लाख पाउच रोज बनाने की है, क्योंकि 1 मिनट में 5000 पाउच बन जाता है, उसमें मसाला डाला, पैकिंग होती रहती है। कानपुर इसका बहुत बड़ा सेंटर है, यूपी में बहुत बड़ा सेंटर कानपुर है, लखनऊ है, अब इसका दिल्ली में और जगहों पे हो रहा है। तो आखिर अगर आज इतना बड़ा सुधार है तो इतना बड़ा सुधार है, अब यहाँ इस सदन में वरुण जी आप बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को आप बोल रहे हैं, लेकिन देश के सभी राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिसमें कांग्रेस के भी होंगे,
टीएमसी के भी होंगे, डीएमके के भी होंगे, वो सब इसको रियलाइज कर रहे थे। इसीलिए इस विधेयक पे जो सेस लगाने का है वो जीएसटी काउंसिल से परस्पर सर्वसम्मति के सहमति से है। यह निश्चित तौर से यह भी अपने आप में, मुझे तो नहीं लगता है कि जब एक तरफ आपके फाइनेंस मिनिस्टर अगर आपके राज्यों को बैठ करके और उस मतलब जीएसटी काउंसिल में इस बात पे एग्रीड है, सहमति है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आलोचना करने का तो कोई औचित्य है नहीं। क्योंकि आज जब निश्चित तौर से इस फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू की जगह पे जो अभी तक सेस को कैलकुलेट होता था वो ये था कि साहब टैक्स होगा 20% 35% होगा। लेकिन अब जब मार्च 26 में वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो आज ये हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी लागू होगा, अब ये केवल फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू पे नहीं लागू होगा, बजाय इसके जो पान मसाला को उत्पादित करने वाली मशीन है उस मशीन की कैपेसिटी पे है। तो अगर केवल विरोध के लिए विरोध करना है, देश की सुरक्षा के साथ अगर इसका एक एक पैसा देश की सुरक्षा, देश के नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा के, आज तो बिना इस सेस के भी कोई देश कल्पना कर सकता है कि अपने हर व्यक्ति को 5 लाख की स्वास्थ्य की गारंटी दे सकता है। और इस बार सरकार बनने के बाद अभी तक तो सोशियो इकोनॉमिक लिस्ट में जिसका नाम था उस परिवार को होता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कह दिया जो 70 वर्ष का व्यक्ति हो गया, चाहे किसी भी जात बिरादरी किसी इनकम का होगा, उसको आयुष्मान कार्ड से कवरअप किया जाएगा। ये अपने आप में कितनी बड़ी सुरक्षा प्रदान करने की बात होती है। तो आप ये तो अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो एक तरह से आप टैक्स एवेजन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, आप ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और अपने देश के रेवेन्यू को, लॉस ऑफ रेवेन्यू को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या अगर आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, आप एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में हैं या आप एक सांसद के रूप में हैं, तो क्या इस देश में जो राजस्व सरकार का होना चाहिए और सरकारें फेडरल स्ट्रक्चर में अलग नहीं होती? आखिर कल भी जो विधेयक पास हुआ है उसका फायदा केवल केंद्र को नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने साफ कहा है कि उसका पैसा यूनियन में जिस तरीके से केंद्र को आएगा उसके राज्य को भी मिलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से इस जो अभी तक पान मसाला पे इस पर कोई करता था टैक्स चोरी, शायद नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा इसके एम एंड ऑब्जेक्ट में आखिर जियो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात होती है। आज पूरी दुनिया जूझ रही है रसिया यूक्रेन की लड़ाई में। आप देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में। आखिर जहां लोग कहते थे कि भारत थर्ड वर्ल्ड का बनेगा बैटलफील्ड, आज आप दुनिया भारत के विकास की तेजी को देख रहा है, भारत के जीडीपी को देख रहा है, भारत के ग्रोथ रेट को देख रहा है, न कि अब भारत की युद्ध को कोई देख रहा है। आज देख रहे हैं लोग रसिया यूक्रेन की तरफ, आज इजराइल फिलिस्तीन की गाजा पट्टी की तरफ देख रहे हैं। तो आज जब ये देख रहे हैं तो भारत ही एक ऐसा देश है कि जिसने इस जियो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी में भी अपने भारत के हितों के साथ कोई समझौता करने का काम आदरणीय सभापति जी नहीं किया। हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते, लेकिन हमें रसिया से सस्ते दामों पे तेल मिल रहा था। भारत पहला देश है कि उसने अमेरिका के रिश्तों के बावजूद भी रूस से सस्ता तेल लेने का काम किया। और इसके कारण आप देख रहे हैं, इसके कारण जिस तरीके की स्थिति आप बनी है कि आज आप यकीन करिए कि अमेरिका ने क्यों टैरिफ लगाया हो, इसलिए कि हमने रूस से तेल लेना सस्ता शुरू किया और जिस तरह से हमारा कि 25% लगा, उसके बाद 50% लगा। तो मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी लोगों को लगता था कि हमारा यूएसए में जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है उस एक्सपोर्ट में गिरावट आई। उसके बावजूद भी आज अगर ओवरऑल देखें जीडीपी रेट, तो ये हमारे लिए निश्चित तौर से इस सदन में मैं जब खड़ा हूँ तो आज न केवल इस बात को मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरे देश के लिए आश्वस्त होने के लिए और संतोष का विषय है, गर्व का विषय है कि आज दुनिया के इस पूरे जियो पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी में भी जहां ये आईएमएफ की रिव्यू है, सुप्रिया जी मैं कहना चाहता हूं कि आज आईएमएफ ने कल क्या कहा था, आपने कुछ कहा, मैं भी कह रहा हूं कि इंडियाज इकोनॉमी हैज कंटिन्यूड टू परफॉर्म वेल, इट इज एन आईएमएफ रिपोर्ट।
आई थिंक सो इसको भी आप देख लीजिए। और दूसरी बात कि आज अगर जीडीपी का ग्रोथ देख लें, हम Q2 का अगर फाइनेंशियल ईयर का 25-26 का, मैं बहुत कई मेरे पास सब आंकड़े हैं लेकिन मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं एक क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, Q2 फाइनेंशियल ईयर 25-26 का इंडिया का क्या ग्रोथ रेट है, इस पर तो कोई आप असहमति व्यक्त नहीं कर सकते। भारत का ग्रोथ रेट 8.2% है। आज भारत का ग्रोथ रेट 8.2% है। यूएसए जिसकी इकोनॉमी, जिसके डॉलर की कहते हैं करेंसी पूरी दुनिया में सबसे ताकत, उसकी 3.8% है। रसिया 1.1% है। चाइना 5.2% है। तो आज इस सदन में कह सकते हैं कि हमारी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से जीडीपी करने वाला, इंडिया जो बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 8.2%। 25-26 में Q1 में हम 7.8% थे, वो 7.8% से 8.2 हुए। आईएमएफ के प्रोजेक्शन, आईएमएफ का भी जो प्रोजेक्शन है वो भी चाइना के 5.2% से ऊपर है। आईएमएफ का प्रोजेक्शन 6.6% है। और ये कंस्टेंट एक लगातार हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये देश के लिए अगर ये 26 मार्च से जब खत्म हो रहा है इसका टैक्स, तो निश्चित तौर से ये जीएसटी का ढांचा जो एक नया उपकर लेकर के आई है, ये जो पूरी दुनिया में एक आर्थिक झटका पड़ रहा है, उस झटकों से भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षा देगा। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से ये काम निश्चित तौर से शुरू किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आज मार्च 26 के बाद जो इस पर जीएसटी लगता था वो कंपनसेशन से समाप्त होने वाला है। और जबकि वर्तमान में स्वाभाविक है कि पान मसाला 28% जीएसटी प्लस 135% कंपनसेशन से लागू होना है। अब इसके हटने से कितना बड़ा एक रेवेन्यू लॉस होगा। और ये भी नहीं, मंत्री जी ने अभी स्पष्ट तौर से कहा कि किसी एसेंशियल कमोडिटीज पे हम नहीं लगा रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज पे पूरी दुनिया ने देखा, कल डिस्कस भी हुआ, मैं उसको बहुत दोहराना नहीं चाहता हूँ, 4 स्लैब से 2 स्लैब हुआ। और जिस तरीके से मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा कि जिस तरह से जीएसटी में कम हुआ और उससे मोटरसाइकिल हो, ऑटोमोबाइल हो, गाड़ी हो और आपका मोबाइल हो, टैबलेट हो, कपड़े हो, आप यकीन करिए हमारे यहाँ पे लोगों को मोटरसाइकिल 300 बिक गई एक दिन में, 800 बिक गई होंडा की और उसके इनफील्ड की, तो गाड़ियां नहीं मिल रही थी। तो स्वाभाविक है कि जहां दुनिया में क्रय शक्ति घट रही है, आज उस टैरिफ के बाद भी यूएसए की दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर भारत के सामानों की बिक्री। अरे अब घंटी बजा दी, हम फर्स्ट स्पीकर हैं मैम, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एकदम शुरुआती है अभी। और मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, उसको ध्यान से विपक्ष भी सुन रहा है, ध्यान से जगदम्बिका पाल जो कह रहे हैं उसको सुन रहा है, कोई उसको अपोज नहीं कर रहे हैं, वरुण जी भी उसको कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां हेल्थ की सुरक्षा के लिए, वहीं एक सबसे बड़ी बात है कि हम सरकार में हो या प्रतिपक्ष में हो, आप लोग जिम्मेदार प्रतिपक्ष हैं, ऐसा नहीं है। सौगत राय दादा बैठे हैं, प्रोफेसर हैं। आखिर जहां हम व्यक्ति की सुरक्षा, देश की सुरक्षा करेंगे, वहीं राजकोषीय स्थिरता भी तो होनी चाहिए। अगर हमारी इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और जैसा मैंने कहा जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पूरी दुनिया के सामने है, तो आज तो आप बधाई दीजिए नरेंद्र मोदी जी को कि इतनी दुनिया के क्राइसिस के बाद भी भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, राजकोषीय स्थिरता भी है। तो ये जिस तरीके से, इसलिए ये आवश्यक है कि इसको कैपेसिटी बेस किया जाए। और मुझे लगता है कि इससे फायदे क्या होंगे। अभी तक जैसे कह रहे हैं, विशेषता क्या थी कि बिखरी हुई छोटी छोटी इकाइयां, जिसकी कितना स्टाफ रहता है, तो एक एक छोटी छोटी इकाई जैसे कहा बिल्कुल खत्म नहीं होगी, जिसकी जितनी मशीन होगी, चाहे छोटी होगी, एमएसएमई में होगी, स्मॉल में होगी, माइक्रो में होगी, मीडियम में होगी, तो वो अपनी मशीन देगा कि हमने इतनी पाउच की मशीन लगा रखी है, इतना प्रोडक्शन होता है, तो उस पे उतने पे उसको सेस देना रहेगा। तो पहले तो निगरानी भी कठिन थी, और जब निगरानी कठिन होगी तो टैक्स एविजन भी होगा, चोरी भी होगा, और इससे उत्पादन भी छिपाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब मशीन है तो उसको निश्चित तौर से उसकी कैपेसिटी है। आपका जो कम कच्चा माल है, उच्च मूल्य वर्धन है, उससे आपको लाभ भी होगा, और जो चोरी की प्रवृत्ति है वो भी रुकेगी। और
ये भी नहीं कि जो पहले एक तरह से इलीगल गाड़ियां निकल जाती थी पाउच बना करके और उसको कहीं उस पर टैक्स नहीं मिलता था और निकल जाती थी, वो फिर आसान हो जाएगा कि भाई किसी भी प्रोडक्शन का ये फायदा होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप भी सहमत होंगी सभापति महोदया कि वैल्यू बेस के बजाय, फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू के बजाय अगर कैपेसिटी बेस सेस लगेगा, जो मशीन की क्षमता या उसकी जो पारदर्शिता है उससे निश्चित तौर से न केवल कोई सेस होगा बल्कि इससे लाभ प्रदेश देश की जनता को होगा। और इस विधेयक की मूल भावना तो आप देखिए कि मूल भावना क्या है सुप्रिया जी, मूल भावना है हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी, जिस पे रोज आप चिंतित रहती हो, रोज आप बात बोलती हो, सरकार उस पर लेती। तो आप उन बातों को जो समय समय पर आप उठाती हैं, उसके लिए अगर कोई ईयर मार्क सिस्टम, सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्व बना करके मैं खत्म कर रहा हूं, तो न कोई डाइवर्ट होगा न कोई लैप्स होगा, तो इसलिए सिस्टम भी अधिक पारदर्शी होगा, अपना रेवेन्यू भी स्टेबल रहेगा और पान मसाला उद्योग में टैक्स एविजन की भी कमी आएगी। बहुत सी बातें कहनी थी लेकिन आपने 2 बार घंटी बजा दिया। मैं समझता हूँ देश के हित में है, इसको सर्वसम्मत से पारित किया जाना चाहिए। मैं ये अपील करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्षा महोदय। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल 2025 के संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैडम अध्यक्ष जी, देश में जिस वस्तु पर आज उपकर लगाने की बात माननीय मंत्री जी ने कहा है, ये वही वस्तु है, चाहे पान मसाला हो, गुटखा हो, जिसके कारण देश के तमाम गरीब समाज के लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग आज भयंकर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी महामारी का रूप ले रही है। उन्होंने बिल प्रस्तुत करते समय स्वास्थ्य सुरक्षा को इंगित किया है। मुझे आशा है कि ये जो उपकर से जो भी धन इकट्ठा होगा वो निश्चित रूप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार, उसके नियंत्रण और उसकी रोकथाम पर खर्चा होगा। माननीय मंत्री जी ने स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे गंभीर विषय के साथ राष्ट्र सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसले को जोड़ करके ऐसा वातावरण बनाया है कि यदि कोई इसका विरोध करता है तो राष्ट्रद्रोही होगा। यदि इसकी आलोचना नहीं की जाएगी तो गांव के रहने वाले गरीब समाज के उन लोगों को जिनको इस उत्पादन के कारण उनके जीवन में परेशानियां आई, और एक आंकड़े के अनुसार केवल पूर्वांचल में प्रति वर्ष 2 लाख मरीज नए चिन्हित हो रहे हैं। लेकिन हम उपचार के नाम पर देखें तो केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भाभा सेंटर है, जिसकी क्षमता कितनी है, डायग्नोसिस सेंटर कितने हैं, करोड़ की आबादी पर शायद एक डायग्नोसिस सेंटर इस क्षेत्र में आता है कि कैंसर जैसी बीमारी, गंभीर बीमारियों के उपचार में उसका डायग्नोसिस कर सके। और आप जानती हैं कि यदि समय के साथ, यदि समय से पहले शुरुआती दौर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का
पता चल जाए तो निश्चित रूप से उसका इलाज संभव हो सकता है। माउथ कैंसर लगातार लोगों में बढ़ रहे हैं जो गुटखा और खैनी के द्वारा ज्यादातर वो लोगों के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सत्ता पक्ष के संसद साथी ने कहा कि 5 लाख का हम आयुष्मान कार्ड दे करके मानव जीवन के स्वास्थ्य के जीवन क्षेत्र में हम सुरक्षा दे रहे हैं। शायद माननीय सदस्य जी को पता होना चाहिए कि कैंसर के एक इंजेक्शन 2-2 लाख रुपए के आते हैं और उसको कवर अप करने के लिए यदि माननीय मंत्री जी इस उपकर के माध्यम से जो एकत्रित धन आता है यदि उसका उपयोग उस सेवा के क्षेत्र में करें तो निश्चित रूप से चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष के लोग हों आपके द्वारा इस विधेयक जो आपने प्रस्तुत किया है इसका पुरजोर हम लोग समर्थन कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे देश में एक साजिश चल रही है और रेवेन्यू इकट्ठा करने की नियत से जिस तरीके से पेय पदार्थों मादक पेय पदार्थों के ठेके हर वर्ष 20 से 30% बढ़ाए जाते हैं और वो ठेके गांव के गरीब समाज के अत्यंत निर्धन गांव जिसे हम अति पिछड़ी जाति के कहते हैं अनुसूचित जाति के वनवासी क्षेत्र के गांव के बीचों बीच में उस नीति के विरुद्ध में खोली जाती है और ये जानबूझ करके सरकार इसलिए करती है कि वहां उनके परिवार में अशांति हो, उनके बच्चे पढ़ न सके, उनके परिवार में सोचने समझने और आगे बढ़ने की क्षमता उनकी जो है विकसित न हो पाए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस नीति में भी परिवर्तन किया जाए और इतनी कठोर नीति कितनी जो है बनाई जाए और संविधान में संशोधन करके इतना कठोर कानून बनाया जाए कि जिसमें आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा हो कि जो लोग मिलावट करके मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और खिलवाड़ कर ही नहीं करते बल्कि देश के राजस्व में बड़ी भारी जो क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। हम जिस क्षेत्र से आते हैं उन क्षेत्रों में आज जो अति पिछड़ा समाज बिंद बिहार और हमारे आदिवासी वनवासी इन क्षेत्रों के जो गांव हैं इनके गांव के बीचों बीच में मादक पदार्थों के ठेके खुले हुए हैं। ये चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। एक चीज और देखेंगे कि जो जहां तक रेगुलेटरी डिस्पैरिटी है सेस की बात आपने किया है और आपने जो प्रस्तुत किया है हमें लगता है कि सिगरेट पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो कि उसका कम हो जाएगा और जो बीड़ी है उत्पादन का जो मशीनों की जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हम सेस लगाएंगे बीड़ी पे और टोबैको पे और जहां तक मेरी जानकारी है कि अतिरिक्त कर जीएसटी के ऊपर जो है कर लगता है, जो टैक्स लगता है उसके ऊपर जो उपकर लगता है उसे उपकर कहा जाता है। बीड़ी रोलिंग का काम तो यदि टैक्स लगाना ही है तो जीएसटी भी पूरे उत्पादन क्षमता के ऊपर अगर यदि जीएसटी लगाई जाए और उस पर उपकर लगाया जाए तो लोगों को टैक्स में चोरी करने का अवसर नहीं मिलेगा। जैसा कि मेरे एक साथी सांसद ने कहा कि लोग उत्पादन तो करते हैं लाखों पाउच पर डे लेकिन दिखाते हैं कि 5000 पाउच का उत्पादन हो रहा है। यदि मशीनों की
क्षमता पर जीएसटी लगाई जाए और उस जीएसटी पर उपकर लगाया जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे तत्व जो देश को चूना लगाते हैं, जो हमारे रेवेन्यू को चोरी करते हैं, जो मिलावट करते हैं, और उन मिलावट के कारण जो गरीब और इंसानों में भयंकर बीमारियां जो है आती हैं, और उन भयंकर बीमारी के कारण जो ग्रामीणों की मौत हो रही है, उस पर हम प्रतिबंधित उस पर कर सके और उसे रोक लगा सके। आप जानते हैं कि क्षेत्र में इन्हीं पेय पदार्थों और तमाम मादक पेय के कारण क्षेत्र के गरीबों में लूट, हत्या, बलात्कार और तमाम कानून व्यवस्था को खत्म करने की आदतें विकसित होती जा रही हैं। लोग चौराहे पर गुटखा खाते हैं, चौराहे को पर रह करके ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। बच्चियां जब स्कूल जाती हैं तो उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार लोग चौराहों पे करते हैं, यदि इसको सख्ती से लागू किया जाए तो निश्चित रूप से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि टैक्स में बढ़ोतरी करके इन पर नकेल लगाई जाए तो निश्चित रूप से रेवेन्यू का भी फायदा होगा, और जो टैक्स चोरी हो रही है उस पर भी नकेल कसा जाएगा। और इसको आपने देश की सुरक्षा से भी जोड़ा है, तो निश्चित रूप से देश की सीमाएं। कृपया संक्षिप्त करें। अरे आप कितना बोले, हम भी पहले ही बोल रहे हैं। पार्टी का भी फर्क है। तो जनादेश का और पार्टी का भी फर्क है। संख्या कितनी संख्या इधर, कितनी संख्या उधर। आप भी इधर कभी थे सर, हम भी मौका लगेगा तो उधर आएंगे। चलिए 2 धन्यवाद सर। सर, जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को देखा है, महसूस भी किया है। जिस तरीके से निरीह हमारे नागरिकों के ऊपर पहलगाम में जिस तरीके से लोगों की हत्या कर दी गई, और ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरीके से पड़ोसी देशों के ऊपर अटैक किया गया, ये सब एक देश के नागरिक होने के नाते हम सब भी गर्वान्वित होते हैं। यदि इसका पैसा देश की सुरक्षा में लगता है तो शायद कोई सदस्य ऐसा होगा जो इस उपकर का जो है विरोध करेगा, लेकिन ईमानदारी से अगर इस देश के टैक्स का पैसा जो निर्धारित काम है उस पर लगे तो किसी भी सदस्य को नहीं होगा। हमने देखा है कि नमामि गंगे के नाम पर गंगा की सफाई में हजारों करोड़ रुपए आवंटित होते हैं, लेकिन मात्र 15% जो है उसका खर्च होता है। देश में जो सफाई के नाम पर, शौचालय के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपया लगाए गए, उसमें मात्र जो है 8 से 10% तक जो है कि धरातल पे खर्च हुआ है, और बाकी पैसा खर्च होने की स्थिति में नहीं है। ये आंकड़े भी बता रहे हैं। इसलिए चूंकि हमारे माननीय अधिष्ठाता महोदय के बार बार घंटी बज रही है, इसलिए मैं उस पीठ का सम्मान करते हुए इस विधेयक का मैं इस नाते समर्थन करता हूं क्योंकि ये देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लगाया जाएगा, और इसका आश्वासन जरूर माननीय मंत्री जी सदन को देंगी, और इसका पैसा कहीं और इधर नहीं लगेगा, किसी और तरीके से खर्च नहीं होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद माननीय वीरेंद्र सिंह जी। प्रोफेसर सौगत राय। like paddy, cotton, pulses, banana and mango along with issues
Many people were asking me why I am speaking on such a boring bill, which has nothing in it. I am speaking because this gives me an opportunity of mentioning other things which I could have mentioned in the 0 hour. But these are related to the vagaries of the mood of the chairman on the seat. So I speak here. I noticed that the finance minister is smugly sitting to pass this bill. On a day when rupee has fallen to an all-time low. It has crossed 90 rupees a dollar. Now, the economy in such a terrible condition, the finance minister has not cared to come and make a statement in the House. It's very unfortunate. The finance minister is speaking about health security at a time when citizens in Delhi are demonstrating against air pollution. The finance minister has not announced any scheme to control air pollution. Sir, you may be knowing that they say that living one day in Delhi is equivalent to smoking 25 cigarettes. Now, no plan. This air pollution goes on unchecked in Delhi. The finance minister is trying to Hindyize herself. This law is called, she likes this, Vishwas se Vivad Tak. Health security से national security sales bill. ये क्या है? इंग्लिश है. ये ना हिंदी है ना अंग्रेजी है. ये पहले विश्वास से विवाद से विश्वास तक, अभी हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी तक. ये क्या भाषा है? फिनांस मिनिस्टर शायद हम लोग को एक्सप्लेन करेंगे. सर, ये टैक्स सेस इज ऑन pan masala. Yes, pan masala is a big business in India. We know that in Kanpur, some years back, they raided the premises of a pan masala manufacturer, Shikhar. 196 crores was discovered during that raid. Now we see that top film stars like Ajay Devgan, they advertise Bimal Ilaichi, and they used to advertise Shikhar also. So I do not know what disincentive is being given to this. Now, sir, now, if I may mention that this is a harsh law, I'll come to that later. This is according to, this is a demerit goods. Tobacco, pan masala, these are associated with serious public health risks. Pan masala causes oral cancer. Now the government is so desperate for funds that it is trying to raise revenue from demerit goods. Yesterday it did on tobacco, all forms of tobacco. Today it is doing on pan masala. It's so desperate for finances, for resources, that for the security of the country, you have to depend on a demerit good like pan masala. This is sad and quite ridiculous if you ask me. Sir, this difference in this cess is that it is not on production capacity, it's on the machine. It is on machines, that is not on actual production or supply. Am I right? You're twinkling your brows. I'm saying cess should be levied on production capacity and not on actual production or supply. That is, it will be levied on machines.
it will be a cess on the machine capacity of the thing. Now, why pan masala? They say that pan masala items under tariff 12106920 of the first schedule to Customs Tariff Act 1975. This industry is characterized by a high number of small and fragmented manufacturing units, frequent changes in machine configuration with high value addition, low raw material cost and ease of transport of finished goods. It's very light. You must have seen, sir, small packets of shikhar or pan parag, pan masala. What they do, they first bring the supari, then they grind it, and then they add a particular perfume which gives pan masala its distinctive flavor. So it is very cheap to manufacture, but the gains are enormous. Because you see that in rural areas, even in urban areas, people take 5-6 packets of pan masala and they keep it in their mouth for a long time, which may lead to oral cancer. So this is where the finance minister is trying to raise her revenue. Now, the government says that capacity-based levy would help curb evasion, ensure a level playing field, stabilize market pricing and strengthen revenue integrity. Pan masala is addictive and causes public health issues at mass scale, particularly for the poorer masses. People, among the poor people, they either take bidis or they take pan masala. So the whole question rises that whether by increasing cess, whether by increasing the price of the packet, though government says that price of pan masala will not be affected, only we will collect revenue from pan masala sources. So here is a case where this cess will be levied and collected from taxable persons who own, operate, manage or control the machines or processes used to manufacture specified goods directly or through any authorized arrangement. Sir, I went through the bill thoroughly, though it's quite boring. Main thing is government has been shouting over the house top that it wants to decriminalize offences in business. And they had a committee which took out many company law में जितना ये था imprisonment का policy था, that has been removed. Now this pan masala says this is नहीं डिक्रिमिनलाइज कहाँ हुआ? आप लोग कहते हैं कि आप डिक्रिमिनलाइज करेंगे for the ease of doing business. Dada, you address to the you are chair. imposing Should not prison respond what he sentences. says. आप निशिकांत जी की बात पे मत जाइए. आप अपनी बात कह दीजिए. Whenever a taxable person, either who has control of a machine, fails to pay the cess, fails to furnish returns, fraudulently obtains refund of source, obstructs or prevents any officer, then there will be a fine and imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine. ना मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप बिजनेस ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करेंगे और आप जेल भेजने का इंतजाम करते हैं. इसके बाद इनकम टैक्स में भी ये आ जाएगा कि आप बोलेंगे कि हम जेल भेजेंगे इनकम टैक्स नहीं देगा तो what is the policy of the government? You want to decriminalize financial offenses
or you want to criminalize them? That's the moot question that needs to be answered properly. The current government said Sir, up to 5 years for 5 crores. Sir, I would like to 2.5 crores and above, 3 years. And then first of all introduce annual for 100 lakh, 1 crore, index it will be in specific 1 year or whatever. tobacco products Plus, do not become cheaper over time. they have introduced Allocate a confiscation, power of confiscation, which is again tobacco related draconian. prevention Now this, the member who spoke from the Congress said that ultimately it will lead to a severe especially in Tamil Nadu. Most of the people living inspector nudge. Now we say that in income tax we will have faceless assessments. Income tax officer need not see the taxpayer. And now here the inspector, the officers under this, these are belonging to Central Board of Indirect Taxes and Customs. They will have power to inspect, they will have to give returns, and if returns are not given, then punishment. So, which way is the government going? I would like to that the finance minister to clarify. Because while I understand the desperate urge in the government to get more money, you need money. A new parliament building costs 20,000 crores. Prime Minister's Seva Tirth will cost hundreds of crores. Now for that, take money from pan masala, demerit goods, bad goods, and this is what you are doing. The government is thinking on two lines. On the one hand, you spend money like water. When there is no necessity from a new parliament building, you have built a new parliament building. When there is no necessity, Prime Minister was living in such a big house in Racecourse Road, and now you're building that. This parliament is under domain of honorable speaker. Sir? I think so. I think so. You are quite aware about the domain of the parliament. Parliament is absolutely. Why does the government need so much money? It means you are criticizing government the parliament needs money to for your honorable splurging. speaker. नहीं ये. Sir, you understand what splurging is? I can understand. ये Yes, कागज का हिस्सा नहीं money. होगा. आप विषय पे आइए. विषय पे आइए. तो हाँ तो हमने स्पेल कर दिया. हाँ. तो सर एक मिनट निशिकांत जी. I am totally. एक मिनट दादा. मैंने निशिकांत जी को समझ लिया कुछ. पॉइंट ऑफ ऑर्डर है. ये 352 है सर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर है. 352 है. कई एक लोगों का नाम इन्होंने ड्रैग किया है सर. ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं. इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोठी में रहते हैं उसका कोई सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो है सीपीडब्ल्यूडी ने देना मना कर दिया है, क्योंकि एक बिल्डिंग ऐसी हो गई है जिसमें सुरक्षा सबसे बड़ा जो है कारण हो गया है कि कोई सुरक्षित नहीं है. हम जितने कोठियों में रहते हैं लोग, दादा भी जिस कोठी में रहते हैं उसका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं है. तो प्रधानमंत्री जी के लिए या एमपीज के लिए या इस पार्लियामेंट के लिए यदि ये बन गया तो ये समय की मांग थी या सरकार ने गलत पैसा खर्चा कर दिया. और दूसरा, प्रधानमंत्री जी इस सदन के सदस्य हैं. यदि कोई भी बात उनके बारे में बोली जाएगी तो पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा. आपकी बात आ गई. सर आप ये पुरानी पार्लियामेंट की एक लाइफ टाइम तक मियाद था. अब आप सोचिए कम टू द सब्जेक्ट प्लीज एंड काइंडली कंक्लूड. पैसा खर्च करना प्रोफेसर साहब की प्रायोरिटी है कि मकान बनाना, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना, खर्चा ही खर्चा करना. ये और उसके लिए सिगरेट से उठाओ, बीड़ी से उठाओ, चेरूट से उठाओ, पान मसाला से उठाओ और उसके लिए कड़ा कड़ा कानून लाओ. ये दिस इज ए ड्रैकोनियन लॉ. You want to raise revenue, you make an arrangement whether, like income tax faceless assessment, you can make an easy assessment of the tax to be paid by the taxable person. But you are not doing that. You are rather raising money and say you must pay us money.
మాధ్యమం వల్ల అనేక అనర్థాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. From pan masala, otherwise we will send you to jail, otherwise we will send confiscate your machines, etc., etc. And then in pan masala side, you must have read this. You spoke about it. I could not follow all that you said. So Nirmala ji also spoke in Hindi, so I could not follow all that she said because we are Bengalis. We don't follow so much of Hindi. So problem remains. It is already on Parliament app. You can go through. Sir, क्या हुआ? You can go through line by line. It is already on Parliament website. Parliament page. हम तो सर बंगाली है, बंगाली रहेंगे. आप बंगाली हैं, लेकिन आप हिंदी को ऐसा नहीं कह सकते. A South Indian lady speak in Hindi. I have seen you. I have seen you. कि now you can. वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी. Speak in Hindi, I may speak in Tamil, I may speak in Telugu, I may speak in English. How does it matter to the Honorable MP? Because now, because of the way in which the speaker has made arrangement, he can get a translation in any language that he desires. And what is this saying? That she spoke in Hindi, therefore I can't understand. Available facility, technology is being used, he can understand it in any language he wants. Because he has not read the bill thoroughly, and because he wants to divert from the topic, he is bringing all these things, and I take objection, and it should be in the records. Saugat Roy ji, you are Mr. Saugat Roy ji, you are quite aware that translation facility is available. What Finance Minister has said, already the translation facility is available. Either any member can speak in any language, but immediately it will be translated. Yesterday I think so speaker has already said, आपने कल मेज भी बजाया, तो आप अपनी बात खत्म करिए. बात नहीं, आपको नहीं अलाउ किया. सौगत राय जी. सर, तो दिस होल प्रोसेस कृपया समाप्त करें. सर, ये बिल अभी हम कंक्लूड करते हैं. You have laid down an elaborate separate mechanism regarding realizing taxes, cess on pan masala. You first have a commissioner, then the commissioner allows you to appeal, then you go to the appellate commissioner, then you have even the power to go to High Court. They have the power to confiscate machines, they have the power to arrest. And strange, in the case of non-cognizable and bailable offence, the proper officer not below the rank of assistant commissioner shall, for the purpose of releasing an arrested person on bail or otherwise, have the same powers and be subject to the same provisions as an officer in charge of a police station. सेंट्रल एक्साइज के ऑफिसर को आईसी थाना के ऑफिसर इंचार्ज बना दिया गया. आई डोंट नो व्हाट लॉजिक देयर इज इन दिस लॉ, एंड कॉन्स्टेंटली इट इज मेंशन्ड अमित शाह लॉ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो उसको एप्लीकेशन किया जाएगा. इससे नहीं होता. हमारे ऐसे ही इवेशन देश में ज़्यादा है. इवेशन आप रियलाइज करें, लेकिन उसके लिए ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाएं. यू आर गिविंग ऑल पावर फ्रॉम असिस्टेंट कमिश्नर टू कमिश्नर. थैंक यू. टू रियलाइज सेस. थैंक यू. So श्रीमती टी सुमति, I think that this bill should be sent to a select committee of the parliament. श्रीमती टी सुमति look जी. into. श्रीमती टी सुमति. Thank you, sir. I rise here to oppose the Health Security, National Security Cess Bill 2025. At the very outset, sir, I would like to ask Madam Finance Minister a very simple yet a profound question. Why is the title of an English legislation framed as Health Security, sir, National Security? Why is this linguistic hybrid, sir? Why this attempt to inject a certain cultural or a linguistic flavor
into what should be a neutral statutory title. This is not mere pedantry, sir. As our Honorable Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin has rightly pointed out, language is not merely a tool for communication. It's a question of identity, dignity, and democratic participation. So a law passed by the Parliament must be accessible, neutral, and linguistically equitable. So I submit, sir, that the word say be replaced with for. Sir, imposing any cess or surcharge is like slitting the throat of federalism. Why I use that phrase, sir? Let me explain. The funds collected through cess and surcharge goes entirely to the union government and without any distribution to the states. The union government, sir, eyes rupees 6 lakh crore from cess and surcharge in the financial year 26 up to 10% over the financial year 25. All the states, most of the states, protest against the shrinking share of this divisible pool of tax revenues not reaching them. The Health Security, say National Security Cess Bill 2025 now seeks to levy a new cess on machines or process used in the manufacture of pan masala and other notified goods. Sir, I would like to ask this August House through you, sir, when the union government can concentrate on the reduction of the sale of these harmful products, also creating an awareness amidst its consumers to reduce the use of such consumer products which are harmful to health, also creating an awareness amidst them. Instead of doing that, imposing a cess on the manufacturing machines and the processes directly hits the small traders, especially the MSME. Also, it's neither acceptable on the general terms as well as on the ethical terms. I would like to explain why I use the word ethical. So the quantum of unused cess and the surcharge funds amount to 6 lakh crore rupees since 2019. That is not totally spent by the union government. While that is the scenario, why to bring a new bill, again a cess bill now, sir? That's my question. So this bill states that the cess is meant to augment the resources for meeting security expenditure on national security and for public health. In simple terms, the government says that it will use proceeds from cess on tobacco and pan masala to boost health and national security. Sir, this is really a thing to worry about. Let's remember the words of our Mahatma Gandhi, who said, means are as important as ends. So by which means you are collecting the cess and to which direction you are trying to divert the funds is a very important question. While the BJP professes that India is marching towards global leadership under the August leadership of our Prime Minister, Honorable Prime Minister, as Vishwaguru, based on the ideals of Dharma, isn't it very ironical to divert these funds, the cess, heavily laid on those manufacturing processes which are harmful for products? Isn't it really ironical, sir? Sir, let me come directly to the political heart of the bill. This government has been adopting a strategy for the past 10 years to convert taxation into cesses and surcharges because cesses do not go into the divisible pool and are not shared with the states. Sir, according to the 15th Finance Commission's report, let me make it clear here, the share of the cesses and surcharges has increased from 10.4% of gross tax revenue in 2011 to 12 to over 26% by 2024. This means states lose thousands of crores annually, and that is why I call it as a slitting on the throat of federalism, sir. Sir, our Dr. Annal B.R. Ambedkar warned us in the Constituent Assembly that federalism depends on the diffusion of power, not in its concentration in one center, but what's happening now, sir, it's a vice versa of it. Because this bill is another step in the systematic concentration of fiscal power, all concentrating only in the conglomeration of union government. So Tamil Nadu has
consistently demanded through every pre-budget memorandum that the union reduce its reliance on cesses. But instead of correcting its fiscal imbalance, this bill deepens it. So let me say, how does it do it? This bill imposes a lump sum cess on machines and manufacturing processes, especially those used for pan masala. Let me be very clear, sir. Pan masala and usage of it are harmful for health, very injurious for health. And states should take accountability in regulating that. There's no doubt about it. But the method chosen here through the bill is deeply flawed. And let me also say, why do I make that statement? Because, sir, there is a nuanced difference. The bill taxes machines for what they can produce, not what they actually produce. Even idle machines attract the same cess, and getting any reduction is complicated. This feels less like a tax, but more like an unnecessary burden. So I call it as cessification of governance, not justification of governance. I repeat, I call this as cessification of governance, not justification of governance, because this government's favorite economic formula has three components: headline plus chess plus no accountability. We saw this with Swachh Bharat cess, Krishi Kalyan cess, health and education cess, road and infrastructure cess, social welfare surcharge, and now this bill. So I repeat, this is cessification of governance, not justification. And even Madam Finance Minister in most of her speeches repeatedly has acknowledged that cess revenues have risen sharply, and I would like the House to make a note of it also, sir. And again, our Dr. Ambedkar has warned us that good intentions are of no value if the instruments are flawed. This bill is precisely that, good intentions strapped to a flawed instrument. Sir, the first casualty of this bill is the MSME unit. It hits MSMEs the hardest. Tamil Nadu has under 10 lakh MSMEs, many in food processing, packaging and allied sectors, and they will be the worst affected sectors if this bill come into existence. So a government should tax its people with the delicacy of an expert hairdresser, not with the roughness or the power of a butcher. This bill unfortunately opts for the butcher's knife, sir. So there are another few worrisome observations. Here is power without judicial control. In this particular bill, it contains search, seizure, arrest powers, machine sealing, confiscation, and an entire inspection regime without adequate judicial safeguards. That has been rightly pointed out by our senior colleague Dada, that it will become an Inspector Raj. So Tamil Nadu already has first-hand experience of how easily enforcement powers can be misused. We won't budge it, but it can be misused to intimidate small manufacturers. The bill hands sweeping discretionary powers to officers without sufficient checks, which is a matter of grave concern. So the bill says assesses for the health security and national security. These are national priorities, there is no doubt about it. But nowhere in the bill, not in a single line is there any mention of स्कूलों के आसपास में उनको पूर्णतया प्रतिबंधित करना चाहिए ताकि बच्चे उन दुकानों से दूर रह सकें utilization framework, spending formula, transparency mechanism, a commitment to share with the states. That is why we call this bill not to be actually brought into law immediately, and it has to be considered to be sent to the Select Committee. Sir, after the GST compensation ended in June 2022, states like Tamil Nadu have repeatedly sought predictable physical support, which has been denied. Let me remind the House, as per the CAG report, nearly 1.5 lakh crore श्लोक से शुरुआत करता हूँ। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ता द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञे। From the Madam Finance Minister, what are those circumstances? Who defines them? Where is the sunset clause? Where is the parliamentary control? This is a taxation by executive discretion, not by democratic debate. Even the British did not allow the executive to tax without parliamentary control after 1689. But here we are in 2025 giving the union government a blank check to levy and raise taxes. So I
I'm so proud, under the leadership of our Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, Tamil Nadu has been ranking high in all its health front. Tamil Nadu's infant mortality rate is 13, among the lowest in India. Institutional deliveries are 99%, far above the national average. Tamil Nadu's public health expenditure is higher as a share of GSTB than most states. All this was achieved by our Chief Minister, not from the central cesses. It was purely because of his decentralized planning, his Dravidian model government based on the social justice policies and strong state autonomy. So true national progress is possible only when the union respects the rights of the states and works with them as equals, not as their subordinates. Sir, one important criticism raised by Aravind Banagria, the chairman of the 16th Finance Commission, I would like to make a notice of that in this August House. He recently called the issue of the centre's increasing reliance on cesses and charges a complicated issue. Also, a conclave of finance minister in the context of the 16th Finance Commission have expressed concern over the growing imbalances in center-state fiscal relations. They plead the union governments to stop penalizing those states which perform well. A very important reminder to Madam Honorable Finance Minister is that in your own BJP-ruled Odisha, the government has demanded that the cess and surcharges be brought to divisible pool. It is totally against that in your own government ruling Odisha. So that states can get a share. Sir, I hope that the union government at least realize that when it is coming from their own quarters, it is a wake-up call. So only one minute. So a few questions. Why a cess and not a tax? Why no statutory rule for utilization? How much of the cess will actually reach health infrastructure? Why no state representation in monitoring? Why empower officers with near police powers without judicial oversight? Why tax machine capacity instead of actual production? How much revenue does the union expect to generate annually? How will this cess interact with GST regime principles? Sir, a few suggestions, sir, 2 minutes. Sir, you should make it mandate that at least 60% of cess. Just 1 Sir, minute. sir, 1 minute. Closing, sir. I'm closing, sir. Just Sir, closing. closing. 60% of cess proceeds be dealt to states with formula-based transparent allocations, replace lump sum capacity-based slabs with proportionate output-based taxation to protect MSMEs, introduce mandatory CAG auditor utilization reports to be tabled annually in Parliament, include a sunset clause requiring Parliament's approval in every 2 years. Sir, if the government accepts these amendments, Tamil Nadu is prepared to work constructively. Tamil Nadu has been suffering a lot, pleading the union government to release the finance for all the Samagra Shiksha Abhiyan, for Manrega, and the union government is turning a deaf ear to all the requests, which is again a slit on the throat of federalism. I would like to end with the quote by Thandai Periyar, a quote by Thandai Periyar. அதிகாரம் பொறுப்பில்லாமல் இருக்கக்கூடாது, அப்பொழுதுதான் அது ஆபத்தானதாக மாறுகின்றது. Power should never be untied from accountable responsibility. If it is done so, then that is the most dangerous thing that will happen on earth. If this is going to continue, the Tamil Nadu people will reply befittingly in the upcoming elections. Thank you, sir. Very good. श्री आलोक कुमार सुमन जी, धन्यवाद सभापति महोदय। किसी का 1 मिनट बैठ जाइए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आलोक जी 1 मिनट बैठ जाइए। आलोक जी बैठ जाइए। किस सेक्शन में? 343, 343 और 345 संविधान की धारा। तमिल लैंग्वेज का या बंगाली लैंग्वेज का हम सम्मान करते हैं। तमिल सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहते हैं। लेकिन जब हम पूरे सभी यहाँ संसद सदस्य हम सभी करें तमिल काशी संगमम भी होता है सर। और बंगाल से तो हम खुद ही निकले, पता चल गया कि बिहार क्यों बंगाल से अलग हुआ, स्वागत बाबू के बातचीत से लगा। लेकिन सर सी राजगोपालाचारी माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल हुए 1950 तक, जब तक कि राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति नहीं हो गए। सी राजगोपालाचारी इसी तमिलनाडु के आदमी ने किया। उन्होंने इस संविधान को बनाने में बड़ा योगदान दिया सर। वो ये कह रहा है कि लैंग्वेज 2 ही होगी कानून की, या तो देवनागरी हिंदी होगी या तो अंग्रेजी होगी। कोई दूसरा अधिकार ही केंद्र सरकार को नहीं दिया। तो ये बार बार इस तरह के लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना
गाली देना ये कहाँ से उचित है सर? और जो बातें उन्होंने कही है सुमति ने और स्वागत बाबू ने, दोनों को एक्सपंज करिए। दिखवा लेंगे। श्री आलोक कुमार सुमन जी, आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पर बोलने का मौका दिया। इस विधेयक में पब्लिक हेल्थ के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी की टारगेटेड यूटिलाइजेशन को सक्षम बनाने के लिए सेस लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में यह प्रपोज किया गया है कि कुछ स्पेसिफाइड सामग्री जैसा कि पान मसाला आदि तैयार करने वाली मशीन मैनुअली या हाइब्रिड प्रक्रिया पर सेस लगे, जिससे कि पब्लिक हेल्थ तथा नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती मिले। यह बिल राष्ट्र को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए स्वतंत्र, अस्थायी और टारगेटेड रेवेन्यू सोर्स तैयार करने की एक दूरदर्शी पहल है। यह राजस्व संग्रह ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण भी है। यह शेष उसी दिशा में एक व्यवहारिक कदम है। हेल्थ सिक्योरिटी ताकि जन स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, कैंसर निरोधक, गैर संचारी रोग और भविष्य के स्वास्थ्य खतरों से निपटने की क्षमता बढ़े। नेशनल सिक्योरिटी ताकि सीमाओं, रक्षा क्षमताओं और रणनीतिक अवसंरचना के लिए संसाधन सुनिश्चित करे। इससे से मिलने वाली राशि कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी और अनुमोदन के बाद हेल्थ एंड सिक्योरिटी पर खर्च होगी। महोदय, पान मसाला, तंबाकू जैसे मादक पदार्थों और एरेटेड ड्रिंक, महंगी कारें, नौकाओं और निजी विमानों जैसे लग्जरी उत्पादों पर 40% की निष्पक्षता के साथ राजस्व संतुलन सुनिश्चित करता है। वर्तमान विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी कंपनसेशन सेस हटाने के बाद टोबैको प्रोडक्ट्स और पान मसाला के प्राइसेज में गिरावट न हो। महोदय, विधेयक का सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 लेवी और कलेक्शन ऑफ सेस की बात करता है। इसे जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वह राज्यों के साथ साथ शेयर होगा। इस बिल पर मैं अपनी बात रखते हुए मैं एक निवेदन करता हूं कि बिहार जैसे राज्य को शेयर में इजाफा किया जाए। सेस से जो कलेक्शन होगा उससे पब्लिक हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ राज्य के लोगों को भी उत्थान होगा और मजबूती मिलेगी। महोदय, इस विधेयक का सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 में यह प्रावधान है कि टैक्स देने वाला आदमी डिक्लेरेशन भरेगा कि कितनी मशीन लगी है, कितना उत्पादन हो रहा है, मिनिमम रेटेड सामग्री क्या है, वेट ऑफ पैकिंग, नेचर ऑफ पैकिंग तथा टेक्निकल और ऑपरेशनल पार्टिकुलर्स की जानकारी देनी होगी ताकि सेस का कैलकुलेशन आसानी से हो सके। मेरा इस सेक्शन में ये कहना है कि इसके लिए मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन प्रोसीड्यूर सरल और सुगम बनाना चाहिए। महोदय, वर्तमान विधेयक का सेक्शन 10 पेमेंट ऑफ सेस और रिटर्न की बात करता है, लेकिन सेक्शन 4 के तहत सेस का कलेक्शन महीने के 7 तारीख तक दी गई है। मेरा एक सुझाव है इसमें कि यदि इसको 10 तारीख तक कर दी जाती है तो टैक्सेबल पर्सन को थोड़ी समय मिलेगी सेस जमा करने के लिए तथा सेस आसानी से जमा भी हो सकेगा। महोदय, जैसा कि सब हम लोग जानते हैं कि इस बिल में प्रोविज़न है कि सेस जीएसटी और बाकी टैक्स के बावजूद भी लगाया जा सकता है, जिसका आधार होगा मशीन कैपेसिटी, न कि एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट। मेरा कहना है कि सेस कलेक्शन का उद्देश्य टारगेटेड स्पेंडिंग पब्लिक हेल्थ नेशनल सिक्योरिटी पर होनी चाहिए। इससे सरकार को रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। सीन गुड्स यानी डिमेरिट्स गुड्स पर एक परमानेंट टैक्सेशन फ्रेमवर्क भी होगा। महोदय, देश में टोबैको प्रोडक्ट का गुप्त रूप से व्यापार होता है। इससे रेवेन्यू का लॉस का अनुमान लगाना आसान नहीं है। देश के वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में 104.38 करोड़ रुपए के लॉस के 61 केसेस सामने आए हैं, जिसमें गुटखा, चेविंग, टोबैको, सिगरेट, पान मसाला आदि शामिल थे। महोदय, इस विधेयक का सेक्शन 17 सेस पेमेंट में डिले होने पर इंटरेस्ट पेमेंट की बात करता है, जो कि 15% पर एनम है। यह ड्यू डेट के बाद से प्रभावी हो जाएगा। इसका उद्देश्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इसमें मेरा कहना है कि तंबाकू और पान मसाला पर
मुआवजा शेष तब तक जारी रहे जब तक केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय का केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ऋण चुकता का भुगतान नहीं हो सके। महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने 1,73,030 करोड़ रुपए राज्य के विकास के लिए रिलीज किए। बिहार राज्य के लिए टैक्स रिवोल्यूशन 17,403.36 करोड़ रुपए रिलीज किया गया। मैं सदन के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि सभी सेक्टर का बकाया राशि बिहार के लिए यथाशीघ्र रिलीज किया जाए ताकि और विकास का कार्य हो सके। महोदय, राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री डी प्रसाद राव जी। श्री डी प्रसाद राव। मिस्टर राव, डी प्रसाद राव। Thank you, Honorable Speaker, sir. I rise today to express my views on the Health Security National Security Cess Bill 2025, a landmark legislation introduced by our dynamic and visionary Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and our esteemed Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. At the outset, I wholeheartedly commend the Modi government for again placing public health, fiscal prudence and national security at the center of national policy making. The bill is not just a financial reform, it is a moral commitment to safeguard the health of our citizens and strengthen our nation's security architecture. For years, India has struggled with the devastating social and health impact of tobacco, pan masala, vodka and similar harmful products. The economic burden on our health system is enormous. The NDA government recognized this challenge early and has implemented several deterrent measures. Now the phase out of GST compensation says the government has taken a foresighted decision to impose the health security national security cess, ensuring continuity of revenue from sin goods, protection of public health, financial stability for national security infrastructure, and a strong deterrent against harmful consumption. This step reflects strong governance, long-term thinking, and the courage to take decisions that put nation above politics. Sir, the bill aligns seamlessly with the government's sustained commitment to public health. Over the last decade, the government's share in total health expenditure has risen from 29% in 2014 to 48% financial year 2022, a significant increase in public investment. So, the transformative initiatives such as Ayushman Bharat, PMJ, which covers nearly 55 crore individuals and has established around 1.7 lakh functional health and wellness centers, reflect the government's focus on universal and equitable health care. By securing dedicated funds through this bill, we further strengthen the foundation of a healthier and safer India. However, sir, despite these important strides, the nation continues to grapple with serious health challenges. Anemia remains widespread, affecting more than 2/3 of children and nearly 60% of adolescent girls, while 3 out of 4 women still have low dietary iron intake. Equally worrying, hospital data from 2020 to 23 shows that half of the heart attack patients in India are under the age of 40, pointing to sharp rise in early onset cardiovascular diseases. We are also witnessing a rapid increase in overweight and obesity among children and adults alike, signaling an emerging nationwide health crisis. Chronic non-communicable diseases, heart disease, diabetes, respiratory ailments, and cancer now account for nearly 2/3 of deaths in India, up from less than 40% in 1990. Sir, it is in this broader context, the cess-based funding has become even more crucial. So yes, sir, we must also recognize that health challenges vary significantly across states. Andhra Pradesh, for instance, has the second highest HIV burden in the country,
with 2.75 lakh cases. Nearly 59% of women in the state are anemic, communicable, maternal, neonatal, and nutritional diseases contribute over 25% of the state's total disease burden. These realities highlight the need for targeted, state-specific interventions backed by the adequate resources. So, apart from this, there are some concerns for this bill. Hope the Honorable Finance Minister will clarify on this or clarify to the House on this. So the major concerns are, because the cess proceeds are not shared with the states, there is opposition from some quarters. States or political parties may argue that such revenue centralization harms federal fiscal structure. And calculating cess based on machines and processes rather than output might be a complex and may increase compliance burden on small manufacturers or units. If the government uses the cess for broader national security pending, there might be a less direct transparency about how much goes to health versus security, which can raise accountability concerns. So with this, I support this bill and commend Finance Minister to have introduced this bill for the safety of the health and security of this country. Thank you very much. Shri Sanjay Deshmukh ji. नॅशनल सिक्युरिटी सेस बिल 2025च्या या महत्त्वपूर्ण बिलावरती बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल अध्यक्ष महोदय मी आपले धन्यवाद मानतो. या विषयावरती सभागृहात चर्चा करताना माझ्या मनात एकच प्रश्न वारंवार येतो, या देशातील नागरिकांचे आरोग्य वाचवायचे की सरकारला आपल्या तिजोरी भरायच्या आहेत. कारण या बिलात जे काही आहे त्यातून नागरिकांच्या आरोग्याबद्दल सरकारला खरंच चिंता आहे असं कुठंच दिसत नाही. उलट आरोग्याच्या नावाखाली पैसा उकळण्याचा प्रयत्न जास्त दिसत आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सर्वांना माहीत आहे, या देशात सर्वाधिक आरोग्य बिघडवणारा पदार्थ म्हणजे गुटखा. कॅन्सरसारखा भयंकर रोगाला सर्वाधिक कारणीभूत असलेला पदार्थ म्हणजे गुटखा. लाखो तरुणांच्या आयुष्य खेळणारा, कुटुंब उद्ध्वस्त करणारा, गरीब माणसाचं संपूर्ण जगणं उद्ध्वस्त करणारा पदार्थ म्हणजे गुटखा. आज ग्रामीण भागात, शहरी भागात, शाळा कॉलेजमध्ये, कामगार वर्गात तसेच महिला वर्गात देखील म्हणजे जवळपास प्रत्येक ठिकाणी हा गुटखा व्यसनाचा कर्करोगासारखा पसरलेला आहे. लोक आजारी पडत आहेत, त्यांच्या उपचारासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च होत आहेत. सरकारचा आरोग्य यंत्रणेवर मोठा भार येत आहे. हजारो कुटुंबाचा संसार उद्ध्वस्त होत आहे. तरी हे वास्तव सरकारला कळत नाही आहे. मी अध्यक्ष महोदय, मी ज्या भागाचं नेतृत्व करतो त्या यवतमाळ, वाशिमसह संपूर्ण विदर्भ भागात एक विषारी आणि प्राणघातक पदार्थ अत्यंत मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो, तो म्हणजे नागपुरी खर्रा. या भागात नागपुरी खर्रा इतका प्रसिद्ध आहे की प्रत्येक 10 लोकांपैकी 4 लोक हा पान मसाला नियमितपणे सेवन करतात. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. सर्वाधिक वेदना देणारी गोष्ट म्हणजे या व्यसनापासून कोणताही वयोगट वाचलेला नाही. लहान मुलापासून ते ज्येष्ठ नागरिकापर्यंत, महिलापासून ते तरुणापर्यंत जवळपास सर्वच वयोगटातील लोक याचा शौक बाळगतात. हा शौक नसून हे व्यसन आहे आणि हे व्यसन नव्हे तर विष आहे. या नागपुरी खर्रा आणि विविध पान मसाल्यामुळे माझ्या विदर्भात कॅन्सरचे प्रमाण एवढ्या वेगाने वाढत आहे की आज विदर्भ या देशातील तोंडाच्या कॅन्सरचा सर्वात मोठा हॉटस्पॉट बनला आहे. यवतमाळ, वाशिममध्ये लहान मुलांना देखील तोंडाचा कॅन्सर झाल्याचे अनेक भीषण उदाहरणे माझ्या समोर आलेली आहेत. निरागस मुलांच्या तोंडात हे विषरूपी पदार्थ जातात आणि काही वर्षांनी त्यांच्या आयुष्यात सर्वात भयंकर रोग होतो. एका आईने आपल्या लहान मुलाला अशा अवस्थेत पाहणे किती भयानक असते हे शब्दात सांगता येणार नाही. पण हे वास्तव्य आमच्या विदर्भात रोज घडत आहे. अध्यक्ष महोदय, या पान मसाला आणि खर्रा व्यसनामुळे आर्थिक नुकसान वेगळेच मोठे आहे. माझ्या मतदारसंघात सरासरी एक व्यक्ती दिवसाला 100 ते 150 रुपये या विषारी खर्ऱ्यासाठी खर्च करतो. गरीब कुटुंबातील पुरुष महिलाही रोजच्या मजुरीतून मिळणारा मोठा हिस्सा या घातक पदार्थावर खर्च करतात. घरात मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे नसतात, औषधासाठी पैसे नसतात, पण दिवसाला 150 रुपये या व्यसनावर जातात. हे केवळ आरोग्याचे नुकसान नाही, संपूर्ण घराच्या अर्थव्यवस्थेचे, संपूर्ण समाजाच्या उन्नतीचे नुकसान आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या सरकारला
खरोखरच हेल्थ सिक्युरिटी द्यायची असती तर सर्वप्रथम गुटखा देशभरात कायमस्वरूपी बंद केला असता. एवढं सोपं वास्तव सर्वांना दिसतं, पण सरकार मात्र या दिशेने पाऊल उचलायला तयार नाही. कारण गुटखा बंद झाला तर लोकांचे आरोग्य सुधरेल, पण सरकारला मिळणारा महसूल कमी होईल. म्हणून सरकारला गुटखा उद्योग बंद करायचा नाही, उलट त्याच्यावर उद्योगावर कर लावून पैसा उकळवायचा आहे. अध्यक्ष महोदय, आज या बिलाद्वारे सरकार सांगतं की आपण पान मसाला, गुटखा इत्यादीवर सेस लावणार आणि तो पैसा आरोग्यासाठी व राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी वापरणार. पण नागरिकांच्या आजारी करणारा गुटखा पूर्णपणे बंद करण्याची हिंमत सरकार का दाखवत नाही? म्हणजे एकीकडे नागरिकांना आजारी होऊ द्या, त्यांचा जीव धोक्यात येऊ द्या आणि दुसरीकडे त्यांच्या आजारातूनच पैसा कमवत राहा. हे कोणते शासन चालले आहे? यात हेल्थ सिक्युरिटी कुठे आहे? अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहीत आहे या देशात किती तरुणांना तोंडाचा कॅन्सर झाला, किती लोकांची शस्त्रक्रिया झाली, किती लोकांच्या घरात कमावणारा माणूस नाहीसा झाला. त्या प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी या गुटखा उद्योगावर आणि चालू ठेवणाऱ्या सरकारच्या धोरणावर आहे. जर सरकारने धाडस दाखवून गुटखा बंद केला असता तर आज लाखो कुटुंब सुखाने जगली असती, लाखो नागरिकांच्या आजारातून मुक्ती मिळाली असती. पण आजच्या या सरकारला नागरिकांच्या आयुष्यापेक्षा जास्त महत्त्व कर गोळा करण्याकडे आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. अध्यक्ष महोदय, या बिलाद्वारे कर वाढवून सरकार गुटखा उत्पादनाला आणखीन वैधतेचे कवच देते असं दिसत आहे. कर लावा, महसूल मिळवा, पण गुटखा उत्पादन मात्र सुरू ठेवा. हे सरकार नागरिकांच्या आरोग्याशी केलेले सर्वात मोठं धोरणात्मक पाप आहे. आरोग्याच्या नावावर उद्योगांना चालू ठेवून फक्त कर वसूल करणे म्हणजे नागरिकांच्या आयुष्याची थट्टा आहे. सरकार हेल्थ सिक्युरिटीचं नाटक करत आहे, पण वास्तवात गुटखा उद्योगाला संरक्षण देत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या सभागृहातून सांगू इच्छितो, एक मिनिट, या देशात आरोग्य सुधारायचं असेल तर कर वाढवून नाही, गुटखा बंद करूनच आरोग्य सुधरेल. गुटखा बंद झाला तरच तरुण पिढी वाचेल. गुटखा बंद झाला तरच देशातील कॅन्सरग्रस्तांची संख्या कमी होईल. गुटखा बंद झाला तरच आरोग्य व्यवस्थेतील भार कमी होईल आणि गुटखा बंद झाला तरच नागरिकांची खऱ्या अर्थाने हेल्थ सिक्युरिटी मिळेल. म्हणून या आरोग्याच्या नावावर कर लावण्याचा हा धोका थांबवला पाहिजे. सरकारने जर खरंच नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतली असती तर गुटखा बंदीचा निर्णय हा सर्वात पहिला आणि सर्वात प्रभावी निर्णय ठरला असता, पण सरकार तसे करत नाही. त्यामुळे मला असे सांगावे लागते की हे बिल आरोग्यासाठी नाही तर महसुलासाठी आहे आणि नागरिकांचे आरोग्य वाचवायचे असेल तर या देशातून पूर्णपणे गुटखा बंदी झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. श्रीमती सुप्रिया सुले. Sir, thank you very much. Sir, I want to speak on this today. Thank you for giving me the permission to speak on the Health and Security, National Security Cess Bill 2025, sir. Sir, I appreciate the reason of bringing the bill. I won't say I object to the bill. I would like to support the bill because I'm not taking away from the intention of the government. We had a very detailed discussion yesterday, and in her reply yesterday, she at length was very practical and a very pragmatic approach of the Honorable Finance Minister of the challenges of tobacco and what the position is today in the larger interest of society. But my first question to the Honorable Finance Minister is why in the form of cess? Just yesterday in a reply, sir, you were present there. She talked about taxation at length, and we have no objection to any of taxation. इससे सरकार चलेगी कैसे अगर जब tax नहीं collect होगा तो? And we are happy to pay tax on these demerit goods. But why in the form of cess specifically for this? And the other question I would seek I hope she indulges us in a clarification. My very learned friend who spoke extraordinarily well today is Sumati. She also asked the same question, is that if this cess ever has to be doubled, they don't need to bring it back to Parliament. We are not against it. We will support any such thing if you want to increase taxes on any good which is not good for society at large. We will support the government. GST अच्छा बिल आप लाए, हम आपके साथ खड़े रहे. ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हम आपके साथ खड़े रहे. आप देश के लिए जो भी अच्छा करेंगे, हम पूरी ताकत से हमारी राजनीति जो भी डिफरेंसेस है छोड़ के हम आपके साथ देश के हित के लिए खड़े रहेंगे. और ये बिल अगर देश के हित के लिए है तो मैं बड़ी विनम्रता से उनको पूछना चाहती हूँ कि सेस क्यों? और आपको अगर डबल करना हो ट्रिपल करिए, कोई दिक्कत नहीं है. बट पार्लियामेंट
में क्यों नहीं लाएंगे? हाउ कैन यू डू देन? व्हाट इज द वैल्यू एंड द सैंटिटी ऑफ दिस डेमोक्रेसी इफ टुमारो यू गोइंग टू डाउनसाइड पार्लियामेंट? हम चुन के क्यों आते हैं सर? अच्छी चर्चा आपने भी बड़े, आज आपका बड़ा लंबा भाषण हुआ, उसके भी मैं थोड़े आपको क्लैरिफिकेशन, आपका भी बहुत अच्छा सर भाषण हुआ है, हमेशा ही अच्छा होता है. 2-3 important questions I would like to ask her. That in the cess in the last 10 years, in the Honorable Prime Minister Modi regime, or era you can call it, the cesses have gone from 10% to 25%. I still remember, I miss Arun Jaitley ji. अरुण जी जब थे फाइनेंस मिनिस्टर, तब हमेशा उनके मुंह से एक अच्छा शब्द आता था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे कि सबको साथ लेके चलेंगे, हर राज्य को उसका हक देंगे, और नहीं होगा जो पिछड़ा होगा उसको आगे लाने के लिए जो कर सके सरकार करेगी. लेकिन आज 5-7 साल से मैं देख रही हूँ इस सरकार की नीयत थोड़ी सी पॉलिसी लेवल पे बोलिए, नीयत नहीं बोलना चाहिए, शायद पॉलिसी बोलना चाहिए, उसमें थोड़ा बदलाव आ गया है कि सेस पे ज़्यादा आप जा रहे हैं. तो हमारा ऑब्जेक्शन बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारा सबका ऑब्जेक्शन है कि सेस मत करिए, टैक्स करिए, हमारे साथ भी शेयर करिए, क्योंकि हर राज्य को पैसे की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ही की डबल इंजन सरकार है सब जगह. तो फिर दिक्कत क्या है? फिर सेस क्यों है? ज़्यादा तो आप डबल इंजन सरकार चलाते हैं देश में, तो फिर राज्यों को देने में दिक्कत क्या है? यही हमारी सबकी मांग है. सर, देर इज़ अनदर थिंग आई वॉन्ट टू आस्क फॉर अ शेयर क्लैरिफिकेशन. आई एम नॉट यील्डिंग सर, दैट आई वॉन्ट टू नो वॉट इट इज़ द स्प्लिट बिटवीन हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी. आप हेल्थ के दीजिए, अच्छी बात है, देश के आरोग्य के लिए आपकी सरकार कुछ कर रही है, हम उसका स्वागत करेंगे. और नेशनल सिक्योरिटी में तो ऑब्वियसली सरकार के साथ ही रहेगी ऑपोजिशन, जैसे मैंने पहले कहा ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ खड़े रहे हम. लेकिन ये स्प्लिट क्या होगा, इसके बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन सर आया नहीं है. तो अगर उनके रिप्लाई में ये कह सके तो अच्छी बात होगी. मैं पॉइंट्स रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन ये जो बिज़नेस है सर, ये एक हाई प्रॉफिट मार्जिन का बिज़नेस है, इसमें टैक्स इवेजन हो सकता है, मैं मानती हूँ, और सिग्निफिकेंट एडवर्स, ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, जिसके बारे में प्रोफेसर रॉय ने भी ये कहा. लेकिन मेरी बड़ी विनम्रता से सरकार को विनती है कि हर एक को जेल में डालने से प्रश्न हल नहीं होता. सर, हमने इनकम टैक्स है, इंसॉल्वेंसी है, सब में हम सब मिलके काम करते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि अगर आप आदमी को जेल में डालो, उससे क्या हल होगा? ये जो इंस्पेक्टर राज बढ़े जा रहा है, उससे वो हैरेसमेंट ही होगा. पता नहीं सच हो या झूठ हो, लेकिन अगर कोई बिजनेस कर रहा हो, मैं तो इस बिजनेस के खिलाफ हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि ये पान मसाला और गुटखा बैन ही हो इस देश से. पर ये चीज़ें हो नहीं सकती, मैं जानती हूँ कि हमने तो महाराष्ट्र में गुटखा को बैन किया, इतना ब्लैक में चलता है सर, मैं क्या बताऊँ आपको. कल मैं बोल चुकी हूँ उसके ऊपर, और किसी भी आज देश में किसी के राज्य में खिलाफ में नहीं बोल रही हूँ, न होम मिनिस्ट्री के किसी खिलाफ बोली, पर किसी के राज्य में आप जाइए सर, कॉलेज के पास जाइए, इतना अच्छा रूल पार्लियामेंट में बनाया कि पास में गुटखा या तंबाकू नहीं मिल सकती, लेकिन हर कॉलेज और स्कूल के पास में आजकल मिलता है सर. ये दुख की बात है, और ये हर राज्य में हो रहा है. मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, जो वास्तव है, हम सब के घर में बच्चे हैं, लेकिन इसमें हम बदलाव कैसे लाएंगे, इसके बारे में हम सब ने सर सोचना चाहिए. और ये सेस का सर, मैं सीएजी का रिपोर्ट कोट करूँगी सर, जो पेपर में आया है. मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं, मैं कल भी कह रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन ये सेंटर का एक रिपोर्ट है, सीएजी का रिपोर्ट है सर, जो पेपर में है. मैं टेबल भी कर सकती हूँ, नहीं तो कोई वहाँ से फिर निशिकांत जी नाराज़ हो जाएंगे कि ये वो आप भी थोड़े आज मेरे से नाराज़ हुए वो रिपोर्ट के लिए IMF के. लेकिन जो मैं पेपर में पढ़ती हूँ सर, थोड़ा पढ़ लेती हूँ, उसी से आपको बोलना चाहती हूँ कि जो हेल्थ सेस है और एजुकेशन सेस है, मैंने बहुत बार जब बजट पे भी बोली हूँ सर, बहुत बार मैंने इनसे पूछा है कि ये सेस कलेक्ट करते हैं आप, वो कलेक्शन, वो पैसा सचमुच वहाँ जाता है क्या? और सीएजी का रिपोर्ट कहता है, सर मैं विपक्ष में हूँ इसीलिए सिर्फ टिका नहीं कर रही हूँ, लेकिन सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि हेल्थ सेस, एजुकेशन सेस, इन्वेंटर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एंड मोनेटाइजेशन ऑफ नेशनल हाईवे फंड, ये सारा जो पैसा कलेक्ट हुआ है और जिसके लिए कलेक्ट हुआ है, उसमें पूरा नहीं खर्च किया हुआ है सर. तो ये सीएजी की रिपोर्ट है. तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से जवाब मांग रही हूँ कि उसका पक्का क्या हुआ, पैसा कहाँ गया? अगर सीएजी की रिपोर्ट कह रही है नहीं गया, तो पैसा गया कहाँ?
हम तो टैक्स भरते हैं सरकार पे पूरा विश्वास रख के, तो जिसके लिए आप ले रहे हैं उसके लिए आप खर्चा नहीं कर रहे। आज बच्चों के स्कूल की आपको तो पता है सर, आप तो किसी ज़मीन से एकदम जुड़े हुए नेता है, तो क्या है आपको पता है हालत आज हेल्थ केयर की भी। आज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल चले जाओ सर, इतना आयुष्मान भारत के बारे में आपने अच्छा बोला, अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में आज भी अगर आप जाओ तो जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, उसको वो दवाई भी बेचारा खरीद नहीं पा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, मैं नहीं कह रही हूँ सरकार कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अभी साइंस टेक्नोलॉजी कमेटी लेके हम लोग गए थे, विजिट किया है जी। जी ने वो हिम्मत दिखाई, और केवल हिम्मत ही नहीं दिखाई, क्षतिपूर्ति ओम शांति। लगा करके उन राज्यों को भी पूरा किया। प्रश्नकाल भी जानते हैं और काफ़ी वहाँ पे सजेशन दिया है। कोशिश हो रही है सर, मैं कह रही हूँ। और सर ये दूसरा एक इशू है जो फिर भी पेपर में है, मैं टेबल भी कर सकती हूँ वो पेपर, कि सेंटर हैज नॉट ट्रांसफर्ड 3.6 लाख सेक्शन, दिस इज व्हाट द सीएजी रिपोर्ट फॉर द ऑयल इंडस्ट्री। एक मैं उदाहरण में आपको से बोल रही हूँ सर, अगर ये ऑयल इंडस्ट्री के लिए अभी पैसा सबसे ज़्यादा हमें कहा जाता है सर, ऑयल इंडस्ट्री में ही जाता है, तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है उसके कारण। तो ऑयल इंडस्ट्री के लिए अगर 3.6 लाख करोड़, सर छोटा 2 मिनट ही सर, अगर हो रहा है तो क्यों नहीं वो पैसा गया? ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आरोप नहीं कर रही हूँ सरकार पे। 3.6 लाख करोड़ ऑयल इंडस्ट्री के बचा लेते, आप सोचिए सर क्या सरकार का होता। तो आप सिर्फ इस बारे में आप सोचा करिए सर। और 2-3 ये जो हेल्थ के लिए भी कर रहे हैं, आप सबको पता है डॉक्टर्स के शॉर्टेजेस है, आप भी बहुत सारा उस पर बोले कि एम्स हो रहे हैं, अच्छी बात है सर, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर एम्स बढ़ रहे हैं तो वहाँ टेक्निकल लोग हैं काम करने के लिए। तो आई विश दैट यू हैव टू रेज दिस कंसर्न सर, एंड 2 very short points I want to raise, that even you were talking about the economy, I'm very happy, देश का भला हो तो हम सबके लिए अच्छा है, but 2-3 very small points I want to ask this government just for seeking clarification. प्रोफेसर सौगता रॉय जी ने भी आज कहा कि आज 90 रुपए पे हम लोग पहुंच गए, बट 2 छोटे मुद्दे मैं सिर्फ देश के क्लैरिफिकेशंस के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जी को पूछ रही हूँ कि डेटा ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शोज दैट द नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट remained negative, standing to negative 2.4 billion in September, and portfolio flows that have been volatile. Foreign investors withdrew 23,885 crores in September, and 34,000 in August, and 17,000 in July. October briefly saw a net inflow of 14,000 crores, but selling resumed soon, and net flow of 3,765 crores of Indian equity. So sir, ये आप कह रहे हैं देश आगे जा रहा है, अच्छी बात है, आगे जाना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो वॉलेटाइल दुनिया में हो रहा है, आप जो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं आप प्रोटेक्टेड है, लेकिन डेटा इज नॉट शोइंग दैट. So if kindly the honorable finance minister would even clarify to us what is the real global scenario. Let's not only run after numbers. जो वास्तव में अच्छी हुक्का बीड़ी का उपयोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक है, और इसी प्रकार से किशोरों में भी ये बढ़ता जा रहा है, विद्यार्थियों में भी। Committee, if she gives us a clarification. Thank you, sir. श्री नरेश महास्के जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीड़ी उपयोग में कई लोग कहते थे सबसे पहले मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक ऐतिहासिक विधेयक हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं अपनी पार्टी शिवसेना, हमारे लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गट नेता श्री डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की ओर से इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को विशेष बधाई देता हूं। बधाई इसलिए क्योंकि इस बिल का शीर्षक है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी, जो सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हमारी सरकार की विचारधारा है। इसका अर्थ है एक स्वस्थ भारत, एक सुरक्षित भारत और एक विकसित भारत। नशा बेचने वालों का अब हिसाब होगा, सेहत और सरहद दोनों का किताब होगा। हमने वह दौर देखा है जब कोविड जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था।
उस समय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने न केवल वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दुनिया को जीवदान दिया, बल्कि अपने नागरिकों को भी सुरक्षित रखा। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह विकास तभी संभव है जब हमारी आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत हो। मुझे गर्व है हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत की आंतरिक सुरक्षा आज अभेद्य किले जैसी है और उनके प्रयासों से अनुच्छेद 370 का खात्मा करके हमने कश्मीर को भारत का अंग बनाया। 2019 से पहले दौर के मुकाबले आज कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना शून्य हो गई है। महोदय, जब भी सरकार देश के विकास के लिए कोई सेस लाती है तो विपक्ष के साथियों के पेट में दर्द शुरू होता है। ये पूछते हैं सेस का पैसा कहाँ जाता है। ये सेस वही सजा है जो वक्त ने लिखी। अब देश की एक एक सांस सुरक्षित होंगी। मैं आज इनके आंखों से झूठ का पर्दा हटाना चाहता हूँ। जब आप अपने घर से निकलते हैं और चमचमाते हुए वर्ल्ड क्लास हाईवेज देखते हैं, जब आप वंदे भारत ट्रेन देखते हैं, जब आप समुद्र पर बने अटल सेतु और मेट्रो देखते हैं, तो याद रखिए यह उसी सेस का पैसा है जो जनता की सुविधा के लिए खर्च हो रहा है। इनको कश्मीर की डल झील तो दिखती है, लेकिन वहां जाने के लिए जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज बना है वह नहीं दिखता। आज कश्मीर में ट्रेन दौड़ रही है। तमिलनाडु में 2000 मेगावाट का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो देश को ऊर्जा दे रहा है वह इसी फंड से तैयार हो रहा है। विपक्ष को लगता है जनता को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। पिछले 5 वर्षों से 2020 से 2021 से सरकार ने 19.4 लाख करोड़ का सेस इकट्ठा किया है। इसमें 31% राज्यों को जीएसटी नुकसान की भरपाई के लिए दिया गया। 30% पैसा सीधे सड़क और बुनियादी ढांचे पर खर्चा हुआ। 16% पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगा, जिससे गरीब का बच्चा पढ़ रहा है और मुफ्त इलाज कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 4.18 लाख करोड़ का सेस कलेक्शन का लक्ष्य रखा है। पिछले साल से 8.19% ज्यादा है। ये पैसा किसी नेता के तिजोरी में नहीं बल्कि भारत के निर्माण में जाएगा। इंडिया अलायंस ने तो सत्ते में रहते हुए हेल्थ और सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ अपनी जेबें भरी। जब देश की सुरक्षा की बात थी तो बोफर्स और अगस्ता वेस्टलैंड जैसा घोटाला किया। जब महामारी आई तो महाराष्ट्र में इनके अगाड़ी सरकार ने कोविड बॉडी बैग स्कैम और खिचड़ी स्कैम किया। शर्त आनी चाहिए जिन्होंने लाशों के कफन और गरीबों को खिचड़ियों में भी पैसा कमाने की योजना बनाई। इन्होंने वोट बैंक के लिए पोटा जैसा कानून हटाकर देश के सुरक्षा से खिलवाड़ किया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार से परिवारवाद तक। ये टैक्स जनता से लेते थे, लेकिन उसे अपने निजी विकास और फॉरेन ट्रिप पर खर्च करते थे। यही कारण है हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार ने इनका वोट चोरी और संविधान खतरे के झूठे प्रचार पर अपनी वोट की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जनता ने इन्हें आईना दिखाया। जिस रफ्तार से ये जा रहे वह दिन दूर नहीं, अब ये तो क्या राज्य की पार्टी बनकर रह जाएगी। आप सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी से सिंगल डिजिट एमपी पार्टी बन जाएंगे। महोदय, अब इस बिल पर तकनीकी पहलू पर मैं आता हूँ। यह बिल पान मसाला और तंबाकू उत्पादनों पर सेस लगाने का है, लेकिन इसमें एक क्रांतिकारी बदलाव है। पहले टैक्स उत्पादन प्रोडक्शन पर लगता था, जिससे चोरी करना आसान था। फैक्ट्री मालिक दिखाते कम थे और बनाते ज्यादा थे, लेकिन इस बिल के तहत अब सेस मशीनों की क्षमता पर मशीन कैपेसिटी पर लगेगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित है, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला तो ये बिना बताए मशीन लगाई तो उस पर, मैडम मैं अकेला स्पीकर हूँ, तो 10,000 या चोरी किए गए सेस के बराबर जो भी ज्यादा होगा वो जुर्माना लगेगा। महोदय, इस बिल ने
सरकार ने भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। ये बिल केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि विशेष परिस्थितियों में वह इस सेस को दोगुना तक बढ़ा सकती है। हर निर्माता को पंजीकरण करना होगा, मासिक रिटर्न भरना होगा। बिल में कठोर ऑडिट और असेसमेंट तंत्र बनाया गया है। यदि कोई धोखाधड़ी, कर चोरी या रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करता है तो उसके लिए जेल की सजा का प्रावधान है। अधिकारियों की छापेमारी, जब्ती और माल या मशीनों को कुर्क करने के साथ साथ गिरफ्तारी के भी पूरे अधिकार दिए गए हैं। बिल के अनुसार यदि कोई मशीन 1 मिनट में 500 पाउच या डिब्बे बनाती है तो उस पर सेस इस प्रकार का होगा। यदि पाउच 2.5 ग्राम तक हो तो 1.01 करोड़ रुपए का सेस लगेगा। यदि पाउच 2.5 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में है तो 3.64 करोड़ रुपए का सेस लगेगा। यदि पाउच 10 ग्राम से अधिक है तो 8.49 करोड़ रुपए का भारी भरकम सेस लगेगा। इस सेस से जो पैसा आएगा वो भारत की संचित निधि में जमा होगा और संसद की मंजूरी के बाद इसका उपयोग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य की योजनाओं के लिए किया जाएगा। ये पैसा देश को मजबूत करेगा। महोदय, ये बिल केवल राजस्व का नहीं बल्कि इंसानियत का भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता है। हर साल हमारे देश में 13.5 लाख लोग तंबाकू के कारण मर जाते हैं और यह सच है। भारत में हर घंटे 5 लोग केवल मुंह के कैंसर से मर जाते हैं। जब पान मसाला और गुटखा महंगा होगा तो उसका सेवन कम होगा और इस सेस से जो पैसा आएगा वो उसमें से एम्स बनेगा, मेडिकल कॉलेज खोलने में और हमारे आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के इलाज में खर्चा होगा। आज देश में 23 एम्स और 2045 मेडिकल कॉलेजेस है। MBBS के सीटें 51,000 से बढ़ के 1.18 लाख हो गई है। ये पैसा इन्हीं भावी डॉक्टरों को तैयार करने में लगेगा जो आजकल हमारे और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। जो जहर बेचते रहे और हम चुप रहे, अब हालात कह रहे हैं सख्त कदम उठाए। सेस लगेगा तो नशे की ताकत टूटेगी और कौम की सेहत फिर से खिल उठेगी। अंत में महोदय, मैं कहना चाहता हूँ ये बिल प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। हवाओं का रुख मोड़ देने का इरादा किया है। देश की सुरक्षा का हमने वादा किया है। तुम ढूंढते रहो कमियां अपने पुराने चश्मे से। हमने इस देश का विकास उम्मीदों से भी ज्यादा किया है, उम्मीदों से भी ज्यादा किया। श्रीमती प्रभा मल्लिकार्जुन। यह कानून किसानों पर बोझ नहीं डालता। Honorable Madam, I rise to speak on the Health Security say National Security Cess Bill 2025, not with statistics alone, but with the lived reality of Indian families. A mother in rural India still walks miles under the scorching sun of a simple vaccine. A daily wage worker still falls into debt for a hospital bed. Health is not an accounting entry, it is human dignity. Speaker Madam, healthcare in India is fundamentally delivered by the states, the PHCs, the CHCs, the district hospitals, emergency care. Federal balance is not decorative, it is engine of our healthcare system. And no national security structure can stand on a weakened foundation of fiscal federalism. This bill proposes a new cess on machines and processes used to manufacture pan masala and tobacco products. The intent may appear noble, but our duty as people's representative is to examine its very architecture. First, the cess is outside the divisible pool. States who run almost the entire public health machinery will receive nothing. Past cesses have remained unutilized, untransferred. Without a non-lapsable fund, independent audits, mandatory reporting, this bill risks becoming yet another opaque revenue system. Although the finance minister did mention that this cess will be divided with states, but it is nowhere mentioned in the bill. Madam, this is not an exception, but has become a norm. Cesses now form around 14.8% of union taxes, which increased from 9.5%.
rupees 94,036 crore from the education cess, rupees 3.69 lakh crore from various other cesses has never been transferred to the designated funds, exposing systemic opacity and eroding federal trust. Additionally, the bill merges two important objectives, health and national security, into a single cess. This dilutes clarity, increases the risk of diversion, and makes auditing across two priority sectors very difficult. Instead of strengthening cooperative federalism, this bill creates a parallel stream outside the GST framework, exactly what the 14th and 15th Finance Commissions warned against when they urged raising states' share above 41%. Yet we see another levy that bypasses states entirely. Speaker Madam, let us confront the public health burden this cess claims to address. As per the National Academy of Medical Sciences 2025, India records around 130,000 new oral cancer cases every year, and tragically over 75,000 annual edits, which is among the highest in the world. A 2023 national study shows that patient spends on an average rupees 1 lakh out of pocket for oral cancer treatment, and 96% of families experience catastrophic health expenditure, meaning the illness destroys their financial stability. This is a real economic burden which India is facing. Therefore, if we levy a cess in the name of health security, let the bill clearly require that every rupee collected must be ring-fenced for cancer screening, early detection, NCD management, palliative care, and strengthening the state healthcare systems. Not a paisa should disappear into opaque accounts, like it's been happening. Second, the bill imposes heavy compliance burdens on small and medium manufacturers, liabilities up to rupees 25 lakh per month, and grants sweeping powers of search, seizure, and arrest. Regulation must not become intimidation. We must also acknowledge another reality. The tobacco ecosystem employs nearly 36 million people, farmers, beedi rollers, small manufacturers, transporters, packers, and this reform cannot be built by pushing the poorest to the edge. Therefore, Madam, I propose three constructive amendments. First, a turnover-based exemption threshold so that small and medium manufacturing units are not crippled by this cess and shielded from crushing compliance. Second, a dedicated BD workers' livelihood transition and welfare fund offering skilling, microcredit, health protection, and pathways to alternative livelihoods. Third, a statutory requirement that a fixed percentage of the cess be transferred to the states to uphold fiscal federalism and equip the states to handle tobacco-related disease burdens. Speaker Madam, let us situate this in India's broader health context. India still spends just 1.9% of GDP on health, which is far below even our own national health policy target of 2.5%. Supplementary grants every year show chronic under-budgeting. If health is a priority, it must appear in the union budget and not in the last-minute cesses. We have around 31,882 PHCs at the grassroots, but many still lack doctors, diagnostics, 24/7 services. The ruling party mentions dash number of aims with lot of pride, but in reality, we all know these aims are without specialists, mandatory health services, and long appointment waiting lists. Quantity without quality cannot deliver health security. A PHC without a doctor is a building. A CHC without diagnostics is just a signboard. This bill assumes higher taxation will curb addiction, but addiction cannot be fought with taxation alone. We need awareness campaigns, counseling, cessation clinics, and behavioral support. A cess cannot rebuild lives. A roadmap will definitely
certainly do, ma'am. Speaker Madam, India needs a genuine alternative, raise health expenditure to at least 3% of GDP in the union budget through transparent budgeting. Treat states as equal partners in health planning and implementation. Strengthen PHCs, CHCs, district hospital, and even the pride of our nation, AIIMS. Focus on quality services, not just numbers. Publish annual health security accountability statements. Launch a national cessation support mission for addiction treatment and behavioral change. Speaker Madam, this bill collects revenue from the people but withholds trust from the states, and without trust, no health system can endure. I would like to quote a line from Sri Rabindranath Tagore's work. Faith is a bird that feels the light and sings while the dawn is still dark. Let us not darken that faith with opacity. Let us build a system where every rupee is accounted for, every state empowered, every worker protected, and every citizen secure in health and thereby in national security. Lastly, Madam Finance Minister, I wish you keep in mind the health of economy, which is in dire straits as we speak. You propose to generate revenue for defense expenditure, which is becoming costlier because of rupee, which is in free fall. Thank you, Jai Hind. श्रीमती भारती पारधी। बोलते हमारे उत्तर प्रदेश सूर्ती बना रहे थे तो उन्होंने कहा भाई साहब सूर्ती आपने बड़ी अच्छी बनाई है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे धन्यवाद सभापति महोदया। इस सदन में आज हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पर चर्चा का अवसर प्राप्त होकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की कुशल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करती हूँ। सभापति महोदय, यह विधेयक सिर्फ एक वित्तीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। देश की जनता की सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा और हमारी राष्ट्रीय शक्ति को सुदृढ़ करने की जो सोच इस बिल के मूल में है, वह वास्तव में न्यू इंडिया की प्रगतिशील और संवेदनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक है। सभापति महोदय, इस बिल के तहत पान मसाला व अन्य अधिसूचित उत्पादकों पर सेस लगाया जाएगा, जिसकी आय को सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय किया जाएगा। यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उद्योग उच्च लाभ अर्जित तो करते हैं, जबकि समाज में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ाते हैं। ऐसे में इनसे एक उचित योगदान लेकर राष्ट्र हित में उपयोग करना बिल्कुल उचित और समयानुकूल है। सभापति महोदय, बिल में मशीन आधारित उत्पादकों पर सेस मशीन की रेडेड स्पीड प्रति पैकेट भार के आधार पर निश्चित किया गया है। यह व्यवस्था उत्पादन क्षमता के अनुसार न्यायसंगत, पारदर्शी और तकनीकी रूप से अत्यंत वैज्ञानिक है। वहीं पूर्णतः मैनुअल उत्पादन पर 11 लाख रुपए प्रति माह का स्थिर सेस छोटे उत्पादकों पर अत्यधिक बोझ न डालने का उदाहरण है। यह सरकार को संतुलित और संवेदनशील नीति को दर्शाता है। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त सेस भुगतान में अनियमितता होने पर कड़े दंड, रुचि सिद्ध ऑडिट और 3 स्तरीय अपील प्रक्रिया हमारे कर प्रशासन को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाएगी। धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण देने, 1 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स चोरी जैसी गंभीर अपराधों पर कठोर दंड देना, कारावास की व्यवस्था सेक्टर को अनुशासित और जवाबदेही बनाने के लिए आवश्यक है। मैं सरकार के इस दूरदर्शी सोच की प्रशंसा करती हूँ। यदि सार्वजनिक हित में आवश्यकता पड़ी तो सेस की दरों में 2 गुना तक वृद्धि करने का भी प्रस्ताव रखा गया है, ताकि राष्ट्र की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता प्रभावित न हो। सभापति महोदय, प्रस्तुत विधेयक में कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। पहला, बिल में एक प्रावधान हो कि सभी मशीनें डिजिटल प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम DMMS से जुड़ी हो, ताकि उत्पादन डेटा स्वतः ही कर विभाग तक पहुंच जाए और सेस की गणना अधिक सटीक और पारदर्शी हो। दूसरा, बिल में यह स्पष्ट किया जाए कि मशीन की अधिक रेडेड स्पीड की सत्यापन एक थर्ड पार्टी तकनीकी एजेंसी करेगी, ताकि कोई निर्माता मशीन क्षमता को कम दिखाकर सेस चोरी न कर सके। अतः मैं पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक, व्यवहारिक और राष्ट्र सुदृढ़ीकरण वाले विधेयक के लिए हृदय से बधाई देती हूं और इसका संपूर्ण समर्थन करती हूं। यह बिल न केवल आर्थिक
रूप से बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के द्विस्तरीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय मैं निर्मला सीतारमण जी का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बिल को पेश करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तंबाकू का सबसे राजीव राय गरीब परिवारों पर पड़ता है, चाहे वो बीमारी का बोझ देने के लिए इस महत्वपूर्ण बिल पर का बोझ हो या चिकित्सा मैडम का बोझ हो। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं गुटखा सेवन के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि नशे की कोई भी चीज मन शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाती है, इंसान को सोचने समझने की शक्ति को कम करती है और उसकी अंतरात्मा को भी कमजोर कर देती है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ और शायद यही वजह है कि मैंने भी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में आज तक शराब, सिगरेट, पान, गुटखा का सेवन नहीं किया। इसे थोड़ी जोर से बोल सकता हूँ कि आगे वाली लाइन क्या है। ये सही है, लेकिन इसके साथ एक और भी सच है कि लगभग 4.5 लाख करोड़ लोग इसी उद्योग से कहीं न कहीं, कोई छोटे व्यापारी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला है, कोई पैकेजिंग है, कोई किसान है, जुड़े हुए हैं। तो जब हम इस तरह का कोई कानून बनाते हैं तो ये भी देखने की जरूरत है कि इसका असर उन करोड़ों परिवारों पर न पड़े। मैडम, सेस किसी समस्या का समाधान नहीं है और सेस को स्वास्थ्य से जोड़ना, सेस को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ना, तो हमारी आंतरिक सुरक्षा गुटखे के सेस से अगर डिपेंड हो जाएगी तो भगवान ही मालिक है। हमारे इनकम टैक्स से 4% हेल्थ और एजुकेशन का तो लगता है, तो फिर ये सेस क्यों? और सेस में ये भी स्पष्ट नहीं है कितना हेल्थ में जाएगा, कितना आंतरिक सुरक्षा में जाएगा। कैग की रिपोर्ट बोलती है, समाजवादी पार्टी है विपक्ष की नहीं, कि 3,70,000 करोड़ रुपए सेस के अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए। पिछले 6 सालों में 48,000 करोड़ रुपए कैग के अनुसार माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मद में ट्रांसफर नहीं हुए हैं। 37,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के लिए जो ट्रांसफर करना था वो ट्रांसफर नहीं हुए हैं। आप जो अभी तक पैसा इकट्ठा किया है उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। और ये सेस पर तो गुटखा पर तो बहुत सारे राज्यों में बैन लग चुका है, वर्ल्ड के कई देशों में बैन लग चुका है। हमारे यूपी बिहार में चलता है, गरीब परिवार भी जुड़े हुए हैं। और अगर आप बड़ी ईमानदारी से स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहते हैं तो मैडम मैं आपसे निवेदन करूंगा, बोलने से पहले हमारे पूर्वांचल के ही माननीय सांसद जी चेयर पर थे, पूर्वांचल की मंत्री जी भी बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि जो बोलने जाऊंगा उन बातों से वो भी सहमत होंगी, लेकिन शायद वो अपने अंतरात्मा को बोझ तले दबा नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते, आईना देख नहीं सकते, इसलिए उठ के चले गए। किसी ने कहा है कि जाने क्यों जो बड़े अहम होते हैं वो बड़े बेरहम होते हैं। वो बड़ी बेरहमी से उठ के चले गए। रहते तो हाँ में हाँ बोलना पड़ता। स्वास्थ्य का हाल ये है कि पूर्वांचल के खास तौर से जिस हम इलाके से आते हैं, अब स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड मैं कई बार बोल चुका, जिन परिवारों में 6 लोग से कम है उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है। 5 लाख रुपया तक उसका लिमिट है। जिस परिवार को में गंभीर बीमारियां हो जाए, उदाहरण के लिए कैंसर, मैंने स्वास्थ्य पिछले बजट में भी बोला था कि कैंसर के मरीज खास तौर से, और हमारे यहाँ जो आर्सेनिक वाटर है उसके वजह से जो मरीज बंद रहे, कैंसर जो बढ़ रही है, पूर्वांचल में जाइए, हमारे यहाँ का छोड़ दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के बनारस में जाइए, बीएचयू के सामने और टाटा के सामने सड़कों पर कैंसर के मरीज पड़े होंगे। मैंने अपने बाप को खोया है मैडम, उनको गले का कैंसर हो गया था, उनको लेकर बनारस के अस्पतालों में गया, बेंगलोर तक के अस्पतालों में गया, 1-1 लाख रुपए का इंजेक्शन विदेश से मंगा के लगाना पड़ता था। तो जिन परिवारों में कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है उनकी सुरक्षा का तो जो स्वास्थ्य सुरक्षा का पैसा ही आप नहीं दे रहे हैं, इसका जो पहले का बकाया है, तो उनके बारे में चिंता कौन करेगा? अगर स्वास्थ्य के प्रति मैडम आप निश्चित रूप से चिंतित है तो जो हमारे जैसे प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य माफिया काम कर रहा है, जहाँ कब सिर्फ पिलाकर बच्चों को मार दिया जा रहा है, 1 साल तक वो महिला भटकती रही, FIR दर्ज नहीं हुआ, ऐसे विषयों पर कौन सोचेगा? खाली टैक्स लेने के लिए अगर आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप अस्पतालों में चले जाइए। मैंने अपने लोकसभा में दिशा के बैठक में उठाया, हमारा 1 महीना में 4-5 महिलाओं की मौत हो गई, फर्जी डॉक्टर इलाज करते हैं, बोर्ड लगा दिया जाता है क्योंकि किसी का संरक्षण प्राप्त है दिल्ली में, बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम लिख दिया जाता है और सड़क छाप डॉक्टरों से इलाज करा दिया जाता है।
जब मैंने आवाज उठाई दिशा के बैठक में तो छापे मारे जाने लगे, पैरासिटामॉल बेचने वालों को उठा के बंद किए जाने लगे। और आज भी शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया के संरक्षण में फर्जी दवाएं बिक रही है, फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, फर्जी नर्सिंग होम चल रहे हैं। जब आप अस्पतालों का परमिशन देते हैं, लाइसेंस देते हैं, तो स्पेशलिस्ट कौन होगा, डॉक्टर कौन होगा, वो भी क्या स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका ध्यान नहीं करते। तो जो स्वास्थ्य माफिया उत्तर प्रदेश में और बिहार जैसे राज्यों में काम कर रहा है, उसको तोड़ने की जरूरत है। जो पैसा है वो प्रारंभिक जो लिया गया था, सेस का पैसा प्रारंभिक शिक्षा में था, माध्यमिक शिक्षा के लिए था, वो पुराने पैसे अभी तक नहीं गए हैं, राज्यों को नहीं मिले हैं। और हालात क्या थे, हमारे यहाँ स्कूलों को बंद करने का पेयरिंग के नाम पर 5-5 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिए गए। अरे जो पहले बोल रहे थे उनको भी मना कर दिए होते, पहले वो 370 पर चले गए बीजेपी के, तो ये लाइसेंस मिला है क्या? खाली बीजेपी के लोग बोलेंगे, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती, नहीं सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। मैडम आपने सुना 370 पर पास हो रही थी, चाइना और पाकिस्तान पर पास हो रही थी। इसलिए आईना दिखाता हूं तो इनको झेल नहीं पाएंगे। आईना ये है कि माफिया काम कर रहा है, सत्ता के संरक्षण में काम कर रहा है, सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है, पैसा नीचे से ऊपर पहुंचता है। और यकीन ना हो तो मैं चुनौती देता हूं माननीय मंत्री जी को, चलिए हमारे साथ बनारस प्रधानमंत्री के इलाके में देखिए, आप आंतरिक सुरक्षा को उससे जोड़ रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा को जोड़ रहे हैं, यह भी एक बीमारी है, सेस के पैसे से ठीक नहीं होगा। मैडम आप बुद्धिजीवी हैं, दयालु हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस टैक्स को तो सिन टैक्स भी कहा जाता है दुनिया भर के देशों में, इस टैक्स की कुछ टेक्निकलिटी है। अब आप इसको मशीन के पैकेज जितना उत्पादन करेंगे, जितने घंटे चलेंगे उस पर लेंगे। कल्पना करिए अगर खराब प्रोडक्ट हो जाए, स्पॉइल प्रोडक्ट हो जाए, चूंकि ये मशीन से चलेगा तो उसको सेस देना पड़ेगा, काउंटिंग मशीन में हो गई तो स्पॉइल और खराब प्रोडक्ट को भी मार्केट में बेचने की कोशिश करेगा। ये कितना खतरनाक सिनेरियो होगा, इसके बारे में किसी ने सोचा है? जो पैसा बोलने दीजिए मैडम, हम है घंटों अभी शिवसेना के साथी बोले, हम इनके पार्टनर नहीं तो अधिकार हमको भी मिलता है, हमारी ज्यादा है। मैं सेस के पैसे के आंतरिक सुरक्षा से जोड़ने का खिलाफ हूं। हमारी सुरक्षा गुटखा और शराब के पैसे पर खाली डिपेंड नहीं होनी चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए जितना आपको टैक्स लगाना है लगाइए। नेताजी कहा करते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, आप टैक्स लगाइए, लेकिन टैक्स का पैसा लेकर आप अपने यहाँ रख ले, राज्यों को न मिले। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा गुटखा आता है, बिहार जैसा आता है, पूरा पैसा वहां जाए। आप ऑडिट करवाइए कि अगर आपने स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर लिया है, आंतरिक सुरक्षा के नाम पर लिया है, तो अस्पतालों की सुविधा बदली है कि नहीं बदली। मेरे यहाँ जमीन है, मैं पहली बार से मांग कर रहा हूँ, एक कैंसर का अस्पताल खोल दीजिए, टैक्स लगवा दीजिए हमारे यहाँ, कैंसर का अस्पताल खोल दीजिए, वो निशिकांत दुबे जी कहाँ से भी लोग आ जाएंगे। एम्स की बातें हो रही थी ना, अभी बता रहे थे एम्स, मैं चुनौती देता हूँ, 1,10,000 MBBS सीटें बढ़ा दी गई। MBBS को कौन पढ़ाता है? MD पढ़ाता है, MS पढ़ाता है। आपने फैकल्टी नहीं बढ़ा दिए, प्रधानमंत्री जी से फीता कटवा देते हैं, प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करवा देते हैं, जाइए तो कमरे में दरवाजे तक नहीं, डॉक्टर की बात तो दूर है। मैंने और तो और मैडम, हालत उस हद तक चला गया है कि जो सदन में सवाल उठते हैं, जो मैं आपको सबूतों के साथ दूंगा, जो जीरो आवर में सवाल उठते हैं, उसके फर्जी जवाब दिए जाते हैं। उसके तथ्य है, मैं उसको अलग से प्रिविलेज मोशन में लाऊंगा कि जो वहाँ डॉक्टर नहीं वहाँ के भी डॉक्टर लिख देते हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ कफ सिरप को सत्ता से संरक्षण मिलता है उसको तोड़िए, जहाँ चिकित्सा माफिया है उसको तोड़िए, जो फर्जी डॉक्टर के नाम पर पैसे लेकर अस्पताल चलवाया जाता है उसको तोड़िए, तब स्वास्थ्य सुरक्षा होगी। गुटखे के पैसे से स्वास्थ्य सुरक्षा आप नहीं कर पाएंगे। जब देश का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आंतरिक सुरक्षा ऐसे ही खत्म हो जाएगी। धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया। Respected Madam, I rise to speak on the Health Security से National Security Cess Bill 2025, which aims to provide stable, long-term revenue stream for the health emergency preparedness and the national security. The COVID-19 pandemic highlighted the urgent need to strengthen disease surveillance response system and public health infrastructure, making this bill timely and welcome. First, I would like to acknowledge some of the positive aspects of this bill. Dedicated and predictable health security funding. This bill recognizes the public health emergencies cannot be managed by irregular
hardcore budget allocation. A dedicated cess ensures a stable and long-term funding stream. This funding can support disease surveillance network, expand ICU and emergency care capacity, and back vaccine research. The public health supports national preparedness. This bill allocates research to strengthen both public health and national security, recognizing the robust health infrastructure in crucial for overall national preparedness. While acknowledging the positive aspects, I would like to stress for the states like Andhra Pradesh, which continue to face significant public health and infrastructure gaps. It is crucial that the cess benefits reach the frontline and support the state level preparedness effectively. Firstly, ensuring the safe drinking water and preventing waterborne diseases and preventing food poisoning happening in the residential schools of Andhra Pradesh. I may bring to the kind notice of the government that in a couple of months back, the jaundice outbreak happened in the Kurupam Girls Residential School, where 2 innocent tribal students lost their life and 170 students, tribal students, admitted in hospital due to jaundice. This jaundice outbreak is happened due to contamination of water with fecal matter. It is completely negligence of the state government not to provide the safe drinking water to the students who are studying in the residential schools. And it is due to the under maintenance of RO plants. And this our former CM Sri Jagan Mohan Reddy Garu demanded for the compensation and accountability for the from the state government. But so far nothing had been happened. The second incident happened a month back, immediately after the Kurupam issue, where food poisoning happened in the government residential school run by the state government in Jarela and Rajendra Palam. In Jarela, 53 students fell sick, and in Rajendra Palam, 22 students fell sick and admitted in hospital only because of food poisoning. So, by this incident has raised the concern about the state response on the health crisis affecting the tribal students and inadequacy of public education infrastructure. And today I raised this issue in this house because there is a saying in Telugu that Neti Balale Repati Paurulu, and there is another important issue in Andhra Pradesh. In 2025, PHC doctors' protest in Andhra Pradesh reveal serious pressure on the public health care, with overall 1,100 centers at risk, shifting outpatients and the emergency services due to the staffing shortages and long-standing resolved grievance, while temporary measures like deploying substitute staff and restoring the in-service PG quota were taken. Long-term issues remain. The health security and national security should be taken strengthened in the rural and the tribal PHCs by hiring the retaining staff and improving the promotions and the incentives, expanding emergency care training and upgrading the infrastructure, so the service remains uninterrupted and the vulnerable communities receive the reliable health care. By this, the health securities and national security cess bill must clearly focus on providing the safe drinking water and upgrading the rural water pipelines and providing the surveillance of waterborne diseases in the high-risk districts like ASR and Manyam in Andhra Pradesh. In additional priority should be improving sanitation and the health services in the welfare schools. Thank you. जब उन्होंने गैस सिलेंडर बांटे थे तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, जब उन्होंने शौचालय बनाए थे तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया था कि जो है गैस का सिलेंडर दे देने से क्या हो जाएगा। और जब उन्होंने कोविड जैसे माननीय सभापति महोदया, आज मैं स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर केंद्र सरकार प्रस्तुत कर रही है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि गुटखा और पान मसाला पर उपकर शेष वसूल कर लोगों को स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर सचमुच केंद्र सरकार को लोगों की चिंता है तो बिहार सरकार जैसी शराबबंदी की तर्ज पर संपूर्ण देश में
पान मसाला एवं गुटखा बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, लेकिन सरकार को आम लोगों की स्वास्थ्य चिंता की जगह पर सरकार को अपनी जेब भरने की चिंता है, न कि आम लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है। दूसरी तरफ पान मसाला, गुटखा एवं तंबाकू जैसे उत्पाद पर प्राप्त होने वाली आमदनी से राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या लेना देना है, इस विधेयक के प्रावधान से कहीं भी स्पष्ट नहीं है। क्या पान गुटखा बनाने वाली कंपनियां कोई ड्यूबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा? यह तथ्य अपने आप में बेहद हास्यास्पद है कि सिवा और कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दोहरी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्रम में परमाणु बम बनाने के यूरेनियम पैदा होता है, लेकिन पान गुटखा बनाने वाली व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देगा। कहीं न कहीं इस प्रावधान में राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द जोड़ देने से उपकर से अर्जित आय का हिसाब किताब आम जन को सूचना से मरहूम कर देने के अलावा कोई दूसरा कारण यहाँ नहीं दिखाई देता। कानून बनाने के क्रम में एक जगह उल्लेख है कि सरकार अपनी मर्जी से किसी नए प्रोडक्ट का नाम इस सूची में जोड़ सकती है। एक जगह कानून में यह भी लिखा है कि सरकार चाहे तो कोई पेनाल्टी और इस तरह के शेष को आंशिक को पूरा माफ कर सकती है, जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि सत्तारूढ़ दल को चुनावी फंडिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड में आनाकानी करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर कारोबारी सहमत होंगे तो माफ भी कर देने का प्रावधान है। साथ ही इस विधेयक से इंस्पेक्टर लाइसेंस राज की वापसी का भी रास्ता साफ हो रहा है, जबकि वर्तमान सरकार रोज इस सदन में ईज ऑफ डूइंग का ढिंढोरा पीटने में लगी रहती है। यह उपकर पूरी तरह से केंद्रीय स्तर के लिए बना है। इसमें राज्यों के साथ किसी प्रकार के शेयरिंग मैकेनिज्म का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि स्वास्थ्य भी राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी है और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वसूले गए संसाधनों पर राज्यों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। संविधान का अनुच्छेद 270 राज्यों के उपकर के राजस्व में कोई हिस्सा नहीं देता, जबकि राज्य 60% सार्वजनिक व्यय का बोझ स्वयं उठाते हैं, क्योंकि केंद्र गैर साझा करने योग्य उपकरों पर ज़्यादा निर्भर हो रही है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्से को 41% तय किया था, पर केंद्र सरकार के उपकर बढ़ाने से राज्यों की वास्तविक हिस्सा कम मिल रहा है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों से परामर्श, जीएसटी काउंसिल के विस्तृत विमर्श और वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की सिफारिशों की प्रतीक्षा किए बिना धीरे धीरे संसद से ब्लैंक चेक मांगने की कोशिश कर रही है। सरकार इस शेष को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़कर भावनात्मक सहमति लेने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ पर खर्च बढ़ना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि उसका रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जो असमान, अपारदर्शी और राज्यों तथा श्रमिकों के हितों के खिलाफ हो। यदि सचमुच उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य और संरचना को मजबूत करना है, तो सरकार को चाहिए सामान्य बजट प्रक्रिया, वित्तीय उत्तरदायित्व और संसद की फाइनेंस कमेटियों के माध्यम से स्पष्ट बजट प्रावधान करती, न कि एक और नया शेष लगाकर टैक्स स्ट्रक्चर को और पेचीदा बनाती। विधेयक यह कहता है कि उपकर से प्राप्त रकम पहले समेकित निधि में जाएगी और बाद में स्वास्थ्य तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च होगी, पर किसी स्पष्ट बाध्यकारी अनुपात, पारदर्शी रिपोर्टिंग या स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट की मजबूत व्यवस्था का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। अभी तक कोई स्पष्ट आउटकम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया। इस शेष से जुटाई गई राशि से कितने नए अस्पताल, कितने हेल्थ सेंटर, कितने रक्षा प्रोजेक्ट या आपदा तैयारी पर तंत्र बनाए जाएंगे। सरकार इस उपकर को मुख्यतः पान मसाला और आगे अधिसूचित विशिष्ट वस्तुओं पर लगा रही है, जिन्हें यह हानिकारक मानती है, पर न तो सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशें, न ही एनएसडीसी, गैर संचारी रोग, कैंसर बोझ आदि के किसी वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देकर विधेयक में स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए था। यदि वास्तव में उद्देश्य नशे की बुरी आदतों को रोकना है, तो सरकार को तंबाकू नियंत्रण कानूनों को सख्त पालन, उत्पादों की पैकेजिंग, विज्ञापन नियंत्रण, पुनर्वास कार्यक्रम और राज्यों के स्वास्थ्य बजट को सीधी मदद जैसे उपायों पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए। सिर्फ टैक्स बढ़ाने से व्यवहार परिवर्तन की गारंटी नहीं मिलती। यह बिल कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के लिए कोई मशीन ओन ऑपरेटेड
लिमिटेड या कंट्रोल करता है उस पर शेष लगेगा, चाहे वास्तविक उत्पादन कितना भी हो। शेष मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर लगेगा, न कि वास्तविक आउटपुट पर। यानी अगर बाजार में मंदी, उत्पादन घटाना पड़े या मशीन आंशिक रूप से चले, तब पर भी पूरा शेष देना होगा। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे और मझौले उद्यमियों को होगा, जो पान मसाला और इससे जुड़े सेक्टर में कारखाने चलाते हैं, किराए पर मशीन लेते हैं, साझा मशीनों से काम करते हैं। इन इकाइयों में काम करने वाले हजारों लाखों मजदूर, पैकिंग वर्कर, परिवहन कर्मी और सप्लाई चेन से जुड़े लोग अचानक बहुत बड़े टैक्स बोझ और अनिश्चितता के दायरे में आ जाएंगे। यह उपकर मशीन की रेटेड स्पीड के आधार पर लगाया जाएगा। ज़्यादा स्पीड वाली मशीन पर प्रति माह करोड़ों रुपए तक का उपकर देना होगा, जिससे छोटे मध्यम के यूनिट या तो बंद होंगे या फिर गैर औपचारिक अवैध उत्पादन की ओर धकेल दिए जाएंगे। पान मसाला और संबंधित उद्योगों को आपूर्ति श्रृंखला में काम करने वाले लाखों मजदूरों के लिए न तो इस विधेयक में कोई सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है, न वैकल्पिक आजीविका का कोई व्यवहारिक खाका, जबकि अवैध बिना बिल के उत्पादन से राजस्व हानि और मिलावटी उत्पादों का खतरा और बढ़ेगा। विधेयक में स्पष्ट नहीं किया है उपकर कब तक वसूला जाएगा, कौन सा वित्तीय लक्ष्य पूरा होते ही इसे वापस लिया जाएगा, और क्या संसद को प्रत्येक वर्ष फंड के उपयोग का विस्तृत अनिवार्य लेखा जोखा दिया जाएगा या नहीं। आज तक शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर, सड़क उपकर आदि के उपयोग की समेकित सार्वजनिक समीक्षा इस सदन के सामने बहुत स्पष्ट रूप से नहीं प्रस्तुत हुए। ऐसे में एक और उपकर जोड़कर सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है। सरकार यदि सचमुच स्वास्थ्य की चिंता करती है तो उसे टैक्स के साथ साथ डिमांड साइड नीतियां लानी चाहिए। सख्त विज्ञापन नियंत्रण, पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार, स्वास्थ्य योजनाएं, जागरूकता अभियान, सिर्फ राजस्व के नाम पे बोझ बढ़ाना आसान नहीं है। मैं सदन से मांग करता हूं कि अस्पष्ट प्रावधानों के चलते सेलेक्ट कमेटी के सामने इस कानून को जाना चाहिए, जिससे विस्तार से इस पर चर्चा हो सके। धन्यवाद। श्री सच्चिदानंदम। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, சுகாதார பாதுகாப்பு, தேசிய பாதுகாப்பு குறித்த செஸ் மசோதா 2025 நம்முடைய மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பான் மசாலா மற்றும் போதைப் பொருட்கள் மீது அதனுடைய உற்பத்தி எந்திரங்களின் திறனுக்கு ஏற்ப செஸ் வரி விதிக்கப்படும் என்று தனது அறிமுக உரையிலே நிதியமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்தார். இந்த வருவாய் அனைத்தையும் சுகாதார பாதுகாப்பு மற்றும் தேச பாதுகாப்புக்காக பயன்படுத்தப் போவதாக அறிவித்துள்ளார். நாட்டில் இந்த இரண்டு பாதுகாப்புகளும் அவசியமானது என்பதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் யாருக்கும் இருக்க முடியாது. செஸ் வருவாயை மட்டுமே இந்த இரண்டு பாதுகாப்புகளையும் உறுதி செய்ய முடியுமா என்பதை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் விளக்க வேண்டும். செஸ் வரி விதிக்கப்பட்டால் அது ஒன்றிய அரசுக்கு மட்டுமே அந்த வருவாய் போய் சேரும், மாநில அரசுகளுக்கு போய் சேராது. சுகாதாரம், உள்நாட்டு பாதுகாப்பு போன்ற பிரச்சனைகளை மாநில அரசுகளும் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருப்பதால் இந்த செஸ் வரிப்பில் 50% வருவாயை மாநில அரசுகளுக்கு தர வேண்டும் என்று மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அறிமுக உரையின் போது இந்த வருவாயை பயன்படுத்தி திட்டங்களை உருவாக்கி மாநிலங்களுக்கு கொடுப்போம் என தெரிவித்தார். 50% நிதியை கொடுங்கள், திட்டங்களை மாநில அரசுகளே உருவாக்க முடியும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அத்தியாவசியமான பொருட்கள் மீது விதிக்கப்படும் வரியை குறைத்து கார்ப்பரேட்டுகள் மீதும் செல்வந்தர்கள் மீதும் வரி விதிக்கும் கொள்கையை கொண்டு வாருங்கள். ஏழைகள் மீது கருணை காட்டுங்கள். ஏழைகளுக்கான திட்டங்களை சுருக்காதீர்கள், ஒதுக்கீட்டை குறைக்காதீர்கள். புகையிலை, பான் மசாலா, ஜர்தா, சாராயம் போன்றவற்றிற்கு அதிகமான வரி விதிப்பதால் மட்டுமே அதனுடைய பயன்பாட்டை குறைக்க முடியாது. இதன் மீது தடை விதிக்க வேண்டும். திண்டுக்கல்லுக்கு PMJVK திட்டத்தில் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் கேட்டால் அனுமதி கொடுக்க மறுக்கிறீர்கள். கொரோனா நோய் தொற்று காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட PM கேர்ஸ் நிதி என்னவாயிற்று என்பதை அறிய விரும்புகிறோம். அதன் வரவு செலவு என்ன என்பதை இந்த அவைக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். நாட்டில் ஏராளமானோர் புற்றுநோய், சிறுநீரக செயலிழப்பு மற்றும் இதய நோய் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள முடியாமல் பல குடும்பங்கள் சிரமப்படுகின்றன. பிரதம மந்திரி பேரிடர் நிவாரண நிதிக்கு பரிந்துரை செய்தால் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கைக்கு கோட்டா நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. எவ்வளவு தொகை கேட்டாலும் 1 to 3 லட்சம் மட்டுமே அவர் அனுமதிக்கப்படுகிறது. தொற்று நோய் பரவக்கூடிய காலங்களிலும் மக்கள் சிரமப்படுகிறார்கள். மருந்து விலையை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க தங்கள் அரசால் முடியவில்லை. கூடுதலான விலை வைத்து விற்பவர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளீர்கள் என்பதை தெரிவிக்க வேண்டுகிறோம். தேச பாதுகாப்பு தலைநகரிலேயே கேள்விக்குள்ளாகி உள்ளது. சிந்தூர் ஆபரேஷன் போது ஜெய்ஷ் முகமது தலைமையகம் உள்ளிட்டவை அளிக்கப்பட்டு தீவிரவாதத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டதாக மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அறிவித்த பின்புதான் டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு நடந்திருக்கிறது. தீவிரவாதத்துக்கு ஏன் இரையாகிறார்கள்? புறக்கணிப்புக்கும் பாதுகாப்புக்கின்மைக்கும் உள்ளாகிறவர்களே தீவிரவாதத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். அவர்களுக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை அரசு எடுப்பதன் மூலமாகத்தான் தீவிரவாதத்தை ஒழிக்க முடியும். தமிழ்நாட்டில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் பிரச்சனையில் நீதிபதியை கலவரத்துக்கு வித்திடுகிறார்.
நீதிமன்றத்திற்கு பாதுகாப்புக்கு அனுப்பப்பட்ட மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையை ஒருதலைப்பட்சமான தீர்ப்பை அமல்வாக்குவதற்கு அனுப்பி வைக்கிறார். மாநில காவல்துறைக்கும் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படைக்கும் மோதலை ஏற்படுத்த முனைகிறார். தீர்ப்பை அமலாக்குவதற்கான காலத்திற்கு முன்பாகவே நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்ய சொல்லி தீர்ப்பை வழங்க முற்படுத்துகிறார். இவரது தீர்ப்பால் மதக்கலவரம் உருவாகிறது. இத்தகைய நீதிபதி மீதெல்லாம் அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறது? இவர்கள் மீதெல்லாம் அபராதம் விதிக்க வேண்டும். தேச பாதுகாப்பு நிதியை இதன் மூலமாகலாம் உயர்த்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ட்ரக் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சி மகாராஷ்டிரா, குஜராத் போன்ற மாநில கடற்கரைகளை பயன்படுத்தி போதை மருந்து கடத்தல் நடக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். மெத்தபெட்டமைன் என்ற போதைப் பொருள் 2019க்கும் 2024க்கும் இடையில் 6 மடங்கு அதனுடைய கடத்தல் அதிகரித்து வருகிறது என்பது தெரிய வருகிறது. ஆகவே இதன் மீதெல்லாம் விதிக்கப்படும் அபராதங்கள் சுகாதாரம் பாதுகாப்புக்கான நிதியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களை நான் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஆக வரி விதிப்பு கொள்கையிலே இந்த அரசுக்கு அதிலே மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். ஏழைகளுக்கான வரி விதிப்பை குறைக்க வேண்டும். கார்ப்பரேட்டுகளுக்கும் செல்வந்தருக்குமான வரிகளை விதிப்பதன் மூலமாக வருவாயை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை நம்முடைய மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கு வைத்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री मोहम्मद बशीर। यह धारा 3 के तहत लगाया जाता है। Madam, thank you very much. भारत में निर्मित या Madam, the purpose of this bill, केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने that is to introduce a special tax cess विधेयक का मुख्य on the products like pan masala and any other items the central government may add later. They can add later. Money collected from this cess will be used for public health and national security purpose. And the government can increase cess rates up to double if needed for public interest for a limited period. All the clauses are also there, penalty clause and that kind of things. When we are discussing this, I am not questioning the integrity of the government or honesty of the minister. Fact remains. What is that? Instead of addressing the crux of the issue, you are just beating around the bush. You are really not addressing the main issues. It is like, you believe some kind of magical remedies which will not work out. We have to address the real problem. Now, we all know that there are certain problems, especially in the health sector. Health sector in India, if we honestly think about that, it is coming down like anything. This kind of small chota arrangements will not serve that purpose. We have to take it very seriously. Revenue generation, up to an extent it's okay. But that alone will not solve the problem. Instead of doing that, we have to do serious work. Now take an example worldwide and India. We know that worldwide expenditure on education and health is giving maximum importance. Unfortunately, we are doing this kind of small work in this thing. Support the bill. We may do it on the merit of it. India is a country which gives very low priority for this. As an example, India spends only 2% of the GDP on healthcare. At the same time, other countries, they do it between 5% and 8%. Low spending on this kind of things. Government should change their priorities. Now what is happening? My learned friends were saying about another danger. In this, now there is pan parak, something like that. These kind of things are coming in the market in a big way. We may get some revenue out of it. I would like to say that revenue is to kill the kids. What is happening, sir? This drug abuse is still burning. Remedy is not there. Nobody is attacking this. So what I am saying is, India must think loudly about that. Now what is happening? This 100%, this thing, foreign investment we have agreed. Foreign companies are coming. Okay, let them deposit it. Let them run good hospitals. But now what is happening? We have to realize a new technique is coming. That is not FDI. They are not investing money here. That's a new thing. What is that? Take away the ownership of the institution. That is happening now.
hospitals in India is captured by Jains. They are capturing the entire thing. You know what is statistics? I don't want to take much of your time. I would like to say that these companies, foreign companies, they have already purchased most of the hospitals in India. I don't know whether the government is aware of it. See, as an example, Temasek, they have in Singapore, they are holding 59% in Manipal hospitals like that. Blackstone, US, they are capturing 80% in KIMS. Similarly, KKR, US, that is in our place also, in my Kerala baby hospital, they are doing this kind of things. CVC Capital, Luxembourg Hall, 60.4% in HCG. General Atlantic, they are 70%. Ujjala, like that. TPG Growth, US, they are also having 55% in somehow also. What they are going to do? They are not investing in India. We are saying about make in India kind of things. This company, they take away India's hospitals according to their will and pleasure. What is going to happen? If we keep silent on these kind of things, what kind of danger we are inviting? I humbly request the government to think loudly about that. It is not a small thing. Our investment, all kind of things is depend upon this kind of things. Policies. Government should loudly think about that. So, madam, I would like to say that we have to work jointly and fight this kind of things. I am going to conclude. Government must have a clear-cut program of action, not just taking some cess and doing that. That also clarity is not there. You will collect for both departments, both work. One thing is for the defense, security, and the other thing is health. What is proportional partition in that? How much you are going to give to health? How much you are going to for the security? All these things require further clarification. So with good intention, I am saying that you have to think loudly on this kind of things. With this few words, madam, I conclude. Thank you very much. मियां अल्ताफ 22 सितंबर 2025 से जो प्रभावी जीएसटी किया गया 2.0 उसके सुधारों के अंतर्गत जो ये बिल आई है दी हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, मैं इसकी हमायत में खड़ा हुआ हूँ, इसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ और मैं हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उसने जो ये डीमेंट गुड्स हैं जिसमें ख़ास तौर पे पान मसाला वगैरह शामिल हैं उन पे सेस लगाया है, इम्पोज किया है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसको इस नज़र से नहीं देख रहा हूँ कि इससे रेवेन्यू कितना बढ़ेगा या कम होगा, इससे कितना फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेरी हुकूमत से ये मांग रहेगी कि इस किस्म की सारी चीज़ें, चाहे वो पान मसाला हो या ड्रग्स का मामला हो या और ऐसी चीज़ें हों जिससे हमारी इंसानियत तबाह हो रही है, हमारा यूथ इससे तबाह हो रहा है, उसको मुकम्मल बैन किया जाए, उस पर मुकम्मल पाबंदियाँ लगाई जाएं, उस पर मुकम्मल तौर पे सेस लगाया जाए और डिस्करेज करना चाहिए हमें। कोई भी ऐसी अगर कोई इस कारोबार में मुलव्वस है, वो इसका काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। उनकी अगर कारोबार जा रहा है, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं बंद करने से हमारा समाज ठीक होगा, हमारे लोग ठीक होंगे। आज दुनिया में एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर है तो वो इस चीज़ का है कि जो ड्रग्स में लोग बचे जा रहे हैं, पूरी नस्लें हमारी तबाह हो रही हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। मैं उस एंगल से इसको देख रहा हूँ और ये भी ज़्यादा अच्छी बात है कि जो पैसा इससे जमा होगा वो आप हेल्थ सेक्टर पे लगाएंगे। जान है तो जहान है, सेहत ठीक रहेगी तो सब काम होंगे। हमारा जो हेल्थ का सेक्टर है, मेडिकल एजुकेशन का सेक्टर है, उसकी हमारे हिंदुस्तान के रूरल एरियाज़ में बहुत बुरी हालत है, उसका बहुत पोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल्स की कमी है, बिल्डिंग्स की कमी है। तो ये
पैसा अगर जमा किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो हेल्थ के ये कहा जा रहा है इस बिल में कि ये लोगों की हेल्थ के लिए इसमें इसका इस्तेमाल होगा। हम इस चीज़ का वेलकम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि स्टेट्स को भी जो ये पैसा जाएगा, मेरी हुकूमत से ये अपील होगी कि स्टेट्स को भी ये कहा जाए और सेंटर भी इसकी तरफ ध्यान दे कि ये पैसा कैंसर के जो पेशेंट होंगे, ये ज़्यादा पैसा उनके लिए जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। बहुत बड़ा खर्च है इस बीमारी के लिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अल्लाह ताला हर एक को बचाए, लेकिन इसका बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो अगर मेरी ये तजवीज़ मान ली जाए कि ये पैसा जो है इसको ज़्यादा हिस्सा जो इसका है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए लिया जाए। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे बात हुई हमारे आपसे पहले कुर्सी पे जगदम्बा पाल जी थे, ये कह रहे थे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलने का है। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप मेडिकल कॉलेज बेशक मत खोलिए, लेकिन जो आपने खोले हैं उनको तो ठीक कीजिए, उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए। वहाँ तो कैथ लैब नहीं है, वहाँ MRI नहीं है, वहाँ CT स्कैन नहीं है, फैकल्टी की तो बात ही नहीं है। इसलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे होती तो मैं उनको कहता कि ज़्यादा अहम मामला बिल्डिंगें खोलने से, कॉलेज खोलने से मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल और हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें ज़्यादा मसले उससे हल नहीं होंगे। हल इससे होंगे कि एक तो इस पैसे का बेहतर यूज़ किया जाए, एक जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके कॉलेज है, कम से कम वहाँ पे फैकल्टी होनी चाहिए, वहाँ पे इक्विपमेंट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री मालविंदर सिंह कंग। थैंक यू मैडम स्पीकर, आपने अहम बिल पे मुझे बोलने का मौका दिया है। मैडम स्पीकर, मैं बिल का टाइटल पढ़ रहा था, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। मेरा ये मानना है कि हेल्थ सिक्योरिटी तो या तो अच्छी डाइट मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का मिले, उससे बेहतर सेहत आदमी की हो सकती है। पान मसाला तंबाकू ये तो हर जगह लिखा है कि सेहत के लिए बड़ा खतरनाक है, उसके बावजूद हम उसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रहे हैं। इवन हमारे यहाँ तो ग्लोरीफाई किया जाता है कि बारातियों का स्वागत है पान मसाला से होगा। मैडम ये बड़ा मतलब हास्योहीना विषय है। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ मैडम। गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वें पातशाह, सिख धर्म में तंबाकू ये बाकी चीजों को कैसे लिया जाता है कि वो उनका एक घोड़ा एक बार जंगल में वो जा रहे थे, कोई तंबाकू के खेत को देख कर रुक गया था। तो इतनी खतरनाक चीज है ये चीजें। हम सरकार इस बिल के माध्यम से चाहती है कि देश की सिक्योरिटी उसको सिक्योर किया जाए। फिर तो पान बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला कहेगा कि मैं देश को सिक्योर कर रहा हूं। अभी तक तो हम सोचते हैं कि, और सोचते क्या सच्चाई है कि देश की हमारी जो ग्रेट फौज है, आर्मी है, उसके कारण हम लोग सिक्योर हैं, हमारे बॉर्डर सिक्योर है। फिर तो कल को पान बेचने वाला कहेगा कि मैं टैक्स दे रहा हूं इसलिए देश का बॉर्डर सिक्योर है। तो ये अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। मुझे लगता है ऐसी चीजें पूरी तरीके से वर्जित होनी चाहिए थी। हो सकता है सरकार की इंटेंशन में मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत मैच्योर इशू नहीं है। दूसरी मैडम, एक सर बड़ी अच्छी स्कीम है भारत सरकार की, गुजरात के मुद्रा पोर्ट से हजारों करोड़ों की जो नशे की खेप पकड़ी जाती है और वो यूटिलाइज हो रही है देश के अन्य भागों में। वो जो इतनी बड़े नशे का कारोबार जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं। और तीसरा, अगर पान मसाले पे सेस जो लगाएंगे, पंजाब का पाकिस्तान से 750 किलोमीटर का बॉर्डर है, हम बार मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते रहे उसको मॉडर्नाइज करो, नशा बाहर से आ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या इस सेस का यूटिलाइजेशन सरकार करेगी ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर पे? जो तमाम इशू है मुझे लगता है कि इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना, और इवन इसमें तो एक बड़ा
बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑफ मेजर स्टेक होल्डर, इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर, इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि नो मेजर चेंजेस एज प्राइसेस नॉट लाइकली टू गेट इम्पैक्टेड। लेकिन आम कंज्यूमर को इसके प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, उसका इम्पैक्ट नहीं। क्या हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? क्या पान मसाले को और लोग खाएं? क्या इस तरफ सरकार जा रही है? ज्यादा सेस बटोरेगी, उससे पान मसाले वाले जो कारोबारी हैं उनका कारोबार और बढ़ेगा। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये बड़ा कंट्राडिक्शन है। और लास्ट में कहना चाहता हूं, तमाम देश भर में टैक्स को सेंट्रलाइज किया जा रहा है जीएसटी के माध्यम से, अलग अलग तरीके से। जो पान मसाला तंबाकू से जो सेस इकट्ठा होगा, स्टेट्स, देश के स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, तो स्टेट्स की भागीदारी, स्टेट्स का उसमें हिस्सा कितना रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए क्लैरिफाई करना चाहिए। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हेल्थ सिक्योरिटी अगर इस देश से, अगर देश की नेशनल सिक्योरिटी बेहतर होगी तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, लोगों के खान पीन बेहतर करना चाहिए, ना कि ऐसे चीजों को ग्लोरीफाई करके उस पर टैक्स लगा के उनको कारोबार करने वाले इससे तो उत्साहित होंगे और ये कहेंगे कि हम देश को सिक्योर कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। तो मुझे लगता है इस पे सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Excise Act. Just to explain it a bit better, sir. When in 2017, Thank you, Chairperson, GST was brought in for allowing me to speak on in order to give Health Security Say National Security Bill 2025, which proposes to levy a cess on machine installed and the processes to manufacture goods that fall under high health risk and high revenue category like pan masala and tobacco products. The main objective of the bill is to raise additional revenue in two categories, national security and public expenditure. But ma'am, from health security to national security, the purpose of collecting cess is to spend it for a specific purpose. But here, the spectrum is very broad, from health security to national security. Where will be the accountability? How the audit will take place is a serious concern that we have to focus. But anyway, this government brings a bill for consideration and passing. But till now, I have not seen any consideration, only passing. Whatever revenue that is generated from this cess is expended usually for a specific purpose. This allows the center to have more fiscal autonomy, but the point to be noted is it acts as new and big source of revenue to the union government. At the same time, the cess reduces the fiscal state and the financial autonomy of the states. Most importantly, the shift towards non-shareable taxes reduces transparency in fiscal management. Normally, in public spending, it is said that 1.1 to 1.5% GDP is spent by 2017 statistics. But as per the national health policy, it has to be minimum 2.5%, madam. This government will never believe in spending on healthcare, but it only poses as if it is having a serious concern on healthcare. Article 270 states that the states will not receive any share of cess, preceded a structural aspect that increasing strain the fiscal federalism. For example, although 15th Finance Commission recommended states should receive 41% of the divisive pool, for 21-26, the actual share of the center gross tax revenue has declined significantly as the center now collects the largest proportion of taxes through non-divisible taxes and surcharges. As a result, the state have to encounter dual challenge that the share of the simple taxes diminishes while they continue to bear nearly 50% of public expenditure responsibility, particularly essential sectors like health, education, and infrastructure. In this context, introduction of additional sources from which states are excluded for restricted and undermine the cooperative federalism. Combining health and national security and merging the two. Got to be brought back. Let me assure here itself straight away that the tobacco products will still be taxed. Both unrelated objectives under one set of priorities. Once meant for public health, maybe for purposes or this reduces transparency. I like to bring to attention that more than They'll still be taxed at 40%. 1.5 lakh crores. But there will not be a compensation.
collected by the government. But when it was under the compensation cess, like now till December 31st probably, they were under the highest rate available then, 28%, and over and above which the compensation cess was added. Together, some items in cigarette would have been at 53%, some were at 60%, some were at 72%, some were even 88%. Now that the 28% is gone away from GST, all the cannot be ruled out at all. deemed would have gone to 40% tax. That's the structure in the GST. Now, therefore, the items cannot be taxed beyond 40% even if they are demerit. But the incidence of tax on tobacco and tobacco-related products have therefore come down. You have no compensation cess. The highest rate that you have in GST is 40%. And as a result, it gives an impression that the government has allowed lesser tax on tobacco, and therefore it's going to become affordable. The intent is not that, sir. So within the GST scheme of things, it continues to be at the highest rate. But now that the compensation cess cannot be collected and we have to come back to excise, the Central Excise Act will now back again get the cigarette items and retaining largely the incidence of tax, we are imposing the excise on these demerit goods. That's the sum and substance of the story behind why now excise is coming in. Sir, in general, I also want to highlight the fact, since the intent is not to tax tobacco and tobacco products lesser than what prevailed earlier, it's important for us and this august House to recognize the fact that during the GST period, tax on tobacco-related products, even with the cess being there, could not reach the benchmark which the WHO sets every year. Meaning, they have what is called as Tobacco Affordability Index of Tobacco Products. They have an index called Affordability Index of Tobacco Products. They monitor the rates which prevail all over the world and point out where the rate is well below the benchmark they set. And therefore they say you're making tobacco affordable, meaning people are not being disincentivized from buying cigarette unless you keep it at a certain level. And there are several countries which keep changing the tobacco rate, linking it to inflation, and even otherwise, annually they keep changing the rate so that the rate is itself a disincentive so that people don't end up buying more cigarettes because now that it's become cheaper. And in that context, 80 countries revise tobacco taxes annually, as I said, linking to inflation and also looking at their periodic excise schedules. Australia increases tobacco's excise automatically by CPI plus an additional 12.5%. New Zealand does the same exercise plus 10%. Philippines, Turkey, South Africa, all of them also do an automatic escalating way of pricing tobacco products. EU member countries do 60% over and above the CPI on a weighted average basis, and many countries do exceed 70 to 75%. So what we need to do in India is to see if we are making tobacco affordable, which we don't want to. We want to make sure there is a deterrent, and therefore at the moment, India's total tax incidence on cigarette is approximately 53% of the retail price, which is substantially lower than the World Health Organization's recommended benchmark of 75% of the retail price. Or it is even more than 75%. So, as I said, many countries impose over the CPI 80, 85%, 75 to 80%, and so on. So, we want to keep that in mind, and therefore, the rate fixation has happened, keeping WHO's benchmark as well, and making sure that we don't make cigarettes affordable. But here, there's one element. I think
one of the honorable members has spoken in brief about BD, but I want to highlight the fact, sir, that whilst doing this, even BD comes back to excise. But there is no change in tax incidence of BD. Considering the fact that the workers who roll BD come from a lower economic strata of our country, we had made sure that nothing goes to hurt the livelihood propositions but of the BD rollers, but equally continuing with very many schemes which will give them health awareness. I'll read that out a bit to highlight, sir. When I say there's no change in the tax incidence of BD, I just want to put it on the record here so that honorable members will appreciate. In the current regime, which will continue till the end of this month because of the compensation cess, which is the scheme of things since 2017 when GST was brought in, the GST rate, as I said, on BD is 28%. And there is this NCCD, which is a calamity-based collection that we do. For handmade BDs, for every 1,000 units, we charge 1 rupee. If it is a machine-made BD, then for every 1,000 units, we charge 2 rupees and not more. Together with that, as I said, basic excise duty continued as a token gesture even during the GST regime when the compensation cess was being collected. The central excise was kept at a very nominal rate. And how nominal is nominal? 5 paisa per 1,000 units. Not 5 rupees, 5 paisa per 1,000 units, which is man-made, and 10 paisa per 1,000 units if it is machine-made. So this is what prevails currently. Exactly what prevails now is what is going to prevail after excise comes into play. So the proposed regime will have BD at 18% as recommended by the 56th GST Council. That is why when the next generation GST was announced, a lot of people said, what have you done? GST BD rate was at 28, over and above that there was some cess, now minuscule cess, but over and above that, so 28% is the rate at which BD was and continues to be till 31st. But we had to move it along with very many items because 28 is not available anymore as a rate under GST. So every item moved to 18 unless it was a sin item which went to 40. Cigarettes went to 40. BD did not go to 40. It, on the contrary, moved to 18 because there was no more 28. So from 1st January or whenever this new thing comes into play, in GST it will be at 18. So a lot of people question saying you reduced the price because you reduced the tax on BD. But that is because we didn't have 28, so it went to 18. The NCCD portion continues to be the same as 1 rupee for every 1,000 BDs, handmade, and 2 rupee for every BD for 1,000 units if it is machine made. That continues as it is. And the basic excise duty, where it was 5 paisa per 1,000 and 10 paisa for per 1,000 machine made, will be at 10%. Together, the incidence on BD will be the same. It shall not worsen the situation or it shall not have a negative impact on BD rollers. That's an upfront statement I want to offer. So now I come to specific points which many members have raised. I want to address them. Pramod Tiwari ji, while speaking, apparently has said that the bill is silent on tobacco farmers. And what will happen to the workers who are working in the tobacco related, in the tobacco cultivation and so on. And also he has observed that this is against devolution. I want to first correct this impression, sir. This is an excise duty
it's not a cess. We'll talk about cess tomorrow, day after, whenever it comes. But this is an excise duty. This excise duty, by the very nature of taxable pool, will join the taxable pool and it will be devolved per the Finance Commission's recommendation to the states. It is not against devolution, it joins the taxable pool. That is one thing. Second, sir, there are several schemes from the government to take care of tobacco farmers. Now, this scheme has been on since 2015-16. It's called Crop Diversification Program, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, and it runs in 10 states, major tobacco producing states, where farmers are encouraged to move from tobacco to other crops. I'll read out the states where this is happening: Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal. In all these states, sir, has it had an impact? Yes, it has had an impact, because over 1.12 lakh acres of land has shifted from tobacco growing to other crops, and I'm talking about a period between 2017-18 to 21-22. So what are the crops to which they moved? Each state focused on its own area, but largely sugarcane, if it is an irrigated area, sugarcane, groundnut, oil palm, cotton, chili, maize, onion, pulses and turmeric, if it is irrigated. If it's non-irrigated area, or if it is a state-specific subject, I'll read out the example of 3 states. Telangana tobacco growers moved to producing Bengal gram and chilies. Odisha, from tobacco, they moved to vegetable growing and maize. Karnataka, they moved from tobacco to soya bean and sugarcane. So, this move from tobacco growing is being encouraged, and 10 states have been given that attention through this program. As I said, more than 1.12 acres of land have moved from tobacco to other crops. Equally, are we giving any attention to BD workers? Sir, 49.82 lakh registered BD workers are there in this country. Now, for them, labor welfare scheme under Ministry of Labor and Employment is implemented across the country through labor welfare organizations situated in 18 regions across the country, including welfare of the BD workers and their families. What are the specific schemes which are being given for BD workers? The healthcare facilities through 10 hospitals and 279 dispensaries. Reimbursement expenditure for specialized treatment. Sometimes it is now covered under cashless, paperless, but reimbursement also happens when they go for cancer treatment, when they go for tuberculosis, if they go for any heart diseases, or even for kidney transplantation. So their reimbursement method works. Financial assistance is also given for education of children of BD workers from class 1 to college or university, and the amount given ranges from 1,000 rupees to 25,000 rupees per student per annum, depending upon the class in which the child is, or the course that the child is doing. Other than this, subsidy of 1.50 lakh per beneficiary for construction of a Pakka house is given under the revised integrated housing scheme, which commenced from 2016. RIHS has been converged with Pradhan Mantri Awas scheme. Other than this, of course, you have PM Shram Yogi Man Dhan, PMSYM, Suraksha Bima Yojana, Jeevan Jyoti Bima Yojana, Jan Arogya Yojana, public distribution system happens, Gramin Kaushal Yojana, and also the Swanidhi, Deen Dayal Antyodaya Yojana, and so on. So all these schemes also aim at the BD workers.
Pramod Tiwari ji again has mentioned that no mention of health and related expenditure is made here. I want to just highlight, sir, probably Member Sagarika Ghosh also mentioned this. Health and wellness have been a key focus of our government. Prime Minister Narendra Modi has been very keen that in the last 11 years, I can read out the amount being spent on health. The last year of UPA government, 2013-14, 33,278 crores have been spent for health ministry's budget allocation. Whereas 25-26 this year, the BE, I'm comparing the BE with BE, 99,858 crores have been allotted, 3 times more. So, other than that, between 2014 and 2021-22, 14-15 and 21-22, government health expenditure as a percentage of GDP rose from 1.13% to 1.84%. Government health and expenditure is a share of overall government spending also increased from 3.94 to 6.12%. Between 2014 and 22, per capita health spending tripled from 1,108 rupees to 3,169 rupees. This is per capita, sir. Other than that, of course, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana gives protection for nearly 55 crore beneficiaries, 9 crore plus, over 9 crore hospital admissions have been entertained under that, resulting in 1.3 lakh crore or even slightly more worth of free treatments. So healthcare has taken a good priority in this government. More than 16,000 Jan Aushadhi Kendras now present in almost all the districts of the country provide generic medicines at affordable prices, often 50 to 90% cheaper than the market rates. Then under the mission Indradhanush, 5.46 crore children and 1.32 crore pregnant women have been vaccinated against 12 diseases. This targeted initiative actually has contributed to a significant decline in the maternal mortality rate from 130 per lakh live births, that was in 2014 to 16, to 80 in 2020. So the last 11 years, sir, the government has approved or established several new aims across the country and in fact across several states, and set up also very many medical colleges, including the first ever AIIMS in the Northeast located in Assam. MBBS seats have been increased to 1.18 lakh and 74,000 PG seats have also been added since 2014. So tobacco products are being sold near schools in Tamil Nadu was Sri Thambidurai ji. I can't see him here. He had observed it, but I need to say that there is an act from 2003, KOTPA, which is the Cigarette and Other Tobacco Products Act 2003. A provision has been made to prohibit the sale of tobacco products to an individual below 18 years, and this would apply to 100 yards around a school that it cannot be sold. Guidelines of the Tobacco Free Education Institutions guidelines were also issued in 2019. So I would want to highlight to Honorable Member Thambidurai that GOI, Government of India, conducts Tobacco Free Youth campaign every year since 2023. Maybe greater awareness is required in Tamil Nadu. Sri Shivadasanji had raised this thing about lottery. I'm not sure I should be answering this here because this bill has nothing to do with the lottery system, sir, but he has raised it.
I just want to highlight the fact, sir, that the 56th meeting of the GST Council, which was held this year on 3rd September, when the new generation GST decisions were made, which is much welcomed by everybody. The GST at that time had recommended, the council had recommended, increasing the GST rate on supply of lottery tickets from 28% to 40. As I said, 28 doesn't exist anymore. Lottery cannot go to 18, so it went to 40. But of course a delegation came and met me saying from Kerala, no, this will affect because a lot of people who are selling these tickets are poor people and so on. So this decision of the GST Council was unanimous. In Kerala, sir, the lottery is run by the state government. The supply happens within the state, and therefore there is no IGST also involved. It's all entirely state governments. And the SGST collected entirely is retained by the state. And 50% of the GST collected will go to the 41% will go from the CGST proceeding to the state. Now, it's a very considerate and very, humanitarian touch that these people will suffer. But the tax is on the state government. It's not on those people. And the state government gets the revenue. I'm sure the state government will be broad-minded enough to please give something to the people now that everything is coming down and take care of their own citizens, because that is something which is well within the state government's limit. Sir, the other most important point which I wanted to, there are few more replies that I have to give, sir. Sri Girirajan, I'm not sure he's here now. So he said middle class is unhappy, there is high inflation, salaried class is being penalized. So this is an excise duty, tax is being imposed on cigarette smoking. I am not sure how I'll be able to answer that. Sir, and also, inflation is high. So inflation, CPI is below 3%. Below 3%. And in the last 6 months, it has remained well before the tolerance limit which is given under the FRBM. So even now, if I have to answer on high inflation, it's a bit difficult. We can always reserve it for the day when really inflation is much higher than the forbearance limit. And Honorable Member Arun Singh ji has spoken elaborately about the GST next generation. So the GST cuts have actually benefited people on their daily use items. I've been going, wherever I go to the local shops and ask them, are customers coming, are they buying, are they asking questions about how much the rate has come down on that particular commodity that they want to buy, or you are helping them to understand. Everywhere I'm getting reports that yes, the rates have come down. So I just want to, in fact, the last visit was in your town, sir. Not so much Tirupur, but in Coimbatore. And the grocery shop, people do tell me that people are. In fact, I went to the grocery shop owner's house because he said, not just my shop, please come home. There he had assembled a group of people from that neighborhood. One small family, sir, said my monthly grocery bill used to be something like 4,280. Now it's actually come down to 3,100 rupees. And they were actually happy. There are, you please go check it up with the people who I met. I'm not lying here. All right. Sorry? Sorry? Are you saying I'm lying? I'll give you the address of the people. Please go visit them. In Coimbatore, sir, your own state. So, sir, there is a very clear message that the rates are coming down. So in this debate of excise, where I'm going to impose the excise duty on cigarette smoking, suddenly if I have to answer these issues, I thank actually Sri Arun Singh ji, who's spoken on detail about it. Sir, again,
the issues raised by Honorable Member Sagarika Ghosh pertain to the Manrega, very valid, very relevant, very sensitive, important for West Bengal. We've answered this several times. Now I'm answering on excise, but the issue has been raised. So I will answer it, sir, just as I've answered a member from Tamil Nadu. Sir, as per the Manrega Act 2005, it is the responsibility of the state government to ensure transparency and accountability in the implementation of the scheme. Based on central team's inspection reports highlighting implementation issues, the Ministry of Rural Development had sent several communications to the state saying, please do the rectification. I'm told there's still some rectification pending. Consequently, the funds were stopped since March 2022 under Section 27 of the Act due to non-compliance with the central government's directives. The latest action taken report, sir, dated 11th July 2025 this year, the West Bengal state has reported completion of recoveries of 4.81 crores identified by the central teams in 4 districts, which means the central team pointed out something, after which the correction and rectification work is started. They've collected 4.81 crores from 4 districts, along with the status of the disciplinary action initiated in this regard. This itself, I think, is an admission that things were misused. All right, sir, of Manrega. Subsequently, No. You got your own opportunity to speak now. Minister is not interested in the reply. After my giving the reply, you raise more issues. No. Nothing will go on record except minister's reply. Sir, ministry subsequently, thank you, sir. Please do listen to the reply and then you may permit them to ask more questions if you want, sir. Subsequently, the Ministry of Rural Development, again a letter on 11th November 2025, requested the state government to furnish a comprehensive action taken report with regard to the total districts of the state along with the details of financial recoveries made, disciplinary proceedings which have been taken, criminal action, and all other corrective measures undertaken by the state. Sir, between 2006-07 to 2013-14, the central funds which were released to West Bengal under Manrega stood at 14,985 crores. 2006-07 to 13-14. Now, between 2014-15 to 21-22, comparable number of years, our government has released 54,416 crores, which represents a 261% increase in Manrega alone. 14,985 compared with 54,416. 261% increase, irrespective of the fact that we are still asking them for taking action where things have been pointed out as not right. So the commitment of the central government as regards Manrega beneficiaries in the state of West Bengal is absolutely there, and we expect that this transparency with which we want to handle it will continue. Now, further, the Honorable Member has said Central Road and Infrastructure Fund is not being transferred. I want to just highlight, sir. 24-25 RE, 25-26B, the government has so far transferred 13.25 lakh crores since 2002 to 2003. 2002-2003 down to 2025-26, 13.25 lakh crores has been transferred under this head.
Central Road and Infrastructure Fund. How much was collected, sir? Because it's a cess? No, it's a fund collected. 12.62 lakh crores were collected in the same period. Collection is 12.62 lakh crores. What went as under this head to Bengal is 13.25 lakh crores. No, total. No. She is not yielding. You please, please, my dear. You will get your chance when you are speaking. It is for the minister to reply now. I'll finish, sir. I'll finish and then you can. Yes. My dear. You understand. Sir, I'm talking to you only, sir. Further question was raised. No. Oil industry. No sound from this side. No cross talking. No. You please sit down. Let her complete her reply. Please. Sir, thank you very much, sir. I want the other point which was raised by the honorable member was Oil Industry Development Fund, OIDF, has not been transferred for appropriate usage. I want to say, sir, an action taken note was conveyed to the PAC, Public Accounts Committee, that since the government has been financing various activities under the budget, nothing will go on record except the minister's reply. An action taken note was conveyed to the Public Accounts Committee that since the government has been financing various activities from the budget which qualify as development of oil industry within the purview of the Oil Industry Development Act of 1974, and in view of the emergent situation of energy security, such expenditure is likely to increase in the near future. It was therefore further stated that these activities have been financed through the resources of the GOI, of which cess under the Act is a part. But to avoid further confusion, government has decided to constitute Oil Industry Development Fund as per the provision in Section 18 of the Oil Industry Development Act of 1974. The fund has been created in public account of India and has been operationalized from 24-25, financial year 24-25. An amount of 17,730 crore and 19,376 crore was provided for transfer to the OIDF, which is the Oil Industry Development Fund, in the RE of 2024-25 and in BE of 25-26 respectively. So on the Oil Industry Development Fund, I've given you what has happened and how much fund has been transferred. The fund creation also to enable specific oil development activities to be funded from the fund rather than from the budget. So that has been explained, sir. So next, also from Honorable Member Sagarika Ghosh, is don't neglect West Bengal. So I want to say, sir, don't neglect is not necessary at all. I'll tell you the kind of things we've done for West Bengal. Sir, West Bengal has never been... No, they don't want to hear this. No. Madam, this is not correct. What is it? She said you can ask after. No, I'm not saying anything. You please sit down. You have elaborately you talked on this bill. You please be seated. Let the minister continue her reply. Sir, West Bengal has never been... Nothing will go on record except the minister's reply, please. Sir, West Bengal has never been ignored by this government. In fact, it is Trinamool Congress which is hurting the growth of the people of West Bengal. I repeat this. It is in fact the Trinamool Congress which is hurting the growth of West Bengal. Sir, I'll give you a classic example for that. West Bengal withdrew from Ayushman Bharat scheme
Recently, I answered a question to one of the honorable member of parliament about the number of industries which have left West Bengal. In fact, off the cuff, I can even tell you, sir, subject to correction, 1947, when India got its independence, the contribution of West Bengal for industry in the country's GDP was somewhere in the range of 27%, subject to correction. I can get in the papers. But today it has come down to minimum 3%, sir. Is that West Bengal government? Sir, industries are leaving West Bengal. I've answered a member of parliament's question. I wish I can get that copy so that I can read the exact numbers. I wish my people in the gallery can give me the letter so that I'll present it to the table office here. You need not answer to them so elaborately. You please understand. People are suffering. Go back to Sir, your... people are suffering. No, it's not correct. When she was speaking, when she was speaking, she was not disturbed by anyone. Don't do this. This is becoming your habit. That is not good. Sir, nothing will go on record except minister's reply. Sir, I will give you data. Equally, I'll give you my personal example, sir. In my family, there's a member who lives in Kolkata. They wanted to just whitewash their house and paint the doors. They got the paints. They wanted to do it. There were people who came to the house. Minister, kindly be very specific. No need to answer to all their observations. You please address to me. To you, sir. Sir, 5.94 lakh crores has been given under tax devolution since 2014. Till now, 4.4 times increase versus 1.34 lakh crores given during 2004 to 14. 2004 to 14, sir, 1.34 lakhs. Now, since 2014, 5.94 lakhs has gone to Bengal under tax devolution. So, comparison देखिए, sir. Then, Finance Commission did not tell us to give SASCI funds, which is given for 50 years, interest-free. 24,000 crore has gone to Bengal under SASCI, sir. Not under Finance Commission recommendation. Prime Minister Modi's desire was recovery after COVID should be good. So, Bengal received 24,000 crores. No point about it. When the minister is replying... 11 medical colleges have been opened in West Bengal, sponsored by centrally sponsored scheme. That is our scheme. 11 medical colleges. Railways, sir. Under the NDA government, West Bengal received a record budgetary allocation of 13,955 crore for railway projects in the year 25-26 alone. Just 1 year. Which is over 3 times the average outlay of 4,380 crore during 13,000 sir, which is over 3 times the average outlay of 4,380 crore during 2009-14, sir. I told you, sir, about the number of companies which have left West Bengal. I give you the data, I will authenticate it, I have no problems. From 1st April 2011 to 2025, 30th September, 448 listed companies have left Bengal. 6,447 companies, unlisted companies have left Bengal. Madam, I think we can stick to the Central Access Amendment Bill alone. This is the data that I'm giving. Honorable Minister, I think you can now stick to the Central Access Amendment Bill. Please, you address to me and conclude. Other than that, sir, 101 Amrit Railway Station
stations, sir. 101 Amrit stations at 3,847 crores are being developed. 1,650 kilometers have been electrified. 98% have been electrified in the entire Bengal. 2,000 kilometers, 2,300 kilometers of national highway constructed in Bengal since 2014. Sir, other than this, Bagdogra Airport development in Siliguri at an estimated cost of 1,490. Honorable Minister, you please reply only regarding the Central Excise Amendment Bill. Please conclude. Any further, sir? Yes, please. So the excise bill will have to be considered by this honest August House and passed. Thank you very much. The question is that the Central Excise Amendment Bill 2025 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 is adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman ji to move. To move. Sir, I stand to request that the bill be returned, sir. That the bill be returned. Motion moved. The bill is that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is returned. Special mentions, Sri Sanjay Kumar Jha. पति महोदय, मैं प्राचीन नालंदा महाविहार विश्व की प्राचीनतम ज्ञान परंपराओं और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक आदान प्रदान का प्रतीक रहा है। वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से भारत सरकार इसे पुनः विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु सतत प्रयासरत रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय ने 40 से अधिक देशों के साथ शैक्षणिक व शोध सहयोग स्थापित किया है, जिनमें आसियान, बिम्स्टेक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देश शामिल हैं। यह नालंदा की ऐतिहासिक भावना, ज्ञान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता का आधुनिक पुनरुत्थान है। विश्वविद्यालय साउथ एशियन स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडीज, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक शोध का प्रमुख केंद्र बन रहा है। 2023 में नालंदा के प्राचीन अवशेषों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने से इसकी अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकित हुए, जिससे यह वास्तविक रूप से बहुराष्ट्रीय परिसर के रूप में उभर रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और कल्चरल डिप्लोमेसी के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय आसियान, बिम्स्टेक क्षेत्रों के लिए साझा अकादमिक मंच बनकर भारत की विश्व गुरु की भूमिका को मजबूत कर रहा है। मेरी सरकार से ये मांग है कि इसे वैश्विक रिसर्च हब बनाने हेतु संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अवसंरचना और परिसर के संरक्षण एवं डिजिटल पुनर्रचना को और सशक्त किया जाए। वैश्विक शोध नेटवर्क के साथ संयुक्त अनुसंधान को और बढ़ावा दिया जाए। परिसर के संरक्षण, डिजिटल पुनर्रचना और वैश्विक पर्यटन शिक्षा मॉडल को भी सशक्त किया जाए। नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्णोदय केवल बिहार या भारत का गौरव नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की साझा बौद्धिक विरासत का पुनर्जागरण होगा। बहुत बहुत डॉक्टर संदीप कुमार पाठक।
थैंक यू वेरी मच सर। मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण, चिंताजनक और लंबे समय से उपेक्षित बुनियादी ढांचे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पंजाब के तलवाड़ा शहर और उसके आसपास के गांव जैसे हाजीपुर, गढ़शंकर, मुकेरिया, बहरामपुर और अन्य पिछले 40 सालों से रेल सेवा के वादे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 1981 में घोषित इस 84 किलोमीटर लंबे नंगल तलवाड़ा रेल प्रोजेक्ट पर अब तक लगभग 2000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन आज भी स्थानीय लोग अंतिम चरण तलवाड़ा तक रेल पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस देरी का कारण स्थानीय लोगों को न केवल यात्रा में कठिनाई होती है, बल्कि इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास भी रुका हुआ है। मेरी सरकार से यह मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। श्रीमती गीता लैच चंद्रप्रभा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के जिला मुख्यालय सहित प्रमुख कस्बों में सीवरेज सहित अन्य जल निकासी व्यवस्थाओं का अभाव है। जनपद के प्रमुख कस्बे जैसे बिधूना, अछलदा, दिव्यापुर, फफूंद आदि में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने के कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल भराव से उत्पन्न होने वाले मच्छरों एवं अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास निकलने का पर्याप्त रास्ता नहीं होता है। स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को जल भराव की समस्या का सर्वाधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा संचालित अमृत योजना या शहरी क्षेत्र में जल निकासी तथा सीवर से संबंधित किसी अन्य योजना के अंतर्गत औरैया जनपद के प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज तथा जल निकासी की सुविधाओं को विकसित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। It is now 6 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. till the disposal of today's listed business and the special mentions permitted for today. Do I have the leave of the House to extend this sitting beyond 6 p.m.? Yes. Continue, madam. अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा संचालित अमृत योजना या शहर क्षेत्र में जल निकासी तथा सीवर से संबंधित किसी अन्य योजना के अंतर्गत औरैया जनपद के प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज तथा अन्य निकासी की सुविधा को विकसित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। श्री रामचंद्र जंगरा। एक अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजकल कृषि क्षेत्र में अति घातक कीटनाशक व खरपतवार नाशक केमिकल किसानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कृषि भूमि को अति जहरीला बनाते हुए प्राणी मात्र के लिए विनाशक सिद्ध हो रहे हैं। कुछ केमिकल तो इतने विषैले हैं कि अगर उनके छिड़काव किए हुए या डाले हुए स्थान से 1 सप्ताह तक गलती से कोई घास निकालकर पशुओं को डाल दे तो पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार आजकल किसान मेड़ों या सिंचाई के लिए प्रयोग होने वाली नालियों में उगे घास को किसी कृषि उपकरण से उखाड़ने की बजाय वहां पर उगे घास को समाप्त करने के लिए एक केमिकल का छिड़काव कर देते हैं। यह केमिकल इतना घातक होता है कि जहां छिड़काव होता है वहां जमीन स्पंज की तरह नरम हो जाती है तथा जमीन के नीचे 1.5 फुट की गहराई तक चूहा या सांप वगैरह होता है, वो भी मर जाता है। कुछ दिन पहले एक किसान सुबह सवेरे खरपतवार घास छिड़काव करके चला गया। थोड़ी देर बाद एक चरवाहा वहां अपनी भेड़ें को चराने के लिए आ गया। वहां के घास को खाते ही उसकी 45 भेड़ें मर गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके साथ उगे अनाज के पौधों में उसका कितना असर जाता होगा। जिस अनाज को पशु इंसान सभी खाते हैं उसमें कितनी विषाक्त और बीमारियां आती होंगी। कृपया सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, किसान को प्राकृतिक खेती की तरफ प्रोत्साहित करे। श्री गोल्ला बाबूराव गारू। Before I start the special mention, I want to thank the BJP government and Health Minister Sri Nadda ji for starting an innovative program, Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme, to the scheduled castes and scheduled tribes. The government is implementing Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme to provide medical treatment to patients suffering from serious health problems relating to kidney, heart
liver, cancer, brain hemorrhage, etc. for SC and STs. It is a very good scheme for the poor SC STs. Under the scheme, 100% of the estimated cost of the treatment is given to the concerned hospital. But there are various limitations, and one of them is family income of SC STs should not exceed 3 lakhs only. Secondly, if one looks the money given for the various surgeries, treatment, it appears to be insufficient. For example, the following amounts are being given: the heart surgery 1.25 lakhs, kidney surgery 3.5 lakhs, cancer 1.75 lakhs, brain surgery 1.5 lakhs, kidney transplant 3.5 lakhs, spinal surgery 1 lakh. The rates for various surgeries are just a fraction of the real cost for important surgeries and treatment. Government is saying that 100% of the estimated cost of the treatment is directly released to the concerned hospital. But the real estimated cost is much more and more. Not only this, income limit fixed for the family is also too low, which is only 3 lakhs per annum for family income. Hence, I request the government of India to revise the family income limit to 10 lakhs and also increase the limit for various treatment surgeries to at least on par with the rates of CGHS. Thank you. श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक अहम मुद्दे को यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ। गुजरात के भावनगर जिला के धौला रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ब्रिज का काम काफ़ी समय से विलंब में पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपये खर्च हो गए हैं, थोड़ा सा ही काम बाकी है। यह काम लंबे अरसे से नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर समय मर्यादा में अगर काम नहीं पूरा करता है तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रावधान है, रिस्क एंड कॉस्ट से ये काम पूरा करवाना चाहिए। मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि रिस्क एंड कॉस्ट पे भी जरूर पड़े काम करके इस ब्रिज का काम तुरंत पूरा करना चाहिए। सरकार ब्रिज का काम पूर्ण होने की वजह से ट्रैफिक जो वहाँ पे अभी जो प्रॉब्लम्स हो रहा है सर, 2 रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ता है और लंबी लंबी कतारें वहाँ लग जाती है और पूरा ट्रैफिक इससे प्रभावित होता है। अतः आपके जरिए मेरा पुनः सरकार से अनुरोध है कि सरकार तुरंत ही धौला ओवरब्रिज का जो काम थोड़ा बाकी है उनको पूरा करे। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री संजय सिंह जी। डॉक्टर संगीता बलवंत जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपके सभापति बनने के बाद प्रथम बार मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसलिए आपके अभिनंदन के साथ मैं आपको बधाई देती हूँ। माननीय महोदय, सदन के माध्यम से मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर बीमारी की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। यह बीमारी मांसपेशियों से संबंधित बीमारी है, जिसमें जो बच्चे या वयस्क इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, उनकी मांसपेशियां कमजोर होने से वह धीरे धीरे पूर्णतः दिव्यांग हो जाते हैं। इस बीमारी के इलाज का खर्च बहुत ज़्यादा होने के कारण अधिकांश मरीज अपने इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। इलाज के अभाव में वह पूर्णतः दिव्यांग हो जाते हैं और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती है। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मांग करती हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के मुहिम को पूर्ण करने हेतु संपूर्ण भारतवर्ष में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों एवं वयस्कों के समुचित इलाज हेतु न्यूनतम दर पर दवाओं का प्रबंध किया जाए। साथ ही मरीजों के जीवन यापन में सुधार हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे इस गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके परिवार वालों को मदद मिल सके। धन्यवाद। श्री मदान राठौर जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक सामाजिक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, और वह है बच्चों और युवाओं में बढ़ती आक्रामक प्रवृत्ति और हिंसात्मक व्यवहार।
आज के समय में विद्यालय जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों में भी छात्र एक दूसरे पर चाकू से हमला कर रहे हैं। मारपीट की घटनाएं आम होती जा रही है और यह प्रवृत्ति केवल महानगरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल चुकी है। हाल ही में एक स्कूल में एक छात्र द्वारा अपने सहपाठी पर चाकू से हमला करने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। देश भर में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में एक छात्र ने परीक्षा में कम अंक आने पर स्कूल में तोड़फोड़ कर दी और मुंबई में एक 15 वर्षीय छात्र ने गेम न खेलने देने पर अपने पिता पर हाथ तक उठा दिया। इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। परिवार में संस्कारों की कमी, सामाजिक और डिजिटल मीडिया से आने वाली हिंसात्मक सामग्री, नैतिक शिक्षा का अभाव, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा, माता पिता के बच्चों से संवादहीनता। यह महज एक सामाजिक चिंता ही नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी है। यदि हम आज नैतिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और परिवार की भूमिका को लेकर सजग नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ी एक संवेदनहीन समाज की ओर बढ़ती जाएगी। अतः मेरी आपसे विनम्र अपील है कि विद्यालयों में नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों को पुनः अनिवार्य किया जाए। शिक्षकों और अभिभावकों के लिए संवेदनशीलता कार्यशालाएं आयोजित किए जाए। छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग कंटेंट्स पर निगरानी और मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती माया नरोलिया, नहीं, श्री I.S. इनबदुरई, डॉक्टर मेहता विश्रम कुलकर्णी जी। Thank you, Honorable Chairman, sir. My subject is circulation of AI-generated and morphed obscene content of Hindu gods and goddesses on social media and the urgent need for a Hindu faith protection law. Honorable Chairman, sir, I wish to draw the attention of this august House to a deeply disturbing and sensitive issue. In recent months, social media platforms and several internet sites have witnessed a surge of AI-generated, morphed, and deepfake nude and obscene images and videos of Hindu gods and goddesses. Reports indicate that a large number of Hindu deities are being deliberately and systematically targeted by certain miscreants with malicious intent, clearly aimed at hurting religious sentiments, provoking communal tension, and destabilizing social harmony across the country. Sir, the misuse of artificial intelligence, deepfake tools, and sophisticated image manipulation technologies have opened a dangerous new front in cybercrime. Religious icons and sacred imagery are being distorted and circulated with impunity, revealing not only the inadequacy of current legal frameworks, but also the urgent need for stronger accountability mechanism for digital platforms. The scale, coordination, and intent behind these activities show a planned attempt to malign Hindu faith and undermine cultural unity. In this context, I urge the government to take the following steps. Launch immediate, strict, exemplary action against those creating or circulating such offensive content. Mandate social media companies to deploy proactive AI-based detection, swift takedown systems, and stricter verification protocols for sensitive content. Formulate a strong and comprehensive Hindu faith protection law or anti-blasphemy law with stringent provisions against AI-enabled religious defamation. Establish a special cyber task force dedicated to religious discretion cases. Protecting our faith, cultural dignity, and social harmony is our collective constitutional responsibility. I request urgent intervention from the government. Thank you, sir. श्रीमान मोहम्मद नदीमुल हक जी।
Thank you, sir. So my subject is need to boost manufacturing sector amid global uncertainty. The economic growth of the country continues to be adversely affected by the stagnant manufacturing sector. In India, the manufacturing sector contributes to just 17% of the GDP. Even if you look at the decadal figure, the contribution of the manufacturing sector to the overall gross value added has been around 17 to 18% for the last 10 years. We have not achieved the scale necessary to drive employment, exports, or technological upgradation, which would integrate the Indian industries into the global manufacturing network. If we look at the global picture, India has only 3.3% share in global manufacturing output, which is disproportionately low for the world's fifth largest economy. One major reason is that India is still not integrated well into the global value chains, GVCs, while GVCs make up about 2/3 of all world trade. The current global context necessitates such participation. The US-China strategic rivalry, new tariff and non-tariff barriers, and recurring disruptions in key shipping corridors such as the Red Sea have increased uncertainty in cross-border supply chains. Further, in the year 24-25, merchandise trade deficit increased by 17% to US $282.8 billion from last year. This raises concern about the increasing import dependence of the country. Without reducing logistics and input costs and building domestic capacity in high import sectors, India's manufacturing sector remains exposed to external shocks and cost volatility. I urge the government to look into it. Thank you, sir. श्रीमान रामजी लाल सुमन जी, श्रीमती रेखा शर्मा जी. Thank you, Chairman, sir. Sir, I rise to draw the attention of the government to a pressing challenge. As India positions itself as a global leader in science, technology, and innovation, as the persistent underrepresentation domestic capacity Hindu stringent only 3.3% share in global manufacturing output, which is disproportionately low for the world's fifth largest economy. One major reason is that India is still not integrated well into the global value chains, GVCs, while GVCs make up about 2/3 of all world trade. The current global context necessitates such participation. The US-China strategic rivalry, new tariff and non-tariff barriers, and recurring disruptions in key shipping corridors such as the Red Sea have increased uncertainty in cross-border supply chains. Further, in the year 24-25, merchandise trade deficit increased by 17% to US $282.8 billion from last year. This raises concern about the increasing import dependence of the country. Without reducing logistics and input costs and building domestic capacity in high import sectors, India's manufacturing sector remains exposed to external shocks and cost volatility. I urge the government to look into it. Thank you, sir. श्रीमान रामजी लाल सुमन जी, श्रीमती रेखा शर्मा जी. Thank you, Chairman, sir. Sir, I rise to draw the attention of the government to a pressing challenge. As India positions itself as a global leader in science, technology, and innovation, as the persistent underrepresentation of women in science, technology, engineering, and mathematics field, particularly in the frontier areas such as artificial intelligence, technologies, and advanced engineering, while our nation has made significant strides in expanding access to education, the transition from STEM classroom to career in high-tech sectors remain uneven for women. Although women constitute 43% of STEM graduates, only around 14% of researchers are women. This stark decline highlights the social constraints, institutional issues, and structural barriers that young women encounter. Many face limited mentorship, fewer opportunities for professional growth, and subtle hiring prejudices that hinder the participation in cutting-edge research, innovation, and high-value technologies roles. To address this gap, I urge the government to expand scholarship schemes for women pursuing advanced research degrees, particularly PhDs and postgraduate programs. Partnership with industry should foster women-focused fellowship in AI, semiconductor design, cybersecurity, and deep tech R&D. Educational institutes should be mandated to publish annual reports on gender inclusivity, mentorship programs, and placement outcomes in STEM, promoting transparency and accountability. India's technological future can't be built on half its talent. It is our collective responsibility to ensure that girls and women from every region, background, and income group have equitable access to opportunities in STEM. Empowering women in science and technology is not merely a question of fairness. It is essential for the nation's innovation and growth. Thank you, sir.
The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 5th December 2025.
Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in this session. Shriman Pramod Mukherjee, I
Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in this session. Chairman Pramod Mukherjee, thank you very अरुण सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं जो केंद्रीय उपासक संसदीय बोर्ड Shakarika Ghosh. Thank you, Mr. Chairman, sir. On behalf of all the Professor Speakers, Sir 7
Thank you, sir. No. Please. I'll request you to go to your place. Please, Professor. Sri Medha Raghunatha Reddy. Mani Niranjan. Bill 2025. Sir, the Central Excise Act 1944 historically served as the backbone of India's indirect system.
Dr. M. Thambidurai ji. The subject is Central Excise Amendment 2025. Central government which required. Thank you. Thank you. Dr. Ravi Chandra Baddi Raju. Thank you very much, sir. Thank you, Ravindra. Sri P.P. Sunit. Sri P.P. Sunit, not linked. Sri Sanjay Shetty. करता हूं। बहुत धन्यवाद श्रीमती जेबी माथेर हिशम नॉट लिंक्ड जय भारत। धन्यवाद माननीय श्री गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया।
समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद भाई। नाउ श्रीमती जेबी माथुर जी, डॉक्टर भागवत कराड़। माननीय उपसभापति महोदय, आज धन्यवाद डॉक्टर कराड़ जी। श्री मस्तान राव यादव। Thank you, sir. थैंक यू श्री मदन राठौड़ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राठौड़ जी। ऑनरेबल श्री जी के वासन। Well, sir, thank you.
Thank you, Vasan Saab. Dr. Ajit Madhav Bhushai. बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। श्री हरीश जी। महत्वपूर्ण बिल है, महत्वपूर्ण विधेयक है, ऐसे विधेयक पर चर्चा करना Honorable Member Shri Harish Biran. Honorable Member Shri Amarpal Maurya.
जिनका मैं समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सानंद जी। Air India. Thank you, sir. Thank you. Sri Mahendra Bhatt ji. और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। श्री धनंजय भीमराव जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। डॉक्टर सुकुमार जी। Dr. V. Sivadasan, please. Your time is over. Please, Dr. V. Sivadasan.
டைம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. கேளு, நாளைக்கு வரட்டான்னு கேளு. நீ கேட்டியா? கேளு ராஜா, 3 நாள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம்ல. வெள்ளி சனி அவங்க எழுதி கொடுக்க போறாங்கன்னாங்கல்ல, அப்புறம் வந்துட்டு பண்ணலாங்கிறாங்களா? சரி போடு. அந்த தம்பி பாட்டு ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்களா? ஏன் அவங்க ஸ்டார்ட்
टेक्निकल एरिया से दो दोस्तों की मुलाकात हुई।
Questions. Back. Of course. Charlie, Charlie, speak, speak, second, second, second. I said I will be so above it. Moscow, Moscow, no. Yeah. Totally. I remember. No, another also.
Of course, he said, yeah, of course, he's so much. Moscow. Salah, ini apa? वीरान में रह गया Those coin Bucky yes gosh it's okay I was with I really follow
This would be very price. I will listen to that. Yeah.
talks and video. This is covered. We are trying to handle the situation that happening in sport. What you know, because we can prove it is fair to be super and also a seat. So it must be false. Right now it just comes doing one difference is this. Do that. So, what are you taking to enjoy with this. आप सभी के सामने माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मनसुख भाई पटेल
Guten Abend, entrete Maria Pinheiro, fazendo votações mais. Horror. Everyone say what? Is that important for you? Please say your absolute crazy. Social security intelligence technology relevant
Why? How can do for how many decades? Stop. Because English is his primary language. Yes, because the मातृभाषा है मेरी इंग्लिश strongly multiple if you are very you can become most English. Hindi is very beautiful out. Automatically it's vocally everywhere. Yes. I will tell you. Yeah, yeah. Yes, she does. Yeah. They kind of who's like yeah. There is enough time to read it also. One is जनरल स्टेनलेस इसके सीईओ मिस्टर तरुण कुलदे जी, हमारे जी वी के राजा जी, मिस्टर राहुल गुप्ता फ्रॉम IRC, distinguished dignitaries and dear friends. First of all, I'm giving my special best wishes to all of you because today is World Tunnel Day. This is very important not for you but for the country. This is the time that we are very seriously considering a lot of tunnels for making our highways, express highways, our traffic, which is very congested between urban cities like Bangalore and Delhi, where we are planning to think on that line. So definitely today's discussion and today's vision for the future is very, very important. The most important thing in the tunnel field is the technology and the cost. Anywhere the technology is very important. The proven technology, economic viability, and at the same time, with economic viability, we need to find out the appropriate finance for that, because without that we cannot make projects successful. So my request to all of you that first of all regarding tunneling machines, we need a lot of capital investment, and that is one of the reasons that the cost of the tunnel is very high. In the urban area, particularly Bangalore, Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, where we are seriously thinking on the line for decongestion of the traffic, if we can go by the way by using tunnels. But the most important problem is the cost of the tunnel is very, very big problem. As far as the capital cost is concerned, if we can reduce the cost of the machines, particularly tunneling machines, then it will be more easy for you to get the work done with the cost. Also, I want to suggest one thing. Just 6 months before I was in Spain, and Spain is a country which is known for successful implementation of big tunnels. And in big cities, they have tunnels at the same time there is underground parking, 4 floor, 6 floor parking, underground road. It's really very, very unique idea by which we can make it economically viable. There are a lot of companies now. They have their tunneling machines and they are ready to give their machine on with a different system, whether it is on rental basis or they want to sell it, and that where we can reduce the cost. The reformation of the tunnel, particularly in Indian scenario, where we need the good technological companies, where we can make it. So first thing is making new machines with reasonable cost. The second option is the machine which are available in the world. The second machine we can make in India, and here we can make the components and we can make that machine useful. That can be a second option. I feel that our country is the most important economic development in the world. The mission of the Prime Minister to make Indian economy as the third largest economy in the world. And for that reason, we need good infrastructure. And for good infrastructure, we need good roads, good bridges. At the same time now, it is good tunnels. We are already in the process of a lot of tunnels which we are planning only for our department. They're costing more than 2 lakh crores. But now even we want to increase the tunnel potential, particularly in the urban area. For that reason, the economic viability, but the cost of the tunnel is very important. My request to all of you that how we can make machines available with a reasonable cost. How we can make old machine by using our technology in post and making components in India. How we can make that machine useful. At the same time, if suppose a lot of companies were actively interested to start the manufacturing in India, one of the companies already they have started the manufacturing tunneling machine in Chennai, in India. So my request to all of you, without reducing the capital cost of the machine, it cannot be possible to make the project economically viable. We have different part of trade area available in the country. The particular BlackRock is a different part, and in Holland and in the also different type of problems we are facing. We need to have all options and appropriate vision on implementing this technology, which is useful for the country. It should be import substitute, cost effective, at a reasonable cost, and particularly if it is to be indigenous. By making designs, by making new initiative, by making new initiative, we can make new machines also. There are a lot of people and IITs, engineering people are doing a lot of research work. On the basis of that in Indian scenario, if we can find out the way out, it can be a great thing for the country. I feel that the projects are ready.
As far as the capital is concerned, we have a big budget, no problem. So we monetize our road, and that is the resources, financial resources is not a problem. The problem is only the cost. Because without cost, we cannot maintain economic viability. I understand the government is ready to give some 40% support for that, but at least giving up to 40% support, it should be economically viable is very important. The IRR of the project is depending upon the capital cost. The interest cost is also equally important. And the indigenous contractor, their capability is also good. But somewhere, if suppose we have to make the joint venture with the international companies. Now, in particular in the European countries, their designs are very costly. We have to maintain this, we have to take all safety measures, but at the same time, we need to think on the line that is whether it is affordable or not. Without compromise with the quality, without compromise with the particular security, we have to think about the cost. The cost, reasonable cost with good quality, by taking all preventive measures of safety, we need to find out the appropriate solution for this problem. I'm really happy that all people who are particularly are the expert of this subject. Now the railway has got a lot of proposals, the metro has got a lot of proposals, the hydroelectric project have got a lot of proposals, the NHIDCL, the NHI, the ministry, we have got a lot of proposals, the state government has got a lot of proposals. If suppose in the future, if you are going to reduce the cost by making availability of reasonably good quality machines, 100% we can reduce the capital cost of the project, and that is very important. So today's this World Tunnel Day is really one of the important days for the world. But at the same time, in the Indian situation, it is also equally important. Today, our ministry, particularly NHIDCL, we are making a lot of tunnels in Kashmir, we are doing a lot of tunnels in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, in Northeast area. At the same time, in many areas where we are now trying to find out the way out. Previously, it was the thinking in the mind of the government. The cost of the tunnel is very high, but today there is a slightly change in the approach. Now the vision is without tunnel there is no option. Because forest and environment clearance for the forest is getting very difficult. So in the forest area also, we are now planning to make a tunnel. I remember one of the important forests in particular connecting Karnataka from Mysore area to Kerala. I don't remember the name of the project, but now we have decided to make a tunnel there. And we are now trying to have a joint venture, a joint approach with the railway, where we can reduce the cost. So the railway ministry and our ministry also, we have one of the important study group is there, which is headed by the railway chairman and our secretary, and we have found out the solution on the basis of the Shakti platform. That's how we can reduce the cost. So my suggestion is the different options are there. The futuristic vision for the development with the appropriate technology without compromising with the security by reducing the cost. That is the option. So today it is very important that your vision is going to helpful for the ministry to plan for the future. I'm really happy that today I'm here to have interaction with you. I'm very sorry because at 2 o'clock the Russian transport minister is coming to my house. I have to attend him, and that is the problem with me. Actually, I was in Parliament. I have a lot of questions in the Parliament. After that, I come here. I have a meeting with the member of Parliament. So today the time was really difficult for me, but it is important for me to explain the futuristic vision with all of you who are the experts of this field. And your visualization, your vision, your planning for the future, which is very, very important for the country. I am giving my all best wishes to this conference, and your all this thinking and your vision for the future development is going to be helpful for Indian infrastructure of world standard. Once again, I am giving my all best wishes to all of you for the World Tunnel Day. Thank you very much. Namaskar. से आपका क्या योगदान हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमें थोड़ा ध्यान में होगा कि हम लोगों ने लगभग 100 दिन का टीबी मुक्त भारत का कार्यक्रम लिया था पिछले साल 7 दिसंबर 2024 से लेकर के, और हमने 17 मार्च 2025 तक ये कैंपेन हमने चलाया था। इस कैंपेन से बहुत अच्छे नतीजे आए थे, और जब अच्छे नतीजे की बात हम कह सकते हैं तो इंसिडेंट्स के नंबर ऑफ डिटेक्शन तो बढ़ा, क्योंकि हम लोगों ने जो मिस्ड आउट थे, जो रह गए थे, जो जिनको हम उनको पकड़ नहीं पा रहे थे, यानी उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको तो हम लोगों ने डिटेक्ट किया। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है 2025 का, उसमें पिछले 10 साल में जहां प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 237 इंसिडेंट्स पाए जाते थे ट्यूबरक्लोसिस के, अब वो घट करके 187 रह गए हैं, यानी 42 पॉइंट्स कम हो चुका है।
महिलाओं के रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और दिल्ली वासी भी देश के खान पान संबंधी विरासत से रूबरू होंगे। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आपके अटूट समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं ग्रामीण विकास सचिव आदरणीय श्री शैलेश कुमार सिंह जी का भी अटूट समर्थन के लिए उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थान के अधिकारियों का इस मेले के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। मैं इस मेले की अत्यधिक सफलता की कामना करता हूं और आप सभी लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए इसी के साथ कहते हैं कि हर बड़ी सफलता की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे कदम से। लखपति दीदी बनने की सशक्त यात्रा एक लघु फिल्म के माध्यम से आइए देखते हैं स्क्रीन पर अब।
Oh, Jaishankar. கீதாமா உணவுல என்ன இருக்கு? உணவுல என்ன இருக்கு? ஆ ஆ சப்பாத்தியும் ப்ரான் கிரேவி சாப்பிட்டியா? ஆ ஆ Welcome. To open the proceedings for today and to set the tone for today's discussions, we begin with welcome remarks from Professor
Self-reliant and globally competitive economy. It is my honor to invite Shri Piyush Goyal, Honorable Minister of Commerce and Industry, Government of India, to kindly share his vision with us. Thank you very much, madam. Very good afternoon to all the participants. Dobry den. His Excellency
Mr. Maxim Oreshkin, the Deputy Chief of Staff of the Presidential Executive Office of the Russian Federation, Honorable Ministers, Excellencies, distinguished guests, friends from Russia and India, friends from the media, ladies and gentlemen. I join my friend Anand in extending a very warm welcome to you, Excellency, and to all the distinguished guests from Russia and India who have joined us at the India-Russia Business Forum. I really think we needed a larger room because the depth, the breadth, the size, the scale, and the strength of the partnership between Russia and India is so deep, enduring, and strong that possibly this room cannot fit that and cannot accommodate so many people who are interested in further strengthening this relationship in the years ahead. In fact, our relationship, although as a special and privileged strategic partnership, is time-tested, is resilient. And these are not mere words. This relationship is fueled at the best with decades of unwavering solidarity, enduring many uncertainties of a changing world, tested to years and years of friendship, standing strongly with each other for the best interests of our people, our economies, and our countries. As Excellency Mr. Oreshkin at the recent South Africa mentioned, and I quote, today, the world is facing three crises: crisis of openness, crisis of institutions, and crisis of development model. In this regard, if one looks at India's story, it stands as an oasis in the desert, a reliable, trusted, and forward-looking partner, friend to all, working with countries around the world to open borders to expand trade, create the framework conditions to grow economic partnerships, strengthening its institutions, regulatory processes, democratic institutions, the rule of law that the judicial process offers, and also working on a development model which has at its core inclusive and sustainable growth, which is focused on the welfare of 1.4 billion Indians, which is strengthening our economy, our fundamentals of our economy, and it has on the twin pillars of huge investments in infrastructure and encouraging consumer spending, become one of the fastest growing large economies in the world. And we expect this in the next 2 or 3 decades to continue as we grow from a $4 trillion economy today to a $30-35 trillion economy over the next 20 years by 2047 when we celebrate 100 years of independence. Friends, despite all the global headwinds, India and our economy has demonstrated tremendous ability to withstand headwinds, shock, challenges. From a fragile economy many years ago, we are today amongst the top 5 economies, soon to become the world's third largest GDP. We have navigated pandemic, we have navigated geopolitical tensions, supply shocks, and are recognized the world over today as a beacon of hope, as an engine of economic growth. Our inflation is very much under control. The last month was 0.25%, and the consumer price index, we expect the current year to be around 2.5% in terms of inflation. All estimates of growth, which have kept changing over the last few months, are being thrown down. The economy grew 7.8% in the first quarter, grew 8.2% in the second quarter in September. Now, as just that many agencies are now changing all the estimates of current year's growth and finally acknowledging that we have 7%. When I talk about macroeconomic stability, strengthening the fundamentals of our economy, it has happened on the back of very bold reforms, transformation initiatives like a single tax across the country, goods and services tax. Within that, evolving with the times to make it simpler, make it more consumer friendly, to continuously bring down the rates of taxation and make it very friendly for business community and encourage consumer spending. At the same time, our new labor codes have brought 29 laws into 4 labor codes, focusing largely on competitive for our workmen, better salaries, higher national minimum wages, more safety against occupational hazards, a social security net for all, including the workers and contract workers. All in all, creating the right conditions for good employment opportunities for our young men and women. As you know, we are very exposed to the young population. The average age is around 28.5 years, and we expect it to continue to be young for the next 10 years. We also focus on decriminalization of many laws where small determinants cause a lot of problems for businesses. We focus on removing obsolete laws, shedding the colonial mindset that we inherited in 1947, reducing compliance burden, making processes and procedures simpler, collectively in the direction of ease of doing business and ease of living for every single citizen or resident living in India. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi, recognized the world over as one of the most popular leaders, political personalities, a decisive leader who has led from the front, has captured the very soul of our relationship with Russia when he said, and I quote, on hearing the word Russia, the first word that comes to the mind of every Indian is India's Sukh Dukh Ka Sathi. That was in Hindi. India's Sukh Dukh Ka Sathi. It translates to a companion, a friend in good times and bad times, a companion in happiness and a companion in sorrow. And Excellency, I'm sure you can go to any part of India and you'll hear the same bond of friendship between Russia and India. Of course, as was said in the video, our film industry has also strengthened that bond. Like on the days of Leonardo DiCaprio, a film is centered in India originally. It was after Russian side, we all recognize that we are very good. And the Prime Minister further went on to say, no matter how low the country's experience, no matter how much India has friendship, always full of hope. And that is what makes it so good. Friends, a decade ago, in 2014, during Prime Minister Narendra Modi's first summit meeting with His Excellency President Vladimir Putin, we aimed for $30 billion bilateral trade, as His Excellency just mentioned, by 2025. We are transparent. Of course, we would like to point out that it's very skewed and needs to be more balanced. We need to bring more diversity in our trade basket. We need to make it more balanced between Russia and India. We need to add more variety. And there's so much to offer between both countries. There's so much that we believe we can take to Russia. There's such a large variety of offerings that 1.4 billion Indians from India have to offer to Russia. That is sky high. And I think if we all work together, particularly our business community, takes a leap of faith, I'm very sure this untapped potential can be explored. The partnership will flourish. We'll address the trade imbalance in the near future, and we'll work collectively to eliminate, reduce, value the trade barriers, if any. We'll work to create the right conditions to open opportunities for business on both sides. And therefore, the theme of today's business forum, sell to Russia, and in that balanced growth, shared growth, I think is extremely opportune. Comes at a moment of time where it is very relevant. Russia has a huge demand for a wide range of industrial goods, consumer products, presenting multiple untapped opportunities for Indian businesses. Many sectors with strong potential will include, as you mentioned, the automobile sector, that is cars, tractors, heavy commercial vehicles, electronics, smartphones, data processing equipment, heavy machinery, industrial components, textiles, food products, and many more. Friends, artificial runs deep in India's DNA. As we have developed our startup ecosystem to become the third largest in the world, propelling innovation across deep tech, agri-tech, fintech, defense, semiconductors, space, opportunities growth, which makes India a destination of choice, a provider of success. I'm sure investors will give high returns to find out opportunities in India. Also, a demographic of young, hardworking, talented, skilled men and women can fill Russia's large 3 million talent shortfall that I'm told. And I can assure you, our young people are not only hardworking, they're not complaining Friday evening on Saturday and need to off. Our young men and women are driven, willing to work 7 days a week if the requirement is there, willing to really put in long hours, a lot of hard work, very committed, very conscious of their responsibilities, outcome-oriented. After all, we produce the world's largest number of STEM graduates, 2.4 million STEM graduates coming out of our universities and colleges every year. I'm sure these young men and women and talent from India can inject innovative design skills, analytics, research, and other capabilities which will enhance Russia's competitiveness in the world markets. In conclusion, I'd like to quote a phrase by Rasul Gamzatov, a Russian poet, and I quote, there are no distant lands for those who have a friend nearby. Mountains do not divide us. They only lift our gaze higher to see another. In the same spirit, it is often said, when we cross some one mountain, we only find many more ranges ahead to conquer. We have achieved $70 billion of bilateral trade, but we cannot rest. We need to do that. We need to balance that. We need to have a shared perspective of goodness in our focus. In fact, Dr. Cruz famously asked to stand the songs, touch hearts across Russia and India. Recognize that friendship between two countries
greater challenges and achieving better results for the shared prosperity of India and us. I would like to Damani, President CII, Mrs. Anjali Singh, Chairperson CII Northern Region, Mr. Narayan Sethuraman, Chandrajeet, distinguished ladies and gentlemen. Frankly, after the wonderful presentation that I've heard and seen, there's very little to add in terms of the scope and roadmap to take manufacturing to the next level. We all are in agreement that we have to accelerate our manufacturing pace, our manufacturing ecosystem. We have to focus on the enablers to be able to get to that 25% mark, which, as you have rightly pointed out in NEEM, that we need to grow instead of about 9% in manufacturing that we are currently to about 12.5%. And not very difficult to achieve, not impossible, certainly, given the intention of industry and capability of all the decision makers in the country to make this convergence to the level.
आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे नायक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की जाती है, जो ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। दीपक का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान के मार्ग को आलोकित करता है। दीक्षांत समारोह की सफलता एवं मंगल कामना के लिए हम माननीय राष्ट्रपति जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं।
8 तालाब 9 तालाब है। अब ये कोई सांसद कर पाया कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं किसी पे आलोचना भी नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो मीडिया के लोग और चला देते। लेकिन पूरे 9 के 9 तालाब पर्यावरण प्रेमी इस नाते पूरे 9 झीलों को तालाब को साफ करके आप सबकी सेवा में लाने का प्रण ये भी पीयूष गोयल जी ने किया है और इस काम पे भी जुटे हुए हैं। मैं आज महाराष्ट्र का कैबिनेट मंत्री हूँ, महाराष्ट्र में घूमता रहता हूँ। सभी का सम्मान करते हुए मैं कहूंगा पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 का अहवाल प्रकाशन करने वाला सांसद ये पीयूष गोयल जी है। ये हमें सौभाग्य मिला है। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और इतना तो थोड़ा स्वार्थ में कहूंगा, थोड़ा समय हमारे लिए भी दे दो। आपके जैसे काम हमारे एरिया में भी बन पड़े और हमारे यहाँ पर भी खुशहाली जो बनी पड़ी है देवेंद्र जी के नेतृत्व में और माननीय
मुंशी से निकलने वाली बुलेट ट्रेन, इस बुलेट ट्रेन का भी नारियल किसी ने फोड़ा उस योजना का, तो वो पीयूष गोयल जी है। और इसके लिए पीयूष जी आपको बहुत सारी शुभकामना। और नरेंद्र मोदी जी ने जो एक राम सबको दिखाई, इस सेवा के साथ काम Vanakkam Tamil Nadu. Are you little bit chill? Vanakkam Tamil Nadu. Vanakkam Kashi. Vanakkam Kashi Tamil Sangamam. Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, respected Yogi Adityanath ji, Chief Guest of the 4th edition of Kashi Tamil Sangamam, Sri R.N. Ravi, Honorable Governor of Tamil Nadu, Dr. A.L. Murugan, MOS Government of India, Sri Varjesh Pathak, Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, Sri Anil Rajbhar, Honorable Cabinet Minister of Government of UP, Sri K. Kailasnathan, Honorable LG of Puducherry, Sri Ravindra Jaiswal, Sri Dayashankar Mishra, Sri Vineet Joshi, Professor V. Kamakoti, Professor Ajit Chaturvedi, Professor Amit Patra, District Secretary of Tamil Nadu,
Pannare Param.
think this was so more like Joined by Union Minister Jyotiraditta Scindia, who's handling crucial portfolios relating to telecommunications, to communications, India Post and Department of Northeast Region as well. Minister Scindia, thank you very much for joining us. Always a pleasure, Parikshit. This is a time when the government is brainstorming with the industry ahead of the union budget. There is also a discussion on within the government on the next generation reforms after GST. Could you give us your thinking on what needs to be done now for the telecom sector in order to make it easier for companies to get into India, make investments for the future? What can they expect in the weeks and months to come? So first of all, this is already a deregulated sector. Secondly, my process that we undertake both in the Department of Telecom and on the Department of Posts is an iterative process. We have set up 6 advisory groups in the telecom sector, covering the whole value chain within telecom, from equipment manufacturing to service providers across the board. And those 6 advisory groups meet with me on a regular basis. Issues are brought up, issues are resolved, and move on to the next.
hamarak school so this is sort of a principle वक्त हमारे साथ भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है वो भी हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मोदी सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। 2012 से 2024 तक राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र यादव ने बड़ी जीत दर्ज की और अलवर सीट से सांसद चुने गए। इन्होंने जंगल, वन्य जीव संरक्षण और भूमि प्रबंधन को बदलने की दिशा में बड़ा काम किया है। भारत की जलवायु नीति और अंतर्राष्ट्रीय वायुमंडलीय समझौतों में सक्रिय भूमिका निभाई है। बीजेपी में ओबीसी चेहरे के तौर पर भूपेंद्र यादव बहुत बड़ा नाम है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में भूपेंद्र यादव बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता साबित होते आए हैं। भूपेंद्र यादव कई खूबियां लिए हुए हैं। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर शानदार छवि रही है। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत का श्रेय भी भूपेंद्र यादव को जाता है। भूपेंद्र यादव ने बतौर महाराष्ट्र प्रभारी पार्टी की रणनीति को बखूबी जमीन पर उतारा। भूपेंद्र यादव ने अपनी कर्मठता से केंद्रीय नेतृत्व और देश की जनता का भरोसा जीता है। तो देश की जनता का दिल जीता और कई बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और जनता के बीच हमेशा रहे होंगे।
Moving to admin of the on failure தம்பி தம்பி விஜய் விஜய் சாப்பிடவா சாப்பிடவா ராஜா வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் காசு. ये इंडस्ट्री लीडर्स ही है। मैं ये कह रहा हूँ, पुनीत जी कह रहे हैं कि जहाँ बुलाते हैं वहाँ सब जगह आते हैं। ये इंडस्ट्री लीडर्स काम नहीं करता
So 1.45 billion people in a country, our branded supply is limited to 230, 240,000 rooms. In terms of processes, as I said, you will see many things on the slide which have been spoken about. Ease of travel, e-visas, yes, but Indonesia, Thailand, etc., they've gone and had 60 to 90 countries which have visa on arrival. They don't even have to wait 72 hours, Honorable Sir. So that is how you just decide to get on a plane and get there. Ease of doing business. So the Honorable Minister mentioned about the number of permissions needed. I will tell you it is 70 plus to open a hotel as an example. 70 plus permissions at different levels. And it's not one body that gives you that. There is so many bodies, depends on FSSAI, or if it's a municipal body, or it's the state government, or it's the excise department. Everything is so distributed, whether it's a regulation of CRZ or it is MOEF for getting permissions when you want to even extend the property. And of course, all the other issues and processes related with National Digital Tourism Mission and tourism MSMEs and how we can incentivize those. What I just mentioned, Thailand, Indonesia, you can see that this is 3 to 5 business days, as was mentioned. On terms of most important one, I always thought 5 years ago, infra status, industry status was more important. Honestly, I have changed my mind. I think what is more important for India's soft power is the promotion and leveraging tourism to become a key driver.
मजबूत होता की त्यावेळेला रिपब्लिकन पक्ष तुमच्या सोबत होता. आता काँग्रेस तर नाही आणि तुम्ही कोण तुम्ही राहिला का साहेबांनी सांगितलं अशी जनता आघाडी नाही नाही आपण या पत्र करत नाही पहिली आपल्या भाषा माझी या ठिकाणी काय नाही त्या ठिकाणी माझ्या प्रत्येकाच्या आमच्या इकडे या उदाहरण होत होतं म्हणून माझी माणूस टाकण्याची जबाबदारी नाही मला माहिती आहे की नाही असं पडलं नाही पण त्याला बोलू नाही आता वयात पडायला माहिती ऑन पार्टी जवळ 60 लोक आहेत माहिती आहे साठी माहिती लोकांना किती माहिती लोक किती झाले माहिती होतं किती नाव होते मुलांनी माहिती होती काय मुलांना माहिती होतं किती मुलांना माहिती होतं माहिती झालं मला की भावना म्हणून चालेल खूप पाणी पावसामध्ये सांगितलं का जन्म भाषा पे कोण या विचार करते तुम्ही बोलाय तुम्ही किती काही दिवशी वेळी तुम्ही सगळं किती वाटतं की नाही भाषा म्हणून बोलले आवाज माहिती बोलले म्हणून आम्ही पहिला आम्ही पेन पेन आणि संदर्भ भाऊ विषय आम्हाला काही लोक भाऊ भाषा तुम्ही आमच्या विषयी कोण टाकले आम्ही गावात गेलो आता मुंबईला गेलो आमचा माल बिलकुल करण्याला आम्हाला मिळाला बघा उतरी येतात आमच्या मुली आमच्या किती लोक येतात आमची जास्त मुली मुंबई बाहेर मुली किती आम्हाला भारतीय जनता पार्टी आमचा लंच आहे 2012 मध्ये बी दुसऱ्या सूचना घेतला आणि सूचना म्हणजे सूचना ठेव सुरुवातीला सूचना करत होती माझ्या हाताला सूचना होती नाही मुली त्याने सूचना होती आणि होती होती विधानसभा राजवडीची शिकायला सूचना करायची एक सरकार होता पण बाहेर मुली हे 3-4 पर्यंत कोणाला काही सांगितलं आम्ही आपल्या गावात सांगितलं त्यांच्या सोबत काही काम होतो आणि मुली मध्ये कोणत्या सोबत होते ती बाहेर बोलायची आम्हाला काही कळलं नाही त्यामुळे लोकसभेच्या प्रचारामध्ये